समर्पयामि स्नानानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थं विधार्थम् अलङ्करणार्थम् आवरणार्थरत्नसिंहासनार्थम् अक्षतान् समर्पयामि दिव्यपरिमलश्रीगन्धं गन्धस्योपरि हरिद्राकुङ्कुमहरिद्राचूर्णं समर्पयामि पुष्पमालिकान् समर्पयामि पुष्पैः सम्भोजयामि ओं सुब्रह्मण्याय नमः ओं गुहाय नमः ओं षण्मुखाय ओं बालनेत्रसुधाय ओं कृतिकासनवे नमः शिवविष्टाय नमः अंबिकानाथाय नमः श्रीगंडाय नमः भक्तवत्सलाय नमः भवाय नमः ग्रहाय नमः कवर्धिने नमः कामार्ये नमः अन्धोन्मत्ताय नमः प्रमत्ताय नमः ओं शक्तिधराय नमः पिसिदासुरप्रभञ्जनाय नमः तारकासुराय संहाराय नमः रक्षोबालविमर्दनाय नमः मध्याह्नं प्रमध्याह्नं उन्मध्याय नमः सुरसैन्यसुरक्षकाय नमः देवसेनापतये नमः प्राज्ञाय नमः कृपालवे नमः भक्तवत्सलाय नमः मासुदाय नमः शक्तिधराय नमः क्रौञ्जधारणाय नमः मयूरवाहनाय नमः कुमाराय नमः सेनान्ये नमः अग्निजन्मने नमः विशाखाय नमः शंकरात्मजाय नमः शिवस्वामिने नमः गणस्वामिने नमः सर्वस्वामिने नमः सनातनाय नमः मनोधक्त्यै नमः क्षोभ्याय नमः पार्वतीप्रियनन्दनाय नमः गंगासुधाय नमः सरोद्भूताय नमः माघुदाय नमः भावकात्मजाय नमः जुरुम्बाय नमः जुरुम्बाय नमः जुरुम्बाय नमः कमलासन संस्तुताय नमः एकवर्णाय नमः त्रिवर्णाय नमः त्रिवर्णाय नमः सुमनोहराय नमः चतुर्वर्णाय नमः पंचवर्णाय नमः सदाशिवाय नमः विश्वेश्वराय नमः ओं प्रजापतये नमः हिरण्यरेतसे नमः दुर्दशाय नमः ओं समीकराय नमः वासवाय नमः वडवेशपदे नमः भोष्णे नमः कवर्धिने नमः सुब्रह्मण्याय नमः गुहाय नमः कुक्कुटध्वजाय नमः वंशधारणाय नमः जयनान्ये नमः विशाखाय नमः शंकरात्मजाय नमः शिवस्वामिने नमः गणस्वामिने नमः आकाशपतये नमः अमिगर्भाय नमः अग्निगर्भाय नमः शमिगर्भाय नमः विश्वरेतसे नमः सुरारिग्ने नमः हरिद्वर्णाय नमः शुभकराय नमः वडवे नमः वडवेशप्रदे नमः ओं भूष्णे नमः कवस्तिने नमः गगनाय नमः चंद्रवदनाय नमः कलाधराय नमः मायाधराय नमः महामायिने नमः कैवल्याय नमः शंकरात्मजाय नमः शिवस्वामिने नमः गणस्वामिने नमः सर्वस्वामिने नमः शंकरात्मजाय नमः विश्वयो नमः अमे आत्मने नमः तेजोनिधये नमः अनामयाय नमः परमेष्टिने नमः परब्रह्मणे नमः वेदगर्भाय नमः विराट्सुधाय नमः पुलिन्दकन्यापात्रे नमः ओं महासारस्मृताय नमः माश्रिताय लदात्रे नमः शोरक्नाय नमः रोगनाशनाय नमः अक्षभ्याय नमः ओं अनन्तारोगनाशनाय नमः अनन्दामूर्तये नमः आनन्दाय नमः ओं शिखण्डिने नमः ओं शिखण्डीकृतकेतनाय नमः डम्बाय नमः परमडम्बाय नमः महाडम्बाय नमः ओं वृषाकवये नमः कारणोद्भत्तदेकाय नमः कारणाधीतविग्रहाय नमः अनीश्वराय नमः ओं अमृताय नमः ओं प्राणाय नमः प्राणाय वरायणाय नमः मृतगन्त्रे नमः विरक्ताय नमः रक्तश्यामलकाय नमः सुब्रह्मण्याय नमः गुहप्रीताय नमः ब्राह्मण्याय नमः प्रीताय नमः ब्रह्मण्याय नमः ब्राह्मणप्रियाय नमः समृद्धिकराय नमः वेदवेद्याय नमः अक्षयफलप्रदाय नमः मयूरवाहनाय नमः कुक्कुटध्वजाय नमः ओं महाशक्तिस्वरधराय नमः अक्षयफलप्रदाय नमः मयूरवाहनाय नमः ओं वल्लीदेवसेनासमेत शिवषण्मुख सुब्रह्मण्येश्वर स्वामिने नमः भवस्य देवसुदाय नमः सर्वस्य देवसुदाय नमः भवस्य देवदानं ईशानस्य देवदानं वसुदेवदेवदानं रुद्रस्य देवदानं उग्रस्य देवदानं भीमस्य देवदानं मगतो देवसुदाय नमः शाम्ब परमेश्वर देवसुदाय नमः वल्लीदेवसेनासमेत शिवषण्मुख सुब्रह्मण्येश्वर स्वामिने नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि हरिः ओम् दशांगं गुंगोवेदं सुगंधं सुमनोहरम् आग्नेयं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां वल्लीदेवसेनासमेत शिवषण्मुख सुब्रह्मण्येश्वर स्वामिने नमः धूपम् आग्रापयामि साज्यं त्रिवर्तिसंयुक्तं भङ्गिना योजितं मया गृहाणमङ्गलं देवं त्रैलोक्यतिमिरावहं श्रीसुब्रह्मण्यस्वामिने नमः वल्लीदेवसेनासमेत सुब्रह्मण्यस्वामिने नमः धूपदीपानन्दरमाचमनीयं समर्पयामि ओं भोर्भुवः स्वः अमृतं भवतु ओं प्राणाय स्वाहा ओं अपानाय स्वाहा ओं व्यानाय स्वाहा ओं उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ओं कदलीफलानि ताम्बूलानि नाळीरखण्डत्वचं एतत्सर्वम् अमृतं महानैवेद्यं नैवेद्यामि नैवेद्यानन्दरमाचमनीयं समर्पयामि ओं षण्मुखं षड्गुणं शैव कुमारं कुलभूषणं देवसेनापतिं वन्दे सर्वकार्यार्थसिद्धये कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् मयूरवाहनाय नमः कार्तिकेयाय नमः सुब्रह्मण्यस्वामिने नमः
स्कन्दगुरवे नमः कर्पूरनीराञ्जनं सन्दर्शयामि नीराञ्जनानन्दनं आचमनीं समर्पयामि अधरक्षान् धारयामि ॐ यो वां पुष्पं वेद पुष्पवान् विजावान् पशुवान् भवति चन्द्रभावान् पुष्पं पुष्पवान् विजावान् पशुवान् भवति एवं वेद यो भामायतनं वेद आयतनवान् भवति वल्ली देवसेना समेत कार्तिकेय सुब्रह्मण्य स्वामिने नमः यथोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ओं कार्तिक यथाशक्ति जभं विदाय ओं कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्तायिमि तन्नस्कन्द प्रचोदयात् 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 ओं कुमार कृभयो नमः इति षण्मुखकवचमन्त्रस्य அண்டமாய் அவனியாகி இறைவனாய் உருதனாகி தொண்டர்கள் குருமாகி துகளரோ தெய்வமாகி என் திசை போற்ற நின்ற என் அருள் ஈசனான திந்திரல் சரவணத்தான் தினமும் என் சிரசை காக்க ஆதியங்கையிலை செல்வன் அணிநெற்றி தன்னை காக்க தாதவிழ் கடம்பத்தாரன் காணிரோதலை நூதலை காக்க சோதியான் தணிகையின் சன் துரிசிலா விழியை காக்க நாதனாம் கார்த்திகேயன் நம சிவ நாசியை நயந்து காக்க இருசெவிகளையும் செவ்வேள் இயல்புடன் காக்கவாயை முருகவேள் காக்கன பால் முழுதும் நற்குமரன் காக்க துரீசரு கதுப்பை யானை துண்டனார் துணைவன் திருவுடன் பிடரி தன்னை சிவசுப்பிரமணியன் காக்க ஈசனாய் வரகுல வாகுலேயன் யோது சுந்தரத்தை காக்க திருமகள் மருமகள் காக்க ஆசிலா மார்பையா இராயுராதன் காக்க எந்தன் ஏசிலா முழங்கை தன்னை உண்கை தன்னை உண்மை இன மதலை காக்க இளமதலை காக்க தருகண்ட ஏறிடவே என்னை
என்கை தலத்தை மாமுருகன் காக்க உறங்கையை அயிலோன் காக்க விரல்கள் காக்க பொறிக்கர விரல்கள் பத்தும் பிறக்குமால் முருகன் மரன் காக்க பின் முதுகை சேய் காக்க ஊனிரை வயிற்றை மஞ்சையோர்த்தியோன் காக்க வம்பு தோள் திமிர் சுரேசன் உந்திய சுழியினை காக்க குய்ய நாணி கௌரி நந்தனன் காக்க பூஜ ஆணியை கந்தன் காக்க அருமுகன் குதத்தை காக்க எஞ்சிடாதிடுப்பை வேலு இறைவனார் அஞ்ச கனகமார் இரண்டும் அரண்மகன் காக்க விஞ்சிடும் பொருட்காஞ்சேயன் காங்கேசன் விளரடி தொடையை காக்க செஞ்சர நேசவாசன் முகன் திமிகோ முதமுன் தொடையை காக்க ஏரகத்தேவன் என் தாள் இருமுழங்காலும் காக்க சீருடை கணைக்கால் தன்னை சீரலை வாய்த்தே காக்க நேருடை பரடிரண்டு திகழ் பரங்கிரிய இரியன காக்க சீரிய குதிக்கால் தன்னை திருச்சேவலை மலையன் காக்க ஐயுரு மலையன் பாதத்து அவர் 10 விரலும் காக்க பையுரு பழனிநாத பரன் அகங்காலை காக்க மெய்யுடன் முழுதும் ஆதி விமல சண்முகவன் காக்க தெய்வநாயக விசாகன் தினமும் என் நெஞ்சை காக்க ஒலியுடா உரத்த சத்தத்தொடுவரு பூதப்பிரேதம் பலிகள் கதப்பே பலகனத்து இவையான் வேல் காக்க கெடுபரர் செய்யும் சூன்யம் வலியுழ மந்திர தந்திரம் வருடத்திடாது அயில்வேல் காக்க ஓங்கிய சீற்றமே கொண்டு வணியில் வேல் சோலங்கள் தாங்கிய தண்டம் யக்கு கந்தடி பரசு ஈட்டியாதி வாங்குடை ஆயுதங்கள் பகைவர் என் மேலே யுச்சின் தீங்கு செய்யாமல் என்னை திருக்கைவேல் காக்க காக்க உடவிய முளர் ஓன் உண்போர் அசடர்வே அரக்கர் புலவர் தெய்வர்கள் ஏவரானாலும் திடமுடனினை மற்கட்டத்து அவ்வியே வருவராயின் சரசராமலாம் புறகும் கவுடை சூரசண்டன் கையில் கையால் காக்க கடுவிட பாந்தன் சிங்கம் கரடினாய் புலி மாயனை கொடியோனாய் குரங்கு கோலமாச்சாலம் சம்பு படையுடை யுனதலேனு நாடிடர் பட்டிடாமல் சதியில் வடிவேல் காக்க சானவி முளைவேல் காக்க நகரமே போற்றலையே ஞானவேல் காக்கவான் சிகரி ஏறு ஆலப்பள்ளி நகமுடையோத்தி பூரான் அள்ளியண்டு புலியின் பூச்சி குகமிகை இணைவாய் புரிலாது ஐவேல் காக்க சலத்திலோவன் மீனேறு வண்டுடை திருக்கை மற்றும் நிலத்திலும் சுழத்திலும் தான் நெடுந்துயர் தரள்வேயுள் குலத்தினால் தான் வருத்தங்கொண்டாடிது அவ்வேளை பலத்துடன் இருந்த காக்க வாவகி கூர்வேல் காக்க ஞமவியும் பரியன் கைவேல் நவக்கிரக கோள் காக்க சுளவிழி நோய்கள் தன் சூலையாக்கிரான ரோகம் திமிர்களல் வாதம் சோன கிரமடி கர்ணரோகம் எமையணுகாமலே பன்னிரு புயன்
தைவேல் காக்க டமருகத் தடிவோனைக்கும் தலையிடி கண்டமாலை குமருவிப் விருதி குன்னம் திருத்தம் வெட்டை நிரப்பிற மேகவேல்லாம் இயமையடையாமல் குந்தரித்தவன் கைவேல் காக்க இணக்கமில்லா பித்தவெறிவு மாசுரங்கள் கைகால் முணங்கவே குறைகும் குட்டம் முளை தீமந்தம் சனத்திலே குலம் சன்னி சாலமென்றறையும் இந்த பிணிக்குலம் எனையாளாமல் பெரும் சக்தி வடிவேல் காக்க தவனமாரோகம் வாதம் சைத்தியம் அரோசகம் எல்லாம் சுவரவே செய்யு முலை சுடு இளை பவுடற்று விக்கல் அவதிசை பேதிசீழ் நோய் அண்டவாதங்கள் சூலை இவையும் என் இடத்தை இதாமல் எம்பிரான் திணிவேல் காக்க நம்மை புற கிரந்தி வீக்கம் நடுகிடு பாண்டு சோபம் அமர்த்திடு கருமை வெண்மையாகுபல் தொழுநோய் காக்கல் இமைக்குமுன் நொருவலிப்போடு எழுபுடை பகந்தராதி இமைப்பொழுதேனும் என்னை எய்தமாலருள் வேல் காக்க பல்லது கடித்து படபடென்று துடிக்க கல்லினும் வலிய நெஞ்ச காட்டியே இருட்டி நோக்கி எல்லினும் கரியனே யமபடர் வரினுமென்னை ஒல்லையில் தாரகாரி ஓம் ஐம் ரீம் வேல் காக்க மண்ணிலும் மரத்தின் மீதும் மலையிலும் நெருப்பின் மீதும் தண்ணீரை சலத்தின் மீதும் சாரிசை திமி மீதும் வேறொரு தடவித்துமென்னை தன்னிரு வந்தருளர் சஷ்டி நாதன் வேல் காக்க காக்க யகரமே போல சூலேந்து நரியும் புயன் வேல் முள் காக்க அகரமே முதலாமா ஈரரு அம்பகன் வேம்பின் காக்க சகர மூடரு மானோன் தன்கை வேல் நடுவிற்காக்க சிகரமுன் தேவமோல் கீழ் மேல் காக்க ரஞ்சித மொழி தேவானை நாயகம் வள்ளி வங்கன் செஞ்சயவேல் கிழக்கில் திறமுடன் காக்க அங்கி வஞ்சிடோ திசையின் ஞானவீரன் வேல் காக்க தெற்கில் எஞ்சிடா கதிர் காமத்தோன் இகலுடைரை கரவேல் காக்க லகரமே போல் காணியங்கனல் நெறிய நின்று தகரமத்தனமே செய்த சங்கரி மருமகன் திகழனை விருதேதிக்கில் நிலை பெற காக்க மேற்கில் இகலையில் காக்க வாயுவினில் குகன் கதிர்வேல் காக்க வடதிசை தன்னில் ஈசன் மகன் அருள் திருவேல் காக்க இடையுடை ஈசன் திக்கில் வேதபோதகன் வேல் காக்க நடக்கடையில் இருக்கும் ஞான்றும் நவில் கையில் திமிர்கையில் கீழ் கிடக்கையில் தூங்கும் ஞான்றும் கிரிதுணை துளவேல் காக்க இழந்து போகாத வாழ்வை ஈயும் முத்தையானார் கைவேல் வழங்குனல் ஊன் 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 ஓதும் தும்மால் வளையொட்டி போது பழஞ்சுரர் போற்றும் பாதம் பணிந்து நெஞ்சடக்கும் போதும் தோடே காக்கிட திடமுடன் மயிலும் காக்க இளமையில் வாலிபத்தில் ஏறிடு வயோதிகத்தில் வளர் அருமுகச் சிவன்தான் ஒழியனை காலை முன் எழு ஓம் சிவசாமி காக்க தெளிநடு பிற்பகர் கால் சிவகுருநாதன் காக்க
இறகுடை கோழித் தொகை கிரைமுன் இராவிற்காக்க திரளுடை சூர்பகைத்தே திகழ்வின் இராவிற்காக்க நர்வுரோசர் தான் சிலம்பன் நடுநிசி தண்ணீர் காக்க மறைதொழு உலகன் எம்கோன் மாறாது காக்க காக்க இனமெனத் தொண்டரோடு இணங்கிடும் செட்டி காக்க தனிமையில் கூட்டந்தன்னில் சரவணபவனார் காக்க நனிரூபூதி சொன்ன நாதர்கோன் காக்க இத்தகை கனிவோடு சொன்ன தாசன் கடவுள்தான் காக்க வந்து ஓம் உமா கோமளகஸ்தாபியாம் சம்பாவில்லாடகம் இரண்யகுண்டலம் வந்தே குமாரம் புஷ்கரக்ஷசம் ஷடானனம் குங்குமரத்னவர்ணம் மகாமதிம் திவ்யமயூரவாகனம் ருத்ரஸ்ய சூனம் சுரசைன்யநாதம் குஹம் சதாகம் சரணம் பிரபத்யே ஷண்முகஞ்ச கணாதீசம் ஷாம்பஞ்ச பரமேஸ்வரம் மம துக்கவிநாசாய சந்ததம் சிந்தயாம்யகம் ஷண்முகம் சைவ ஷண்முகம் ஷட்குணம் குமாரம் குலபூஷணம் தேவசேனாபதிம் வந்தே சர்வகார்யார்த்தசித்தயே ஓம் அவாயுதம் சர்வாபி தேவதாபியோ நம சுப்பிரமணிய சுவாமினே நம யதாசக்தி சஞ்ஞாம் சமர்ப்பயாமி ஸ்தோத்திரம் சமர்ப்பயாமி தேவதேவ ஜெகநாத ஜெகதானந்த காரணாக்னிகாரிய பிரவர்த்தோகம் அனிஜ்ஞாம் தேகி மே பிரபோக்னிகாரிய शुभमुहूर्तोस्तुति भवन्तो अनुगृह्णन्तो अग्निकार्य शुभमुहूर्तोस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु ओम वैश्वानरात्महे लालीलाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात् यज्ञं प्रतिष्ठाप्य ओम इंद्राय नमः ओम अग्ने नमः धर्मराजाय नमः वरुणाय नमः वायुवेन कुबेराय नमः ईशानाय नमः यज्ञपुरुषाय नमः अतिथेन मुन्यस्वा नमदेन मुन्यस्वा सरस्वतेन मुन्यस्वा देव सवितप्रसुवा एकं द्वे त्रीणि चत्वारि वायव्याद् आग्नेयान्तं स्वाहा रुद्ध्याद् ईशानान्तं स्वाहा इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमः अग्ने स्वाग्ने नमः सोमाय स्वाहा सोमाय नमः अग्ने स्वाहा पुनर्मध्ये आरंभ प्रवृत्ति तक्षणपर्यन्तं मध्ये संभावित समस्तदोष प्रायश्चित्तार्थं सर्व प्रायश्चित्तार्थं घोष्यामि ओम भूर्भुवः स्वाहा सर्वं श्री नवे स्वाहा महोदय रुद्राय स्वाहा रुद्राय पशुपतये इदं नमः अभिगार्य सर्वमभिगार्य काष्ठमभिगार्य अगुंसत्प्रसवसंद्रधोताद्रोणसरस्वत्प्रजाब्जा गोजारतजात्रजारदमृत स्वाहा अमृत स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गं गणपतये वरवर सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गं गणपतये वरवर सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गं गणपतये वरवर सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गं गणपतये वरवर सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा स्वाहा महागणपतये इदं नमः
ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम निकृष्टवैदसमायुधये काले हरित्मवावन्न इंद्रायाय सहस्रयुगाग्निरुप्राट्यवदनः वायुस्तेजजगत्प्रभसं वस्त्रोऽविषवर्णैः ध्यास्ते रुद्रास्विहा सुब्रह्मण्योऽहं सुब्रह्मण्योऽहं सुब्रह्मण्य। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि
तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि
तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा अथ पूर्णाहुतिकालः गन्धद्वारा नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां त्वामिहो वह्वये श्रियं गन्धं समर्पयामि कुङ्कुमं समर्पयामि हरिद्रार्जुनं समर्पयामि एकं दे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव नवदश एकादश द्वादश ॐ पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथोऽयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति तुलसी महापूर्णाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा कार्तिकेयाय शक्तिहस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् ब्रह्मण्य स्वामी ओम सप्तदे अग्ने समिध सप्तजिह्वा सप्तऋषय सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्र सप्तदाध्वाय जन्ते सप्तयो नेरावृतेन स्वाहा अग्नये सप्तपदये तन्नमः भूस्वाहा भुवस्वाहा सुवस्वाहा भोर्भुव सुवस्वाहा अजमात्रमुत्तरधाया प्राणायामविशेषणम् अग्नेर्नमुखस्था उदयर्नमुखस्था सरस्वतीर्नमुखस्था देवसविधप्रासावीः वनिष्ठमूर्तेन महेश्वराय नमः दुभार्तमुष्पाणि समर्पयामि विघ्नेश्वराय नमः प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि विघ्नेश्वराय नमः
अमृतस्वेषम् आज्योपकारम् अमृतं महानिवेद्यमेवे ध्यानेश्वराय स्वाहा अवाहनाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा दानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा एवम् आज्योपकारम् महानिवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यानन्दमाचमनीयं समर्पयामि अधकर्पूरज्योतिः लीलाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात् ईश्वराय नमः कर्पूरनीराञ्जनं सन्दर्शयामि नीराञ्जनानन्दमाचमनीं समर्पयामि अवरक्षां धारयामि यो वां पुष्पं वेद पुष्पान् जावान् पुष्पान् भवति चन्द्रमा वान् पुष्पं पुष्पान् जावान् पुष्पान् भवति एवं वेद यो भामायतनं वेद आयतनवान् भवति यज्ञेश्वराय नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनागं महिमानस्य छन्दे यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अवागिरभ्य सर्वाभ्य देवताभ्यो नमः वर्णात् कुम्भे संयोजयामि मानस्तोगेदनीयमान आयुष्मानो घोषमानो स्वेषणीरिणः वीरान्मानो रुद्रमाविदो विदेवष्पन्तो नमसामि देवदे ध्याय बलिं ददामि ओम भवस्य देवस्ताय नमः ओम सर्वस्य देवस्ताय नमः ईशानस्य देवस्ताय नमः वसुदेव देवस्ताय नमः रुद्रस्य देवस्ताय नमः उग्रस्य देवस्ताय नमः भीमस्य देवस्ताय नमः भगतो देवस्ताय नमः शाम्ब परमेश्वर देवस्ताय नमः वल्ली देवसेना समेत शिवसुन्दरकार्ति सुब्रह्मण्येश्वर स्वामिने नमः नानाविधपुत्रोष्पाञ्जलिं समर्पयामि वेदं समुद्रं भागे विष्णु देवाः धूपोयं प्रत्यक्षतां धूपमाघ्रापयामि साध्यं प्रत्यक्षमुक्तं मलिनाय ब्रह्मण्यस्वामी नमः धूपदीपानन्दमाचमनीयं समर्पयामि ओम भोर्भुवस्वः अमृतं भूतप्राणाय स्वाहाय स्वाहाय स्वाहा काश्मीरफलानि नारङ्गफलानि विशेषफलानि अमृतं महानिवेद्यं समर्पयामि ओम राजाधिराजाय प्रदक्षिणाहिने नमो वयं वै श्रवणाय उन्मये समेकामाय लक्ष्मीं कामेश्वरो वे श्रवणोधातो कुबेराय वे श्रवणाय महाराजाय नमः कार्तिकेयाय ते शक्तिहस्ताय देवी तत्सङ्गप्रचोदयात् भूर्वाहनाय नमः वल्ली देवसेना समेत शिवसुन्दरब्रह्मण्येश्वर स्वामिने नमः कर्पूरनीराञ्जनं पञ्चम कर्पूरनीराञ्जनं सन्दर्शयामि नीराञ्जनानन्दम् आचमनीयं समर्पयामि अधरक्षां धारयामि ओम यवान् पुष्पं वेद पुष्पान् जावान् पुष्पान् भवति चन्द्रमावान् पुष्पं पुष्पान् जावान् पुष्पान् भवति एवं वेद यो भामायतनं वेद आयतनवान् भवति अवैर्भ्यो नमः वेदोक्तं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ஆரிரதந்தோள் வாழ்க ஆறுமுகம் வாழ்க வற்பை கூறு செய்த நிவேல் வாழ்க புக்குடம் வாழ்க ஏரிய மஞ்சை வாழ்க யானை தன்னனங்கு வாழ்க மாரிலா வள்ளி வாழ்க வாழ்க சீரடியார் வான்மையில் வளாது வேக மலிவிடம் சுரக்க மன்னன் கோன்முறையர் செய்க குறைவிலாது உயிர்கள் வாழ்க நான் மறை அறங்கள் ஓங்க நற்றுவம் வேள்வி மல்க மேன்மைகள் சைவ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம் நம பார்வதி பதையே மகாதேவா
अवायु सर्वाभ्यो नमः यथाशक्ति वस्त्रं समर्पयामि ॐ कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिस्ताय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् अवायु सर्वाभ्यो नमः उत्तरनीराञ्जनं समर्पयामि यज्ञेन यज्ञमय चन्द्रदेवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनागं महिमानस्य प्रभोर्वे साध्याः सन्ति देवाः आवाहितपि सर्वाभ्यो नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि यदासं यदास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च ॐ सदमानं भवति सदाय पुरुषः सधेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति यो वेदां ब्रह्मणो वेद अमृतेनावृताम्बुरी तस्मै ब्रह्मज ब्रह्मा च आयुः कीर्तिं वृजां ददुः सदमानं भवति सदा पुरुषसदेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति सुब्रह्मण्यस्वामी प्रसादेन च यजमानस्य सहकुटुम्बानां सकल ऐश्वर्यप्राप्तफलसिद्धिरस्तु सत्यासन्तु यजमानस्य कामाः This body-mind existence, although it is a limitation, it is capable of transforming itself into an unlimited reality. You can transform this body into light, which is its source, if you want to do that. So everything is going to depend on what you just put inside your mind, inside your consciousness. But right now, we have put into our mind only limitation. We never have put our attention on any methodology to delimit itself. If you consciously program your mind
your body, to delimit itself. The body will be everywhere. The mind will be everywhere. Just put that in your consciousness. Just imagine the body expanding, just becoming like particles and waves. And don't give importance to the body awareness, which says that it is flesh and blood. The same way, the mind is capable of experiencing different dimensions. This is how, through imagination, you can learn to delimit yourself. And once you begin to do it more and more and more, then that becomes the habit of the body, the habit of the mind. God bless. முற்பட எழுதி
சத்குரு அருணகிரிநாத சுவாமிக்கு, திருப்பரங்கிரி வீரனுக்கு, எல்லா இறைவனுக்கு அந்தாது அன்றுரைத்தோம். நந்தா வகுப்பு அலங்காரம் அவர்க்கே நனி புனைந்தோம். முன்பு ஆதரவே அவன் புகழ் அனுமோதி முற்றும் சொன்ன என் தாய் அருணகிரிநாதா, எம்மை நீரே அருளே. அருவமும் உருவமாகி அநாதியாய் பலவாய் ஒன்றாய் பிரம்மமாய் நின்ற ஜோதி பிழம்பு அது போதேனியாகி கருணை கோமகங்களாகும் கரமது 12 கொண்டு ஒரு திருமுருகனாய் ஷண்முகனாய் சரவண பவனாய் கார்த்திகேயனாய் ருத்ரபாலகனாய் ஆங்கு உதித்து ஆறு நிலை என்று முதலான திருப்பரங்கிரி, திருச்செந்தூர், திருப்பழனி, திருக்கேரகம், திருத்தணிகை, சோலைமலை முதலான பதிகள் பல ஆயிரங்கள், மலைகள் வெகு கோடி நின்ற அந்த மாதியில்லா குகனே, எங்கள் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே. குருவாய் அருவாய் உலகாய் இலகாய் மறுவாய் மலராய் மணியாய் மொழியாய் கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே. எங்கள் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே. எங்கள் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே. கனகம் திரள்கின்ற பெருங்கிரி தனில் வந்து தகனிட கதிர்மிஞ்சிய செண்டையருந்திட கதியோனே. தடமிஞ்சி அனந்த விதாம்புன தவளம் தன்னை உண்டு வளர்ந்திடு கதிய துணை என்று பிறந்திடு முருகோனே. வணக்கம் துயில்கின்ற திறம் கடல் முன்பு கடைந்த பரம்
கம்புழன்று கலங்கிய சிறியல் புலையல் கொலையல் புரி பவமில்று கழிந்திட வந்தருள் புரிவாயே வளமொன்று பரங்கிரி வந்தருள் பெருமாளே திருப்பரங்கிரி வீரனுக்கு ஹரஹரோஹரா திருச்செந்தில் ஆண்டவனுக்கு ஹரஹரோஹரா ஏவினை விழி மாதரை மேவிய ஏதனை ஊடலை நெறிப்பேனா இனனை வினனை ஏழெழுதாமுழு ஏழையை மோழையை அகலா நீர் மாவினை மூடிய நோய் பிணியாளனை வாய்மையில்லாதனை இகழாதே மாமணி நூபுர சீதன தாழனி வாழ்வுறவதோ ஒரு நாளே நாவலர் பாடிய நூலிசையால் வரு நாரதனார் புகழ் புறமாலை நாடிய காணிடை கூடிய சேவகர் நாயகமாவையில் உடையோனே தேவி மனோன்மணியாயி பராபரை தென்மொழியாள் தரு சிறியோனே சேனுயர் சோலையில் நீழலிலே திகழ் சிறனை வாய்வரு பெருமாளே மாமணி நோபுர சீதன தாழ்கனி வாழ்வுறைவதோ ஒரு நாளே சீதளை வாய்வரு பெருமாளே துன்பங்குள் பேர்களும் இதமுறு
போத மலரையன் மாலீசரெனும் அவர் கேது விபுலமசங்கையாகி மாளாத தனிசம் புற்றாயலறிய நிராதார முனைவில் சச்சோதி நிருபமும் மாறாத சுகவெள்ள தானுடனி நிழன்று காவேரி வடகரை சுவாமி மலையுரை தம்பிராயே கதிரவன் எழுந்துலாவு திசையளவு கண்டு மோது கடலளவு கண்டு மாய மருளாலே கணபன புயங்கராஜன் முடியளவு கண்டு தாழ்வல் கவிஞர நடந்து தேருவகையே மிதமிதமிதரு நாடும் அருகருவிருந்து கூடும் இடமிடமிதரு சோர்வு படையாதே இசையோடு புகழ்ந்த போது நழுவிய பிரசண்ட வாசல் இரவு பகல் சென்று வாடி உழல்வேனோ மதுகரமிடைந்து வேலி தருநரவன் முழு பூக மலர்வள நிறைந்த பாடை மலரோரே வகை வகை எழுந்து சாம அதிமறை வியந்து பாட மதி நிழலிடும் சுவாமி மலைவாழே அதிரவர் சண்டவாயு வெனவர் கருங்கலாவ அணிமயில் விரும்பியேறும் இளையோனே அடைவோடுத கண்கள் யாவும் உதவி நிலை கண்ட பாவை அருள் புதல்வ அண்டராஜ பெருமாளே வகை வகை எழுந்து சாம அதிவரை விழுந்து பாட மதி நிழலிடும் சுவாமி மலைவாழ்வே சுவாமி மலை குருபரனுக்கு ஹரஹரோஹரா திருத்தணிகை தீரனுக்கு ஹரஹரோஹரா இருமல் குரோகமுயலகன் பாதம் எரி குணநாசி விஷமே விரிவு விடாத தலைவலி சோகை எழுகல மாலை இவையோடு பெருவழியிலை எரி குலை சூளை பெருவழி வேறு
சுற்றி பல நாடும் தட்டுப்பட்டு சுழல் வேனை சற்று பற்ற கருதாரும் வட்ட புஷ்ப தளம் மீது வைக்கத்தக்க திருப்பதா கஷதற்ற தருள் போனே கட்சி சோக்க பெருமாளே சற்று பற்ற கருதாரோ இருவர் மயலோ அமளி விதமோ எனன செயலோ அனுவாத இருடியன்மார் அமரரடியா இசையும் மொழிதான் இறை கேள ஒருவனடியேன் அலரும் மொழிதான் ஒருவர் பரிவாய் மொழிவாரோ உனது பதத்தூள் புவனகிரிதான் உனது கிருபா கரமேலோ பரம குருவார் அணுவில் அசைவார் பவன முதலாகிய கூட்ட படையும் உடையாய் சகல வடிவாய் பழைய வடிவாகிய வேளா அறியும் அயனோர் அபயமெனுவே அயிலையுள் மேல் விடுவோனே அடிமை கொடு நோய் கொடிகள் படவே அருணகிரி வாழ் பெருமாளே ஒருவனடியேன் அலரும் மொழிதான் ஒருவர் பரிவாய் மொழிவாரோ உனது பதத்தூள் புவனகிரிதான் உனது கிருபா கரமே அருணகிரி வாழ் பெருமாளே ஞானமாகினர் பிணையிலே உமாபாத குறையில்லாத கோபிகன் முழு மூடர் புகழில்லாத தாமீக அறிவில்லாத காவோதி பொறிகளோடி போய் வீழும் அதிசூதர் விலையில்லாத கோமாரி கொடையில்லாத ஊதாரி நெறியில்லாத வேமாளி புலபாரன் திரளு தாழை நாளோறும் மனதில் ஆசை வீடாமல் இணையுமாறு நீ மேவி அருள்வாயே சிறையில் வாலிதானேவி எதிரி ராவணார் தோள்கள் சிறையுமாறு போராடி ஒரு சீதை சிறையிலாமலே கூடி புவன மீதிலே மேல் திறமையான மாமாய மருகோனே அலைய மேலுமாசூர பொடியதாக வேலேறி அமரதானியே தோகை மயிலேறி அதிக தேவரே சூழ உலக மீதி
தருமே தட்டூடரவே செயல தெரியும் நிஷ்டூர நிராகுல நேர்பயனே கார்மாமிசை காலமரே கலவரே மாமிசை வந்த நிறப்படுவன் தார்மானவளாரி தலாரியனும் சூதாமணிய சொல்லுவேலவனே கூகாயன என் கிளை கூடியழ போகா வகைமே பொருள் பேசியவா நாகாச்சல வேலவனாலு கவி யாகா சுரலோக சிகாமணியை செம்மான் மகளை திருடும் திருடல் பெம்மான் முருகல் பிறவான் இரவான் சும்மா இரு சொல்லறையருமே அம்மா பொருள் ஒன்று மருதிலனை முருகன் தனிவேல் முனினம் குரு என்று அருள் கொண்டு அறியார் அறியும் தரமும் உருவன்று அருவன்று உலகன்று இலகன்று இருளன்று ஒளியன்று என நின்றதுமே கைவாய் கதிர்வேல் முருகன் கடல் பெற்று ஒளிவாய் மனமே ஒளிவாய் ஒளிவாய் மெய்வாய் விழினார் சியோடும் செவியம் ஐவாய் வழி செல்லும் அவாவினையே முருகன் குமரன் குகன் என்று மொழிந்து குருகும் செயல் உணர்வெல் அருள்வாய் ஒரு புங்கவரும் புவியும் பரவும் குரு புங்கவாயன் உணவல் சரணே பேராசையனோ விழியில் விழிபடலோராவினையே உணரகும் வீரா முதுசு படவேலெறியும் சூரா சுரலோக துரந்தரனே யாமோதிய கல்வியும் அறிவும் தாமே பெறவேலவர் தந்ததனா பூமேல் மயில் போல் அருமெகு உணவி நாமே நடவி நடவே புதிய மரியா உணரா மரவா விதிமானறியா விமல புரவா அதிகானகா அபயா அமராவதி காவல சூர பயங்கரனே படிவும் நரமோ குலமோ குடியும் குலமோ குடி போதியவா அடியந்தமிழா அயில் மேலரசே விடியொரு பாவி வெளிப்படிவே அரிதாகியமை பொருளுக்கு அடியே புரிதா உபதேசமுணர்த்தியவா விரிதாரண விக்ரம வேலிமையோ புரிதாரகனாக புரந்தரனே கருதா மரபா நெறி காண எனக்கு இருதார் வனசம் கரையன் திசைவாய் வரதா முருகா மயில் வாகன
தாழ்வானவை செய்ததெல்லாம் உலகோ வாழ்வாயினி நீ மயில் வாகனனே கலையே கதறி கதறி தலையொடு அலையே படுமாறதுவாய் விடவோ கொலையே புரி விடகுல பிடித்தோ மலையே மலை கூறிடுவாதையனே சிந்தா குல இலோடு செல்வமெனும் வெந்தாள்
சேவகனே குருவாய் அருவாய் உடலாய் இடதாய் வருவாய் மலராய் மணியாய் மொழியாய் கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே முருகா 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 षण्मुखपतये नमो नमः ॐ षण्मदपतये नमो नमः ॐ षट्ग्रीवपतये नमो नमः ॐ षट्वीणपतये नमो नमः ॐ षट्कोणपतये नमो नमः ॐ षट्कोसपतये नमो नमः ॐ नवनिधिपतये नमो नमः ॐ शुभनिधिपतये नमो नमः ॐ नरपतिपतये नमो नमः ॐ सुरपतिपतये नमो नमः ॐ नरशिवपतये नमो नमः ॐ षडक्षरपतये नमो नमः ॐ कविराजपतये नमो नमः ॐ नवराजपतये नमो नमः ॐ इहपरपतये नमो नमः ॐ पुगळ्मुनिपतये नमो नमः ॐ जय जयपतये नमो नमः ॐ नयनयपतये नमो नमः ॐ मञ्जुळपतये नमो नमः ॐ कुञ्जरीपतये नमो नमः ॐ वल्लीपतये नमो नमः ॐ मल्लपतये नमो नमः ॐ अस्त्रपतये नमो नमः ॐ शस्त्रपतये नमो नमः ॐ षष्ठीपतये नमो नमः ॐ इष्टिपतये नमो नमः ॐ अवेदपतये नमो नमः ॐ सुबोधपतये नमो नमः ॐ योगपतये नमो नमः ॐ मयूरपतये नमो नमः ॐ भूतपतये नमो नमः ॐ वेदपतये नमो नमः ॐ पुराणपतये नमो नमः ॐ प्राणपतये नमो नमः ॐ भक्तपतये नमो नमः ॐ मुक्तपतये नमो नमः ॐ अकारपतये नमो नमः ॐ उकारपतये नमो नमः ॐ मकारपतये नमो नमः ॐ विकासपतये नमो नमः ॐ आदिपतये नमो नमः ॐ भूतिपतये नमो नमः ॐ अमारपतये नमो नमः ॐ कुमारपतये नमो नमः அதை கழித திருவள்ளத்துடருருவே சிவகரம் அமருருவே அருமறை புகழுருவே அறவர்கள் ஒரு உருவே
இகழறு சிவகுமரா என நினையனதெதிரே சுகமுனிவர்கள் எழிலார் சுரர் பல புகழ் செய்யவே தொகு 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 எனவே சுர நடமிடுமயிலே சுகபதி அமர்மயிலே கொணதியும் இறைவனையே கருணை பெய்கணமுகிலே படமுனி பணி முதலே அருணயனரனவே அகனினையனதெதிரே மறுமலரணி பலவே மறுவிடு களமயிலே குரு பலவகன் மயிலே கொணதியும் இறைவனையே கொணதியும் இறைவனையே கொணதியும் இறைவனையே ஹரஹர மந்திர அமல நிரந்தர சரவண சம்பிரம சங்கர புத்திர சுரபதி பூம சகோதய போதக பரிபுர சததள பாத நமஸ்தே ஆதியநாதியும் ஆனவரோதய ஜோதி நிலாவு ஷடானன சுபகர வேதக சமரச பிண்டல பண்டித பாதக கண்டன பாத நமஸ்தே இந்துளலம்பக இங்கித மங்கள சுந்தர ரூப துவாதச கரதல சந்திர சேகர தடதாவிட தட பந்தி கொள்ளித்தன பாத நமஸ்தே ஈஸ்வரநந்தன வீசுர பொங்கவ தேசுர குண்டல சித்திர பந்தன ஆசரு சஸ்திர ஹஸ்த சரோருக ஆச விமோசன பாத நமஸ்தே உச்சித மஞ்சளி ஊரதி மோகன நிச்சய உத்தர நித்ய மனோலய சச்சன மித்திர சத்குரு கண்டன பச்சயம் புஷ்கர பாத நமஸ்தே ஊதுவ நாடக ஓதிய தேசிக ஆதரயிதிய அடவெரு காதக பூர்த்திகை வீரிய குக்குட கேதன பார்க்க வரும் குக பாத நமஸ்தே எண்ணரு வைபவ இந்திரசேஷன புண்ணிய உத்தம பூரண பশ্চিಮ கண்ணில பூஞ்சிவ கந்த கிருபாசன பண்ணவர் பூஜித பாத நமஸ்தே ஏரக நாயக என் குரு நாயக தாரக நாயக ஷண்முக நாயக காரக நாயக ரதிகரு நாயக பாரக நாயக பாத நமஸ்தே ஐங்கர சோதர அம்பிகை காதல மங்களவல்லி மனோரத குஞ்சரி இங்கித காவல இகபர சாதக பங்கையன் மார்பணி பாத நமஸ்தே ஓகர மகாரத ஒளிர்முய அமுதர்கள் புகழுவ வீர விபூ
நகித விதூனல்லாட விலோச்சன பகவுக பாவக பாத நமஸ்தே ஓம் ஹர ஹர சிவ ஓம் சரவண பவ ஸ்ரீம் ஹர ஹர சிவ பரிபுர பவ ஸ்ரீம் ஹர ஹர சிவ திரள் பவ மொழி வளர் பாமகள் புகழருள் பாத நமஸ்தே பாமகள் புகழருள் பாத நமஸ்தே பாமகள் புகழருள் பாத நமஸ்தே. அற்புதமாகிய அருமறை மொழி போல் வெப்புயர் புவனம்பல் விளங்கிடுமாறு கற்பல தேவர்கள் படர்ந்த விண்ணூரிலும் கற்பரமாவது சரவண பவவே பக்தியும் ஞானமும் வரவிடுமாகோ எத்தனையோ வகை இருப்பினும் இடத்தில் முக்தி தந்தானோதினோ முழு பலனல்ல சத்தியமாவது சரவண பவவே பூசிக்கும் வானவர் புறவலனாவே வாசிக்கும் மாவடி வழிபடி வாசலை நசித்து சரவண பவவே அருணலம் உள்ளவன் ஆதி முன்னுள்ளார் பொருள்நலம் உள்ளவன் போசித்த அடியாது இருநலம் எய்தினோம் இதமுடனே அருவத்தில் காப்பது சரவண பவவே பொடி பொடி மேனியன் வடிவுடைய எல்லோடை மனநடி கை கூப்பு அடியவர் கையும் அவனியில் குருவின் சடுதியில் தடுப்பது சரவண பவவே மஞ்சிகை செவியோன் மயில் பறிவோரோன் தஞ்சமென்றவர் கருள் தரு சமரூரான் செஞ்சரன் வாழ்த்துனர் திருவடி சேர்வார் சஞ்சலம் தவிர்ப்பது சரவண பவவே பொங்கிட புனலிலும் கோவிலின் கனலில் எங்கனும் உள்ள வெளியில் வழி பகலில் அங்குலில் அடியவர் கருத்து நங்காத சங்கடம் தீர்ப்பது சரவண பவவே தென்திசை கோன்விடு திருவித தூதர் குன்றனும் புய மலை குடுங்கமும் கொடுமீ வெற்றி கொள் கடந்தடி வீசி வெம்பிடினோம் தந்துணையாவது சரவண பவவே தேவியும் தேவரும் திருவருவருமோ ஏயநாதிய மிளித சண்முகம் என்று அழிவுறவள்
அன்பரை தொண்டு கொள்ளும் கனவுத்தி பெருகுடையாய் எம்பெருமான் எனவே நிலமே துணர் பங்குடையாய் அம்பர வேதியனே நெல்லையப்பர் விமான முலை செம்பர வேலுடையாய் என்ற சிந்தையை கூட்டி செய்ய கங்கையும் கொன்றையுமா இழை கண்ணுதலான ஒரு சங்கரனார் குமரா வந்த சங்கரனார் இறைவா அங்கதமற்றவனே நெல்லையப்பர் விமான முறை உங்கவனே குகனே எந்தன் குருதியை கூட்டி செய்ய காணமலர் குழலி தெய்வ குஞ்சரி காவலனே தானவர் மாபுரியை சலராசிய மூடிவிட்டோர் ஆனவர் காக்கமிட்டோர் நெல்லையப்பர் விமான முறை நூலவில் வேதியனே என்ற நோக்கத்தை பூர்த்தி செய்ய பக்தருள் புத்தமுதே எங்கள் பாக்கிய பொக்கிஷமே சித்தனும் சக்திதனை ஒரு துண்டத்தில் சேர்த்துடனே அத்தனை அற்புதனே நிலையப்பர் விமான முறை நித்தனை சண்முகனே என்ற நெஞ்சத்தை பூர்த்தி செய்ய ஊவளம் கொண்டொழுக சிவ புண்ணிய தாண்டழைக்க தாவரமே தினமோ நல்ல தாமிரவண்ணியனோ தான் பெருக நெல்லையப்பர் விமான முறை வீவிலைக்கரனே எதன் வேண்டலை பூர்த்தி செய்ய சந்தனம் மந்திப்பவர் பக்தி சாலத்தில் சிக்கிக் கொள்ளும் செந்திருவன் குடையார் உமை செல்வ செழும் பொருளே அந்தர நாயகனே நெல்லையப்பர் விமான முறை நந்தனில் எம்பெருமான் என்ற ஞானத்தை பூர்த்தி செய்ய சங்கையில் உன் புகழை தினம் சாற்றிய எந்தை பிரான் இங்கனை உயிரித்தவர் உனை அன்றியவர் உளரால் அங்கேயும் மேனியனே நெல்லையப்பர் விமான முறை பங்கமிலாயனது வழிபாடினை பூர்த்தி செய்ய பங்கமிலாயனது வழிபாடினை பூர்த்தி செய்ய பங்கமிலாயனது வழிபாடினை பூர்த்தி செய்ய நமோ நமவே மந்திர ஸ்வரூபா நமோ நம ஞான பண்டித சுவாமி நமோ நம வெகு கோடி நாம சம்பு குமாரா நமோ நம போகவந்தரி பாலா நமோ நம நாத பந்த மயூரா நமோ நம பரசூர சேத தண்ட வினோதா நமோ நம
सर्वमङ्गल ज्योति नमो नम तूय अम्बललीला नमो नम देव कुञ्जरि पादा नमो नम பெருமை மதி பரசிவனோ கேடு சார் செவ்வேடும் ஒரு பொருள் என்றுணர்வாத உணவில் உணர்வாய் விரவும் அருள் நிமல குகனே நல்லறிவாவது அருள் குனியே அருள் நிமல குகனே நல்லறிவாவது அருள் குனியே ஈசருடன் ஞான மொழி பேசுமுகம் ஒன்றே கூறும் அடியார்கள் பிணை தீர்த்த முகம் ஒன்றே குன்றுருவமே வாங்கி நின்ற முகம் ஒன்றே மாறுபடு சூரரை பதைத்த முகம் ஒன்றே வள்ளியை மனம் புணர வந்த முகம் ஒன்றே ஆறு முகமான பொருள் நீ அருளல் வேண்டும் ஆதி அருணாச்சலம் அமர்ந்த பெருமாளே ஆறு முகமான பொருள் நீ அருளல் வேண்டும் ஆதி அருணாச்சலம் அமர்ந்த பெருமாளே தீரனுக்கு ஹரஹரோஹரா செந்திலாண்டவனுக்கு ஹரஹரோஹரா ஆண்டிக்கு ஹரஹரோஹரா இவனை குருபரனுக்கு ஹரஹரோஹரா கணிகை நீரனுக்கு ஹரஹரோஹரா போராடும் குமரனுக்கு ஹரஹரோஹரா மாந்தியோர் முருகனுக்கு ஹரஹரோஹரா இவனை கிழவனுக்கு ஹரஹரோஹரா சிங்காரவேலனுக்கு ஹரஹரோஹரா வள்ளலுக்கு ஹரஹரோஹரா முருகனுக்கு ஹரஹரோஹரா முருகனுக்கு ஹரஹரோஹரா முருகனுக்கு ஹரஹரோஹரா முருகா 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 அசதோமா சர்கமய தமசோமா ஜோதிர்கமய மிருத்யோர்மா அமிர்தம் கமய ஹரிமோ சாந்தி சாந்தி சாந்தி
everyone, and welcome to our live Google Hangout. I have with us Dr. Ply tuning in live from India, and Pete Craig from the United Kingdom. Thank you both so much for joining and making this show extra special. So we had promoted this Hangout as the third eye, awakening the third eye. How do we do that? What is the third eye? And then we were going to see if Dr. Ply would give us some tips and techniques on opening it. So we've widened the scope of this event to go beyond the third eye and into the midbrain. And Dr. Ply will be talking to us about that. You may have noticed that at Ply Center, we are doing a countdown to December 21st, 2012, and we are on December 1st, so we're in our 21-day countdown. So we welcome you to join us as we give new tips and inspiration every day through the next 21 days. So we know that December 21st is the end of the Mayan calendar, but we have news as this today from Dr. Ply that December 22nd is the awakening and the start of the golden age. And that day is going to be, well, even more important than the 21st. And we have a special announcement today about that particular time, this pivotal energy that is beginning again. Dr. Ply will be joining us on a live cast on December 21st, 22nd, which will be about 5 hours long. So it's going to be an incredible time, and we are going to be sending you a special way to register for that free live cast later in the Hangout. So first, to honor our third eye topic, I'd like to introduce Pete Craig. He has been he's an internet marketer, online internet marketer from the UK, and he's also been working with Ply Center a little bit and helping us out somewhat. Now he joined the Millionaire Yoga program, which we did 2 months ago. It's actually ending this week, that program. And there was a third eye initiation that occurred in that program. Pete's going to tell us about his experiences there, and then he also got the chance to meet Dr. Ply in person in London during the third eye initiation just last weekend. So we'd love to hear about your experience, Pete, and some folks may be interested that the next third eye initiation is happening in New York City on New Year's Eve, and that's pretty much the last live event or in-person event Dr. Ply has scheduled. So Pete, please tell us a little bit about what happened to you. I know it was a particular thing that occurred during the particular initiation. Yeah, hi Jaya, and thank you for the introduction. Yeah, I think for the previous 6 months prior to starting Millionaire Yoga and prior to the third eye initiation, I'd struggled to get up in the morning. I'd struggled a little bit with my focus during the day, and I joined the Millionaire program a couple of weeks after it actually started, so I was quite keen to do as much as I could and try and catch up with everyone. So I was quite intense and did the full, the maximum practices, morning and evening as well, to try and catch up. And the day after I'd actually done the first meditation, I woke up, as I was telling you earlier, I woke up at 4:30 in the morning and just couldn't get back to sleep. I was so energized. It was almost like kind of a rebirth. I felt so full of energy and so alive, and I got up and did my exercise regime, did my meditation, and then started work, and I just had continual focus right the way through the whole day, and it's been like that every day since that started. So for 6 weeks now, 5 o'clock every morning, I'm awake, I'm up, and I'm 100% focused for the whole day. So it's just been, it's kind of energized my whole body, not just my mind, and it's given me so much more focus, so much more clarity, and I'm starting to see things in a different way. I'm becoming much more alert, and I've even started to manifest some of the things that I was working towards within Millionaire Yoga, which is fantastic. It's it's been amazing. Great. Yeah, so I was going to ask, how does that translate into maybe something that's occurred for you so far in your life?
Yeah, I think the biggest thing was actually being able to be that much more focused and start to see things progressing and the things that I was working towards starting to come closer, and also things that I knew I had some blocks or some doubts about. All of those doubts are now gone, and I've got no doubt at all that those things are going to happen next year for me. Um, and one thing in particular, that I was working towards and that I'd set a goal for, that's actually, it's not arrived yet, but that's actually manifested, or I've manifested the opportunity for that to happen, and that should occur in January. So that's just amazing that these things have presented themselves and come about so quickly now. Fantastic. And how has this changed how you see Dr. Palak? Because before this, you hadn't met him. You weren't really meditating, right? And this all kind of happened for you rather quickly. Yeah, I'd done a few of Dr. Pillai's practices, and I met him briefly when he came over to the UK the last time. But at that point, I didn't really realise how much of an impact his teachings were going to have on me. But since then, I mean, it's just been incredible, and I'd encourage everyone to listen to what Dr. Pillai has to say, and his teachings are incredible. They're life-changing. Yeah, thank you so much. Thank you, Pete. It's a pleasure. It's a pleasure. So now I'll turn it over to Dr. Pillai. If you could tell us more about the third eye and beyond, and maybe comment on Pete's experience and how other people can anticipate having changes in their life based on your new teachings of activating the brain. I'm happy to join this hangout. For the past month, it has been really very hectic. Maybe I'm catching up with the speed of light. I have been traveling internationally, staying only a couple of days in one place. Even in India, I've been traveling just 1 or 2 days in a city. This excites me because we have to catch up with the speed of light. That's what is going to change humanity. Humanity has been suffering since the beginning. We have never known a time when we were happy from the time of birth till the time of death. And that's pretty bad. So when a child is born, the child cries. And then when you leave this earth plane, again you cry. So in between there are some momentary happiness, which is not really happiness, some pleasures here and there, whether it is pleasure of eating or pleasure of having sex, or But then down the road there is nothing that is sustainable. So the important message that I have to give it to you is very heartwarming, and that's about the upcoming golden age. And that's why I feel that I justify myself being on the earth plane is to be the one who will facilitate the process. I have, as days pass by, I am more and more encouraged, particularly this day. I am in the city called Pondicherry. Those of you who know about Pondicherry will know about Sri Aurobindo. He meditated about 50, 60 years of his life, and for about 40 years he stayed in his own room, and then will come once in 3 months. And what did he want? He wanted everybody to get a light body. He said that is evolution. Otherwise, you are all going to suffer, and that is not acceptable. We have to live the life divine. That's the book that he wrote. He wrote a number of books, hundreds of books,
And spent a lot of time trying to bring the light into the world. And the mother who came also did the same thing. But what happened at the end? Was Arbindo able to achieve it? No. It's very sad to say that at the end of his life, he even became blind and had to has to dictate his essays, the last essays to someone, and the body was beat up and then he died. I have great respect for him, but then the answer for the humanity's suffering still lingered without any hope. But now is the time. I'm very happy to announce it. Now is the time. We are counting down days for the golden age that's going to be dawning on the 22nd and 21st is the last day. So what is going to happen to us? That's what I'm going to talk about in this session, and I take this opportunity to announce you that I will have a full exposition of what it is to you in a 6-7 hour program, free program that I would be doing on the 22nd, just as I did prior to the Millionaire Yoga, in a studio in San Diego by the launchman will be launching it. And wherein I will teach you, if not the ultimate, the penultimate teaching. And what is the teaching? The teaching is something that I have come to call as the 3M, which is mid-brain miracle maker method. The midbrain is the miracle maker. And we don't know about miracles now because we are caught up in this cause and effect and time bondage. We cannot experience anything without cause and effect. We cannot experience anything without time. If all these things have to happen, then we have to move our awareness from the cortex to the midbrain. I was initially going to talk about the third eye, then I told Jayarada that I will expand the scope and speak more about the midbrain because the third eye is also in the midbrain. Now coming back to the third eye is not simply the pineal gland, although the pineal gland is a replica of the third eye within the physical body. So the third eye is in the subtle body, which is not visible. So that is more wider and bigger concept, and also a phenomenon within the subtle body. But since we know only the physical body, so it's better to talk about the pineal gland, which is the third eye. I want you to look at the pineal gland and the third eye exposition by David Wilcox. I strongly recommend that. There's a lot of videotapes on how the third eye can help you to shift dimensions, and how in the first place, in times in memoriam, and the yogis came out with the third eye, were able to call this pineal gland as the third eye. There was apparently no surgery at that point, but then they were able to call it a third eye, and then the pineal glands exactly look like a third eye with the cornea and the retina, and then the rods and cones. All that we have in the physical eye, we have in the third eye or the pineal gland.
But remember, as I said, the third eye is much bigger than the pineal gland. It is uh, uh, in the subtle body that includes a sizable portion of the midbrain. So the 3M is the course that I am going to be teaching, which is the midbrain miracle maker method. Midbrain miracle maker method. So we should be able to make miracles, and the miracles are being disallowed by the cortex, the large chunk of the brain that we use, with including this part of the brain, which is the frontal lobe. This is the brain that disallows any instantaneous happening. For instance, you want a beautiful house or a beautiful boyfriend or a girlfriend, and then this brain kicks in and then says, well, you are old, you are not ready, and how can you get a good boyfriend or girlfriend? And if this brain doesn't think the same way, then you will get the house you want, the car you want, the girlfriend or boyfriend you want. So the problem is not analyzing about your disqualifications, why you should not have it, which belongs to the rational brain, which is this part of the brain. And if you can just move out of this and then go into the midbrain, which is a very small brain. The midbrain is often called the primitive brain. And that primitive brain can do wonders. Now, you can, there's a very beautiful book that I want you to read apart from David Wilcox. And this book is written by a neurosurgeon from the Harvard Medical School who went through an experience of coma for 7 days, and then during which time his brain died, the cortex died almost. And what was functioning is the midbrain. And through the midbrain, he was able to see another world which is not visible to us, and that he called as the heaven. That's why the book is named as Proof of Heaven by Eben Alexander, the neurosurgeon from Harvard Medical School. Strongly recommend you take a look at that book. So now I am not a brain scientist, but I am coming from the spiritual counterpart of what is being known to neuroscientists, or to put it differently, I'm a spiritual scientist representing the yogis and siddhas who would not accept any limitation. And what do they want? They want everything to be done instantaneously. I have a clip called Instantaneous Manifestation, which I did several years ago. There's more than 1 million hits. I want you to go and look at it in the YouTube. Because everybody wants everything now. Why people respond to that? Because we innately know that we can do that. But we cannot do that until the midbrain is active, or until the third eye, which is in the midbrain, is active, which can shift dimension and get you to a different dimension where things are possible without any delay of time. One of my sayings is, waiting is a waste of time. Okay, you have to go and convince yourself, convince your frontal lobe. It needs to be programmed. That's going to be part of what I'm going to be talking about on the 22nd. I do really believe. Not only believe, trust, because belief is not as good as trust. But it's not even trust, but it is a reality in my life. I must have this bad reality to come to an end. No matter what, you're a billionaire or if you're the most beautiful person that you always wanted to be, all these things are not going to put an end to human problem.
because we all have in this lifetime seen how Elizabeth Taylor was at one time, and by the time she was aging, and then she didn't even want, you can even see her face. So what causes this problem is aging. So in order to stop aging, you have to understand the body, the DNA, and the DNA should not process time. In order to do that, you have to understand time. And all this could be understood only by the midbrain, because midbrain is timeless. Now, we have progressed tremendously during the last 100 years because of the science. And the science is going to give us a better understanding of the possibilities of the midbrain, which the yogis had known without the science. But with the science, it is going to be better. That's why I always believe that I am on Einstein's side, who said that we have to have a merger of science and religion. Because science without religion is lame, and religion without science is blind. So I don't want you to have blind faith. I don't want you to take me just on a faith level. I want proof, just as Ibn Alexander said, proof of heaven. So you should be able to do everything that you want to do. Then only you are worthy of a higher level of consciousness. That to me is golden age. And that is coming. It is Sri Aurobindo. I am talking from the city of Aurobindo. It is the largest ashram in the world, with thousands of acres of land and people working here. But then he himself went blind, became old, and died. And that should stop. Pain should stop. Suffering should stop. It will not happen until we live in this cortex, which is this part of the brain, the frontal brain, the parietal lobe, the occipital lobe, and then the temporal lobe. Okay, they are governing our own consciousness. Not that we are going to get rid of that, but they have to be educated, and the 3M will do this job. Midbrain miracle method will do it. We want miracle. What is miracle? Going beyond time, getting things when we want. This is what Paul, for instance, in the Corinthians said, hey guys, don't think that you're going to get the kingdom. This corruption will not inherit the kingdom. This is a very clear message to the Christians that Paul was giving a long time ago, although he himself had a very bad ending. But then he saw the vision clearly because he never saw Christ. Christ only appeared to him as a light when he was on the road to Damascus. But he was the most powerful of all the apostles who created Christianity. Paul said that the kingdom will not be inherited by you with this physical body. Then what's going to happen? In the blink of an eye, the body will turn into light. There you go. The midbrain will do that because it's timeless, it's spaceless. See, Einstein outdated the knowledge of time and space proposed by Newton. For Newton, time and space, time is absolute and space is contained. Einstein said that's wrong. They are relative. And he have made a very important statement that when you vibrate with the speed of light, time will disappear. But then
what Einstein did not know was how this can be accomplished with regard to the human body, but Ramalingam did it. The Thamasiddhas did it. So that has to come again to save the humanity from suffering. And that time is coming. I'm very happy to do this program. So don't miss this program. On the 22nd, it is free. It's for 6-7 hours. And then the people who are putting it together, my students, they are getting some scientists to come and talk on the midbrain, besides my approach, which is based on my Siddha tradition, particularly Ramalingam tradition. I also incorporates a lot of science, because I believe that nobody is complete, neither the Siddha nor the scientist. They have to be brought together. So between now and then, I'm going to be doing more and more of this kind of hangouts in order to help you understand the 3M. The 3M, we have been working very hard to perfect the program. It is my latest teaching. I don't want to even look at whatever I have taught before. I'm not a guy who wants to cling on to whatever I taught some time ago and say this is it. Even that's why I don't write any books. There are some books written, I don't even care to publish them or anything, because that's outdated. Then I'm not true to myself. So the way I live my life is today I'm here, tomorrow I do not know where I'm going. Because that is how I benefit from understanding the moment-to-moment life. It's not about writing a moment-to-moment life and stay in one place. You cannot be doing that. Okay? And stuck in this material body, then you are not in the moment-to-moment. I'm not really speaking in the moment-to-moment, because I have this still stuck in this body. But then there are photographs of mine showing the light body. You have seen that. Though, those of you who have not seen it, we will show that photographs to you, because the digital camera picks up that, because it lives at different time frame. It can pick up the 52,000th of a second or something like that. And that is what able to pick up the light. Every day it's a camera that picked up the light body while I was there with a lot of other people in Hawaii. But then that I have to bring it more and more, and I am keeping this meat body of flesh and blood, which is not a great experience. It's painful. The mind is the problem, because it's like a vampire that takes all your attention. The midbrain doesn't get any attention at all. The third eye doesn't get any attention at all. If the third eye is open, which is the program that I'm going to be given in initiation program. The next initiation program is going to be on December 31st in New York. That's a commitment I made. I many times thought I would cancel it, but now I think that I should keep it, because though you may not be able to go there, there should be a webcast, so that this will be a message that that I am preparing myself for the new world. So that's briefly what I'm going to be doing, and the 22nd is the most important day for me, wherein I'm going to read the 3M midbrain miracle method. And that is how to live in the midbrain, and then how to awaken the third eye, which is not simply the pineal gland, but also the parts of the subtle body, and even within the physical brain, it includes a lot more area than the pineal gland. The pineal gland is central there. So what kind of neurotransmitters will be secreted, and which the
Siddhas call as elixirs, and then how the body will turn into light. So I'm very excited about it. For the first time in my life, I just returned from a walk, and then I felt so happy that after all, it's all coming to an end. It must come to an end. I don't care, looking at a beggar and how it is going to be a bright day for him versus a billionaire. Both are the same to me. Okay, both of them are going to die. Both of them are going to have physical problems, psychological problems, disappointments. And both of them are aging, and both of them are going to die. And this is not right for the human race. The human race has to evolve and get beyond all these things. Now, and that day is coming. 3 a.m. is the answer. So just watch for my hangouts, and then I don't know where I am going to be. I'm planning I'm going to London. The thought came to me only a few minutes ago, and not there for a long time, and then maybe go there, and then there is also another plan to go back to Israel before I go to the US. So wherever I am now, thanks to the technology, that I could join you from my room, and then that's why I love this science. I love this science. Until our third eye is open, where then we can see each other without the need of Skype or Hangout or anything, or even there you won't even know why the hell I have to see anybody. Then you will come to a point, and then you'll be light. So that is the golden age. So that's all I wanted to say in this hangout, and I'm sure those people who weren't able to hear me and see me would be able to see this on the YouTube, because it's going to be available on the YouTube. 3M is the answer. Midbrain Miracle Maker method. It's a method that I'm going to teach, and there is a method to create miracles, and that miracles are located in the midbrain area. I'll see you next time. Thank you. Thank you very much, Dr. Pillai. For those interested in pre-registering for this free event, we do want to keep you apprised of how to get there, when it is, and all of the details. So we have created a special link just for the Hangout folks to go and pre-register right now. And again, it's totally free. So what you need to do is go to midbrainmiraclemethod.com /pre-reg.php, and we're going to put that link in the comments right now, and if and for the live folks who are watching, so that'll be there any moment now. So you can just click on that and then go ahead, enter your name and email. That's all it is, and you'll get added to the email list that will keep you updated on all the details that you need to know in order to join this amazing live cast that Dr. Pillai will be doing on the day of the new energies, the golden age. So in addition to that information, we have a couple more things to cover before we end this broadcast. One is we said we'd give you a gift today. We're going to give away gifts every Hangout, so I'll be doing that. Be sure to tune in next week live. Dr. Pillai, we hope to again track him down wherever he is and have him join us. He said he would like to be joining these Hangouts until the December 22nd, which is the big one. So we're counting down the days to the new energies, the golden age, and this is part of it. These Hangouts are part of it. Speaking of counting down the days, we have a packed schedule in December, and I want to give you an overview of all those energies so that you can take advantage of them. There was a recent newsletter sent out by Pillai Center. If you're not on our email list, just go to pillaicenter.com
enter your email ID, and we'll send you our regular newsletters to keep you updated on everything Dr. Pillai is doing and different activities you can take part in. For example, today was the kickoff of our 21-day countdown to the Golden Age. December 6th is a webcast with Dr. Pillai about how to transform your relationship with time, how to use time better. It is the birth of time. It's Kalabhairava, who is an archetype signifying time energies. It is his birthday. So Dr. Pillai has said that this is the new birth of time, the way time will be related in the Golden Age. So he's going to give us specific teachings on that, and that's December 6th. December 12th, 12-12-12, we are going to have a global meditation and activation, and that's totally free. So again, you'll want to be on the mailing list just so you can get this information and participate. December 21st is the end of the Mayan calendar. We will be doing some specific cleansing and energy healing in India in the form of fire labs on this very special day. So you'll want to participate in that too. More details to come. Then the December 22nd is this new live cast that Dr. Pillai will be transmitting energy, giving us meditations and methodologies for tapping into the midbrain. So you won't want to miss that. After that, we have a very specific, very interesting date. It's December 25th, which is the birth of Christ and Christmas, and it is also a 13th moon. So Dr. Pillai has said that this is a very special time to remove karma, because the 13th moon does that for us. It opens a window to remove the constraints of the past, but because it falls on Christmas, we receive the extra energy from the Christ consciousness, his sacrifice of giving his flesh in order to relieve the sins of the world. And that's very much like Pradosham. There's a sacrifice involved, not a human sacrifice. We use other items, fruits and such, and there's a relief from our sins, our karma. And then down after that is what's called Shiva's birthday. It's divine consciousness, the birth of divine consciousness on the 27th of December. And then December 31st, New Year's Eve, is the end of our calendar year, and Dr. Pillai will be in New York City, very powerful energy center for the entire planet, giving an intensive meditation workshop from 10 p.m. to 3 a.m. So this is going to be extremely transformative. He himself will be personally in New York City. If you can physically be there, you want to physically be there. It is the least expensive third eye initiation I've seen him give ever, so in person. And he will be doing touch initiation, so he will literally touch your third eye. And I've never seen him actually do that before this year. And the ones he's done have been weekend-long workshops, which were more costly. So people have been saying, we want to see him, we can't afford to pay $2,000 or so. So this event is $500, and it is the time, if ever, to go see him, because we don't know what he's going to do next year. You just heard he's always in the moment. Right now we know we have New Year's Eve scheduled, we know we have the birthday trip scheduled. Beyond that, we have no idea when Dr. Pillai will make himself physically available to us in an event. So we hope that you'll take advantage of that. If you cannot be in New York City, we will be having a live webcast, broadcast from New York. So you can participate in that as well. People always ask, should I be in person or should I be remote? If you can be in person, be in person. If it's going to be too much of a hardship for you to travel to that location, then do the webcast. So just take what's best for you. But if you're in the local area of New York City or New Jersey or Connecticut, then by all means, I would get myself into New York City on New Year's Eve, despite maybe the traffic or what have you. Just plan ahead. It'll be fine. So that is our exciting lineup for December. We are so happy to have you with us in these transformative energies that are just continuing to happen more and more every single day. Giveaway, what are we giving you free? Well,
speaking of being in person with Dr. Pillai, we have a free opportunity for you to do that in San Diego, which is where the live cast will be broadcast from on December 22nd. We have limited spots. We have about 20 of them. So right now, send an email to hangout@pillaicenter.com. There's going to be 2 winners for this drawing. Then every week we're going to be giving them away, but only during the live. So if you email us after the broadcast, then you aren't qualified for the drawing. You have to be live sending us the email during when we make the announcement. So I'll see the timestamp and I will know who has emailed us during the live broadcast. So email hangout@pillaicenter.com and send me a paragraph. Who you are, why you want to attend this event, and you and a friend would be eligible if you win. So please go ahead and do that now before we end. And I just found out that our link is not posting on the comments, so we will, as soon as this ends and it is a replay, we will post that link. In the meantime, midbrainmiraclemethod.com/pre-reg, PREREG.php. So don't worry, that's not going away. That is going to remain there so that you can go ahead and register for that. So those are our free giveaways and our amazing energetic lineup for December, and we hope that you are participating along with as much as possible. I want to thank Pete again for joining us live from the UK with his amazing story and an inspiration, so that hopefully that helps other people to get involved and go for these opportunities that we have with Dr. Pillai. Maybe next week he'll do a meditation with us. So we'll stay tuned. He'll definitely be doing meditations on the 22nd. So thank you all again, and we will talk to you next week. Namaste. For the next 30 days, beginning from today, I'm going to do video clips for you, exclusively on prosperity. And it is a great day to begin the first video, because it is a full moon day, and that partly happens on the Anuradha star. Anuradha brings with the energy of incredible prosperity. So it is Anuradha inspiring me to do this video clip just to help the world. There is energy dynamics going on in the universe, and the yogis were able to see that energy and came up with what you can do to access that energy in order to make your life one with prosperity and happiness. Thanks to all their help. This is the reason why I value astrology, because it is a study of time and the study of energy. But unfortunately, most spiritual teachers today, they kind of have an attitude towards astrology as a superstition, although, as I have many times mentioned, the Supreme Court of India and the University Grants Commission of India have both agreed along with the Parliament. But people who are really uninformed are those who are ridiculing this. But I want you to do a look at the star and the energy in a very objective way. And I will be the first one to reject it if it is based on superstition. But anyway, that's not the point. The point is, I'm going to be doing a lot of videos, at least 30 videos until Guru Purnima, which is the next full moon on July 12th, which is the
the big full moon of the Guru called the Guru Purnima. One thing that you have to be aware of, because most people, especially elite people, have been influenced by the teaching that you should have choiceless awareness, that you should be able to only watch thoughts and not be influenced by it. And this has gained popularity and some traction among New Age people or people who are interested in spirituality. Choiceless awareness itself is a meaningless phrase because awareness itself is choice oriented. And how can you be choiceless? Even choiceless awareness is also a choice. And after all, what are you going to get by thought watching and not participating in the thought, or looking at reality without a thought interfering? These are really high sounding, verbose jargon taking you nowhere. I would rather recommend that you take a thought and spin it and turn the inside out of it. Bring energy to it and then manifest, because it is the thought that becomes the light and that becomes matter. Nada Bindu Kaladi Namonam. This is Aranagiri. It is the thought that becomes the light and the light becomes matter. And if you know the philosophy behind it, then you can take a thought and then use it and bring it down to the light particles and down further into three-dimensional matter. I will discuss all of these things in my upcoming Singapore conference on the Guru Purnima day. God bless. How to be in the now. The how should be preceded by why. Why to be in the now? Being in the now, I mean the eternal now, which is a presence, which is the observer, is the most desirable condition because it is unlimited living. There is no limitation in it. All limitations come when we are not in the now, when we are in the mind. Because being in the now is out of the mind, is out of the domain of the present. It is being in the presence of omniscience. So why one wants to be in the now? Because one wants to be omniscient, omnipotent, and omnipresent. And how can you develop it? Now the how comes. We develop it through developing a passion for it. A passion for what? A passion for life. A passion for unlimited life. And that's more important. And simply the passion is not going to work because everybody has passion. But then there should be two more elements. One is dedication. You have to be dedicated to whatever you want to accomplish. Then the action plan. What am I going to do to be in the now? And if I just run my life without any goal,
then life happens, but that will be a karmic life without any glory to it. Think about all these things. You will know then the value of now. God bless. Hello. Hello, everyone, and welcome to our third and final hangout in the series of Dr. Pillai's wanting to empower the 99% of the world population for prosperity consciousness. Now, the first two hangouts, we learned that, or Dr. Pillai taught us techniques on how to do this. We learned the meditation. We learned certain aspects that prevent us from having success and how to overcome them, such as the planetary influence, from creating prosperity, especially as a majority of spiritual people. Now, in Pillai Center and through Dr. Pillai's teachings, each one of us have come into experience people talking about why they feel that spirituality and money are two different things. However, if you are familiar with Dr. Pillai's teachings, you know that he teaches that God is not poor. So Dr. Pillai can't be with us in person today, so we thought we would have a hangout with you and talk really honestly about this important topic. It is something that is keeping each one of most likely the 99% back from achieving the wealth and financial freedom that I think we all want on some level, but we also keep hidden from ourselves. And that's what this hangout is about today. After we're done chatting here in the kitchen nook, we're going to talk about what are the next steps that you can do and why this is the most powerful time right now of the year for you to be empowering yourself. The next 4 weeks is a very special window of why we should be using these techniques specifically to create personal prosperity and a commitment to ourselves to do that, not just for us, but for the whole world. So I have with me here Elaine and Beth, and some of you know us in different names, but so I'd like to just open up the conversation today about how we've each been impacted and what we can give back to the audience. So this has become a really fiery conversation with us over the past several days because we're leading up to Dr. Pillai's live event that's on September 29th. It's called Millionaire Yoga. I think probably many of you have seen that advertisement, but he is going to talk very much about changing the neurology of the mind. So in preparation for this event, everyone's been talking it up and going to their friends and saying, please come, please register and come to this 4-hour event on the 29th. And what I found personally was just really something that was just very, very different than what I thought. And that when I reached out to some of my friends, they said, well, this is about money. This isn't spiritual. And it's that concept that it's the first time it really hit me in the face that this is something that the majority of spiritual people hold. I've always heard about it, but when this was my own very personal experience with it, it just really struck home to me. And the more I thought about it, I see that this concept is what's holding spiritual people back. It's the thing that is preventing the spiritual people from having the energy
individually and collectively in changing this world, because the spiritual people in this world have the ability and the consciousness to make this global shift. We're the ones that are going to do it. And if we deny ourselves of the money and the other empowering things that come with money, then this shift is either going to be delayed or it's just not going to happen. So that's absolutely. I agree 100%. And we've heard Dr. Pillai talk about money for a long time, and I've had the same experience where people would say, and in fact, the last two hangouts, people were saying, well, when is he going to start talking about love and peace and things that people think that spiritual people should talk about? But it is through Dr. Pillai's pure compassion for the human race that he wants to empower us to have the freedom around financial abilities and being able to care for ourselves in that way. So it is 100%, and he'll tell you he's 200% life, 100% spiritual, and 100% material, and that there shouldn't be, this anxiety between the two. And I know Mohini has a really compelling story also. Yeah, I totally lived out the reality of my own perceived notion of the divide between money and spirituality. I just wanted to share that because last night I had a really powerful realization. When I was a child, I had a very strong idea that there was a nobility to poverty. And this was created by my upbringing. And the interesting thing is, as a young adult, I took this core belief that there was a nobility to poverty, and I took it way to the extreme, and I created an incredibly strong core belief that had a major impact on the rest of my life. I was actually a missionary in Mexico, and I had a chance to work with people that lived in slums where the houses were literally made of garbage. And when I came back to the US, I declared to everyone that it is wrong to have anything more, either money or material comforts, than what you absolutely need. Mm-hmm. And last night, I was contemplating on this during my jet lag, so I was awake a lot last night, and all of a sudden it hit me, and I realized that I had exactly lived out this core belief every day of my life until I met Dr. Pillai. Every day throughout my entire 20s until I was 30, I had just about zero in my bank account. And every day was about wondering how I was going to pay basic bills or get my food or pay the rent. So this, a powerful core belief, totally manifested my daily reality. Mm-hmm. Now, the downer about this is that I was disempowering myself. I had really strong dreams. I saw a movie on Mother Teresa in my early 20s, and I decided that I wanted to serve the poor like her. And however, I was totally bogged down by all the problems in my life, and one of them was primarily all the restrictions around money, because everything was about not being able to pay my bills, not having money in a bank account at zero. So many people are like that. Exactly. Yeah. So the incredible thing is when I met Dr. Pillai and he gave me the opportunity to build the foundation of this organization, I was able to go to India and actually begin to live my dream. And now, in the past 20 years, I've been able to personally reach like many thousands and thousands and thousands of poor people. And when did that start? That started when Dr. Pillai came in my life and he confronted this belief about the divide between money and spirituality. And he taught me techniques to empower myself and to move into prosperity consciousness, not just for myself, but for others. Absolutely. And that's what we were talking about before in terms of the empowerment and how it's actually the drain that we have not having money instead of the actual empowerment part and the energy part that we are, kind of creating within us. I grew up very poor also, not having certain things, and then actually the energy that had me feel bad about that. So there's also, there's so many levels, I think, to the emotional aspect of money. There's the guilt around having it, some people, when the shame around not having it. There's all these layers of emotions, I think, that we grow into through our whole life. And those things, like an onion, just stay there until we start peeling them away. And that's what I love about Dr. Pillai's teachings. And he's unique in that, in terms of a spiritual teacher who does address the idea of
erasing that. That's just part of our karma. It's part of the spiritual process. And that's, I guess, what fires me up too about it, people denying that. But through all my years of growing up and not having certain things and feeling like I was looked at differently in school, and having that emotional imprint be created, and having to overcome that. It's been a long journey, and it's still a journey. There's definitely always lots of work to do. And Mohini's going to actually guide us through a contemplation so that we can start unraveling these things and taking it to the next level. So is that something you'd like to do with us now? Sure. Okay. Sure. This will just be short, everyone. So close your eyes. When we close our eyes, it helps us take an inner journey to our inner world. And then just focus on your breathing. Just watch the breath go in and out. Now just let your mind and your memory drift back to when you were a child, and bring to your awareness the memories of people's interactions with money when you were a child. Think about your parents and your friends, the rest of your family, your teachers. What did they say about money? Or did they express any feelings about money? What were their actions around money? Just take a few more moments to contemplate on people's interactions with money when you were a child. Now, amongst these memories, try and identify some key incidents. For myself, I have very vivid memories of my parents' interactions with money, and I can see it crystal clear in front of me. So it left a big impression on me. So similarly, are there any situations that you observed about the interaction with money or people's experiences of money that left a very vivid memory upon you? Just let that arise and don't judge it. Now move a little bit more forward in your life. Can you find a time when you actually developed your own core beliefs around money, and when that became apparent to you? So just like at one point in my life, I decided that it was absolutely wrong to have anything more than what you absolutely needed. And I remember the very day I affirmed it to the world. Is there a time that you can remember when you crystallized your own core beliefs around money, and possibly negative core beliefs around money? Now move a little farther forward and just view your entire life as an adult. Do you see the link between other people's interactions with money, negative or positive, your own core beliefs around money, and the way that you deal with money on a daily basis now? Just contemplate on how you spend money or use money. How do you talk about money? How do you feel about money? Do you see the interaction? Is there a link between core beliefs that you could have created in your formative years, and you're still carrying it forward? And it could be creating a daily reality in your life that doesn't fit with you anymore.
Just let that arise. Don't judge it. And relax. And open your eyes. So this is the process that I actually took myself through last night. And it was really powerful for me to see that we are so powerful. Our thoughts are so powerful, and our beliefs, that the exact core belief that money was absolutely wrong to acquire, but I lived it out perfectly. We are great manifestors. So why can't we use it for positive manifestation? Right, right. And desire, like Dr. Ply talks about how we manifest our pure desires. So everything we're manifesting is on some level of pure desire. Right. So not having money or feeling that it's noble or, you know, to be poor is all a desire that we're living. So looking at our lives as this is the positive, this is the imprint that we're actually doing, and taking full responsibility for that creation, that energy, everything that we're putting into it. And that's what Dr. Ply mentioned in the last hangout, that we are ultimately responsible for everything that we create. And as the individual, it is only then when we change ourselves that we can change the world. And global prosperity is not going to happen unless each one of us do these techniques, go through the contemplation, unravel the feelings that are embedded from this lifetime, probably other lifetimes, and have that be opening us up to the possibility of a millionaire mind and the creation of love and peace and prosperity in each one of us. And you owe it to others. I mean, the thing that I realized last night, how can I stand in front of all the children that we're serving at Hope Centers, and I'm teaching them, you can have a dream, you can create your dreams, you can have abundance for your family. If I didn't live it myself, no one would believe me and it wouldn't work. So it's incredible how many people are waiting for you, really. Right. That's something to consider. I think what it is too, we have to correct our views on money, and there's so much emotion around money. There's so much negative emotion around money. The lack of it, you having it, the guilt of having it, or not having enough, or not being able to help people. So many people have dreams to go out and serve the world, but you can't do that. So there's all this lack around money, and that core emotion needs to be transformed into a very positive emotion. So it's something I think we learned at a really young age, is to whatever your breeding was, whatever situation you grew up in, whatever your family situation was, there's all this anxiety around money, and that gets instilled in the genes. And that's what you think and believe every day. So that's what Dr. Pillai is changing, and exactly. That's what we're going to do on the 29th. Exactly, and unlike anyone else that I know of who teaches, Dr. Ply takes at the core level, our soul level. You know, we can go through the mental techniques, we can chant all we want, and then he goes to a deeper level. You know, the deeper level of actually changing the soul's consciousness, the spirit. You know, and we're going to learn some new techniques on the 29th through this live event that Dr. Ply is doing. I also just want to touch upon the positive aspects of money, of examples that we have. Like, look at Oprah Winfrey, look at the Bill and Melinda Gates Foundation. The ability for us to give back in two ways. One, by being an example and shining the light that we are for others. And then two, once you have it, being able to, to make the world a better place through the use of financial means. I mean, let's face it, that's the type of world we live in right now. And it's only through this type of prosperity that we can make certain changes. You have to feed people. You have to give. It gives you action. Money gives action. Yeah. Creating infrastructure, all of those things, and then look like Oprah Winfrey being able to touch millions of people through her positivity, because she has that power and she has that ability to really influence the masses. And what a gift! What a gift that she has been to the world. And as an icon. Right. Yeah. So, so we hope that this has brought you some inspiration today. Do you have anything else you want to add before I go into the next steps of how people can start?
Doing this? Very good. All right, great. So, so as I mentioned earlier on, this is a very unique window of time, the next 4 weeks. There is a special set of 4 Saturdays, which starts today. So it's very auspicious. We didn't know this when we planned these hangouts. So this Saturday and then the next 3 Saturdays are a very special configuration of energy, which allows for wealth consciousness to flow through easier. And what you want to do is take advantage of these windows of time. We don't always have them. And Dr. Ply teaches that timing is everything. And so we have today's teaching. We have next Saturday, it's a live event where Dr. Ply will be revealing new techniques on the science of the mind, the millionaire mind, how to acquire it. He'll have guests speaking on their experience. It's going to be a lot of fun. It's going to be a few hours long. What you have to do to get to it, it's absolutely free. Go to millionaireyoga.com and just sign up and you'll get all the information that you need from there. So you definitely want to check that out. Those are going to be his teachings going into the golden age. We've got 3 months from yesterday until the winter solstice, the famous winter solstice of December 21st, 2012. And what are you going to do with that time? How are you going to spend those next 3 months? We hope that you will be dedicated, at least a portion of it, to recreating yourself on many levels. And the first step right now is the uncovering your prosperity consciousness. It's in there. It's just a matter of how deep we've buried it. So Ply Center has the next 3 months mapped out where we're going to be focusing on money, love, and God, and incorporating all these energies holistically into your being as you move into 2013 in the most empowered way. So, like I said, we have the 4 empowered prosperity Saturdays. We have the Millionaire Yoga, which is next Saturday. Be sure to just sign up for free and get the information to do that. And then Ply Center also wants to kick off today a Shreem Brzee challenge. Many of you probably know that Shreem Brzee is what Dr. Pillai calls the ultimate wealth mantra. And it combines very powerful sounds and vibrations. And all you need to do is repeat this as many times every day. And we've all done it. Beth has done some marathon sessions, so has Elaine in Singapore. So it's amazing, and you'll have a lot of fun with it. I'm going to see if some people can organize some weekly just open online chanting sessions so we have some support on doing that. And that is going to be from today, September 22nd, until October 13th. That's a 21 days, so start now. Count your chants. You can use a little counter or however you want to do it. And then in Ply Center, we are going to have a place where you can enter how many repetitions you've done each day so we can collectively see how big of an impact we're making. And the goal is to chant 10 million times collectively over the next 3 weeks so that that can make a difference. That just the vibration of 10 million Shreem Brzee chants will have an impact. So it's not only on you, but the people around you and the world. So if you go to PlyCenter.com, there should be, and if there's not, there will be a little banner up there where you can click and find out more about that and how you enter your repetitions for the day. And you can do it daily or weekly. I think that is all that I had in terms of next steps and how we want to move forward, and you know, making our commitment to each other and the world on how this global prosperity is going to change. Being the change as the 99% and going out there and making a difference and being empowered. And we'll see you on the 29th. Yes, thank you so much for joining. We'll see you next week. Blaming it on others has become such a common occurrence in life. You have not probably come across anyone who doesn't blame on someone or some event or something that happened. But it is important to look into the concept of blaming itself. If you blame,
of any, if anyone blames, it means that person is powerless. He doesn't want to accept responsibility. And he is coming from a place of no power. He is giving away his power. He says that he cannot do anything. That's why he keeps blaming it on others. So the moment you find yourself blaming it on others, or blaming the event, blaming the destiny, or blaming your race, blaming your lack of education, or other people blaming other people, whenever you find that somebody is engaged in this game of blaming it on others, you should know that you don't want to be in that frame of mind or be associated with those people who blame others. You don't want to be powerless. So instead of blaming, you get into a state of power and then say, well, I can take control of the situation. I don't have to blame it on anyone, because blaming is not going to do anything at all. On the other hand, I will focus on a solution of the problem. This is a great teaching. You have to, look at yourself and also look at others. And if there is blaming involved, and that is the time that you have to really become alert and then say to yourself, I'm going to get out of here, because I never ever want to be powerless. Because the truth is, regardless of whatever a person thinks about himself or herself, the truth is, you are God. And do you think that God is going to blame it on others? No. He knows that He is in charge. So be in charge. And being in charge is not blaming it on others. God bless. How to be in the now? The how should be preceded by why. Why to be in the now? Being in the now, I mean the eternal now, which is a presence, which is the observer, is the most desirable condition, because it is unlimited living. There is no limitation in it. All limitations come when we are not in the now, when we are in the mind. Because being in the now is out of the mind, is out of the domain of the present. It is being in the presence of omniscience. So why one wants to be in the now? Because one wants to be omniscient, omnipotent, and omnipresent. And how can you develop it? Now the how comes. We develop it through developing a passion for it. A passion for what? A passion for life. A passion for unlimited life. And that's more important. And simply the passion is not going to work, because everybody has passion. But then there should be two more elements. One is dedication. You have to be dedicated to whatever you want to accomplish. Then
the action plan. What am I going to do to be in the now? And if I just run my life without any goal, then life happens, but that will be a karmic life without any glory to it. Think about all these things. You will know then the value of now. God bless.
Go live. Namaste all. We are in 7th day of Navaratri celebrations, Dasa Mahavidya Homa. Today the special Homa is for Dhumavati Ambal. Now today's sequence of events are, first we are going to have Ganesh Puja. After that we are continuously having Sankalpa. Then we have a special puja today is Deepa Puja, that is called Velaka Puja. After that Lalita Sahasranamam Archana for Kunkuma Archana for Mahameru. After that we are going to have Kalasha Puja. Then after Kalasha Puja we are going to have Dhumavati Ambal Puja. Then after Kalasha Puja we are going to have Dhumavati Ambal Purvanga Puja. After that Ambal Japam, followed by Homam, then Purnahuti. So these are the events we are going to have today, all the activities. Let us start the prayer, and the priest is lighting up the lamps for Ganesha Puja, preparing for Ganesha Puja. And you can pan through the ladies actually, camera. Please have the blessings of Goddess Dhumavati. सुप्रतिष्ठितमस्तु देवीं वाचमजनयन्त देवाः तां विश्वरूपा प्रथमो वदन्ति सा नो मन्द्रे समो जन्दुहाना धेनुर्वागस्मादुपसुष्टुदैरो सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु ॐ अच्युताय नमः ओम शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम ओम ममोपवत् समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेते अंघ्रियुगं स्मरामि करिष्यमाणस्य कर्मणः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थम् आदौ विघ्नेश्वर पूजां करिष्ये ओम गणानां त्वा गणपतिगुं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोदभिस्तेतसादनं भूर्भुवस्वरो अस्मिन् हरिद्राबिम्बे सुमुखं महागणपतिं ध्यायामि महागणपतिम् आवाहयामि गणपतये नमः रत्नसिंहासनं समर्पयामि आदयोः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रोत्तरीयं समर्पयामि गन्धकुङ्कुमाक्षतान् समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि मङ्गलपुष्पैः पूजयामि ॐ सुमुखाय नमः ॐ एकदन्ताय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ गजकर्णकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम विनायकाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम बालचन्द्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्रतुण्डाय नमः ओम सूत्रकर्णाय नमः ओम हेरम्बाय नमः ओम स्कन्दगोत्राय नमः ओम महागणपतये नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि महागणपतये नमः धूपदीपार्थं अक्षतान् समर्पयामि भूर्भुवस्तु महागणपतये नमः कदलीफलताम्बूलं निवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि पूगीफलसमायुक्तं नामवल्लीगणेरितं
कर्पूरचूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं मृदगस्यता महागणपतये नमः दिव्यताम्बूलं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ओम ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर परमेश्वरी प्रीत्यर्थं शुभे दिने शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादीनां षष्टिसंवत्सराणां मध्ये दुर्मुखनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षऋतौ कन्यामासे शुक्लपक्षे अद्य सप्तम्यां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु मंगल भृगुवासर युक्तायां मूलनक्षत्र युक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण सकल विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यार्थम् आर्थ सिद्ध्यर्थं विशिष्य शारदा नवरात्रि महोत्सवे अद्य सप्तमदिने श्री ललिता महात्रिपुरसुन्दरी कुङ्कुमा सहस्रनामावली अर्चनानि च कुङ्कुमार्चनानि च पूर्वक श्री धूमावती अंबिका जपहोम कर्मांगे सुहासिनीनां हस्तेन श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती स्वरूपिणी ललिता महात्रिपुरसुन्दरी स्वरूपिणी दीपपूजाराधन आख्य कर्म करिष्ये दीपपूजाराधन आख्य कर्म करिष्ये अपहुपस्पृश्य ओम गणानाहं त्वा गणपतिं हवामहे गङ्गवेणाभूस्तवस्तवाम् जयक्षराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानस्वर्णनोदेश्येदस्माद् हरिद्राबिम्बात् सम्पूजितं गणपतिं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि क्षेमाय कमलाय ओम दीपदेवी महादेवी शुभं भवतु मे सदा यावत् पूजा समाप्ता स्यात् तावत् प्रज्वल सुस्थिता Namaste. Dhumavati is the one who made out of smoke, represented in the form of old widow, a symbolic representation of pure potential energy that is Shakti without Shiva. She dispels poverty, debt, quarrels, misunderstanding, and provide protection against legal actions. Dispels all affections due to planet Ketu. Now you are watching Deepa Puja. People are lighting up their respective lamp. Now the priest is going to chant mantras, and the women are going to just pray and do the puja with the help of kumkuma and flowers. Now you can keep watching this Deepa Puja.
பிரார்த்தனை பண்ணுற மாதிரி கையில் வச்சுக்கணும். புஷ்பம். ஓம் தீபதேவி மகாதேவி சுபம் பவது மே சதா யாவத் பூஜா சமாப்த ஸ்யாத் தாவத் பிரஜ்வல சுஸ்திதா அஸ்மின் தீபே தீபதுர்கா பரமேஸ்வரீம் த்யாயாமி தீபமகாலக்ஷ்மீம் த்யாயாமி தீபஸ்வரூபிணீம் ஸ்ரீ சரஸ்வதீம் த்யாயாமி. அவள் தீபத்தில் கையில் புஷ்பத்தை வச்சுன்னு போட்டுருணும். दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती स्वरूपिण्याः ललिता महात्रिपुरसुन्दरी स्वरूपिण्याः दीपमहालक्ष्मीं ध्यायामि दीपमहालक्ष्मीम् आवाहयामि. दीपमहालक्ष्म्यै नमः. ரெண்டு புஷ்பத்தை எடுத்து அம்பாள்கிட்ட சேர்த்துடணும். கையில் புஷ்பத்தை வச்சுன்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும். दीपमहालक्ष्म्यै नमः. आसनार्थं रत्नसिंहासनं समर्पयामि. पादयोः पाद्यं समर्पयामि. अर्घ्यं समर्पयामि. आचमनीयं समर्पयामि. दीपमहालक्ष्म्यै नमः. ललिता महात्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिकायै नमः. आचमनीयं समर्पयामि. शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि. स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि. वस्त्रोत्तरीयं समर्पयामि. उपवीताभरणानि समर्पयामि. गन्धकुङ्कुमाक्षतान् समर्पयामि. पुष्पमालां समर्पयामि. पुष्पैः पूजयामि. முதல்ல ரெண்டு புஷ்பத்தை போட்டு அர்ச்சனை பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு கையில் குங்குமத்தை எடுத்துக்க வேண்டியது. அந்த காலியாக இருக்கக்கூடிய தொன்னையில் இப்படி இப்படி எடுத்து அர்ச்சனை பண்ண வேண்டியது. இப்படி சஹஸ்ரநாமம் முடிகிற பரியந்தம் இப்படி பண்ணிகிட்டே வரணும். ஓம் சிந்தூராருண விக்கிரகாம் திரிநயனாம் மாணிக்யமௌலிஸ்புரத்தாராநாயகசேகராம் ஸ்மிதமுகீமாபீனவக்ஷோருஹாம் பாணிभ्यामलिपूर्णरक्तचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणहं ध्यायेत्परामम्बिकाम्. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः. ओम श्री महाराज्ञै नमः. ओम श्रीमत्सिंहासनेश्वर्यै नमः. ओम चिदग्निकुण्डसम्भूतायै नमः. ओम देवकार्यसमुद्यतायै नमः. ओम उद्यद्भानुसहस्राभायै नमः. ओम चतुर्बाहुसमन्वितायै नमः. ओम रागस्वरूपपाशाढ्यायै नमः. ओम क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वलायै नमः. ओम मनोरूपेक्षुकोदण्डायै नमः. ओम पञ्चतन्मात्रसाजिकायै नमः. ओम निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डलायै नमः. ओम चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कजायै नमः. ओम गुरुविन्दमणिश्रेणीगणत्कोटीरमण्डितायै नमः. ओम अष्टमी चन्द्रविभ्राजतलिकस्थलशोभितायै नमः. ओम मुखचन्द्रकलङ्गावमृगणाभिविशेषकायै नमः. ओम वदनस्परमाङ्गल्यग्रहतोरणचिल्लिकायै नमः. ओम वक्त्रलक्ष्मीपरीवाहचलन्मीनाभलोचनायै नमः. ओम नवचम्पकपुष्पापनासादण्डविराजितायै नमः. ओम ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरायै नमः. ओम कदम्बमञ्जरीकृप्तकर्णपूरमनोहरायै नमः. ओम ताडङ्गजुगुलीभूततपनोडुपमण्डलायै नमः. ओम बद्धरागशिलासरिषपरिभाविकपोलभवे नमः. ओम नवविद्रमबिम्बश्रेण्यत्काररसनच्छदायै नमः. ओम शुद्धविद्याङ्कुराकारद्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वलायै नमः. ओम कर्पूरवीटिकामोदसमाग्रहदिगन्धरायै नमः. ओम निजसल्लापमाधुर्यविनिर्भत्सितकच्छप्यै नमः. ओम मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसायै नमः. ओम अनागलतसादृश्यजुबकश्रीविराजितायै नमः. ओम कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितगन्धरायै नमः. ओम कनकाङ्कतकेजूरकमनीयभुजान्वितायै नमः. ओम रत्नग्रीवे चिन्ताकलोलमुक्ताफलान्वितायै नमः. ओम कामेश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिपदस्तन्यै नमः. ओम नाभ्यालवालरोमालताफलकुचद्वय्यै नमः. ओम लक्ष्यरोमलताधारधासमुन्नेजमध्यमायै नमः. ओम स्तनभारतलन्मध्यपट्टबन्धवलित्रयायै नमः. ओम अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभासुत्कटीतट्यै नमः. ओम रत्नकिङ्किनिकारम्यर्शनाधामभूषितायै नमः. ओम कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरद्वयान्वितायै नमः. ओम माणिक्यमुकुटाकारजानुद्वयविराजितायै नमः. ओम इन्द्रकोपपरिक्षिप्तस्परजोनापजङ्घिकायै नमः. ओम गूढगुल्फायै नमः. ओम घोर्मपृष्ठजयिष्टप्रपदान्वितायै नमः. ओम नगदीदितसञ्जन नमज्जनदमोगुणायै नमः. ओम पदाद्वय पदद्वय प्रभाजालपरागतसरोरुहायै नमः. ओम शिञ्जाणमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजायै नमः. ओम मरालीमन्तगमनायै नमः. ओम महालावण्यशेवसजय नमः. ओम सर्वारुणायै नमः. ओम अनवद्याङ्घ्यै नमः. ओम सर्वाभरणभूषितायै नमः. ओम शिवकामेश्वराङ्गस्थायै नमः. ओम शिवायै नमः. ओम स्वाधीनवल्लभायै नमः. ओम सुमेरुमध्यशृङ्गस्थायै नमः. ओम श्रीमन्नगरनाजिकायै नमः. ओम चिन्तामणिगृहान्धस्थायै नमः.
ओम पंचब्रह्मासनस्थितायै नमः ओम महापद्माण्डवी संस्थायै नमः ओम कदम्बवनवासिन्यै नमः ओम सुधासागर मध्यस्थायै नमः ओम कामाक्षै नमः ओम कामदाजिन्यै नमः ओम देवर्षिगणसङ्घातस्तोजमानात्मवैभवायै नमः ओम भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्वितायै नमः ओम सम्पत्किरी समारूढ सिन्धूरव्रतसेवितायै नमः ओम अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृतायै नमः ओम चक्रराजरथारूढ सर्वायुधपरिष्कृतायै नमः ओम गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेवितायै नमः ओम गिरिचक्ररथारूढ दण्डनाथा पुरस्कृतायै नमः ओम ज्वालामालिनिका क्षिप्तवह्निप्राकार मध्यगायै नमः ओम मण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षितायै नमः ओम नित्यापराक्रमाणोपनिरीक्षणसमुत्सुकायै नमः ओम बंडपुत्र मधोजुक्तमाला विक्रमनंदितायै नमः ओम मंद्रिण्यंबा विरचितवसंगजुतोषितायै नमः ओम शुक्र प्राणहरण वाराही वीर्यनंदितायै नमः ओम कामेश्वर मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वरायै नमः ओम महागणेश निर्भिन्न विघ्नयंत्र प्रहर्षितायै नमः ओम भंडासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त वर्षिण्यै नमः ओम करांगुलि नखोत्पन्न नारायण दिशाकृत्यै नमः ओम महापाशपदास्त्राग्नि निर्दग्धासुर सैनिकायै नमः ओम कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध बंडासुर शून्यकायै नमः ओम ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्राज देव संस्तुत वैभवायै नमः ओम हरणेत्राग्निसंदब्ध गाव संजीवनौषध्यै नमः ओम श्रीमद्भागवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कजायै नमः ओम कण्ठाधःकटिपर्यन्त मध्यकूटस्वरूपिण्यै नमः ओम शक्तिकूटैकदापन्न कट्यसौभागधारिण्यै नमः ओम मूलमन्त्रात्मिकायै नमः ओम मूलकूटत्रयकलयपराजयै नमः ओम कुलामृतैकरसिकायै नमः ओम कुलसङ्केतपालिन्यै नमः ओम कुलाङ्गनायै नमः ओम कुलान्दस्तायै नमः ओम कौलिन्यै नमः ओम कुलयोगिन्यै नमः ओम अकुलायै नमः ओम समयान्तस्थायै नमः ओम समयाचार तत्परायै नमः ओम मूलाधारे कणलयायै नमः ओम ब्रह्मग्रन्थि विभेदिन्यै नमः ओम मणिपूरान्तर्जितायै नमः ओम विष्णुग्रन्थि विभेदिन्यै नमः ओम आज्ञाचक्रान्तराळस्तायै नमः ओम रुद्रग्रन्थि विभेदिन्यै नमः ओम सहस्राराम्बुजारूढायै नमः ओम धरिलता समरुच्यै नमः ओम षट्चक्रोपरिसंस्थितायै नमः ओम महाशक्त्यै नमः ओम कुण्डलिन्यै नमः ओम विसदन्तुतनीयस्यै नमः ओम भवान्यै नमः ओम भावनागम्यायै नमः ओम भवारण्यकुमकुटारिकायै नमः ओम भद्रप्रियायै नमः ओम भद्रमूर्त्यै नमः ओम भक्तसौभाग्यदायिन्यै नमः ओम भक्तिप्रियायै नमः ओम भक्तिगम्यायै नमः ओम भक्तिवश्यायै नमः ओम भयापहायै नमः ओम शाम्भव्यै नमः ओम शारदाराध्यायै नमः ओम शर्वाण्यै नमः ओम शर्मदाजिन्यै नमः ओम शाङ्कर्यै नमः ओम श्रीकर्यै नमः ओम साध्यै नमः ओम शरच्चन्द्रनिभाननायै नमः ओम शातोदर्यै नमः ओम शान्तिमत्यै नमः ओम निराधारायै नमः ओम निरञ्जनायै नमः ओम निर्लेपायै नमः ओम निर्मलायै नमः ओम नित्यायै नमः ओम निराकारायै नमः ओम निराकुलायै नमः ओम निर्गुणायै नमः ओम निष्कलायै नमः ओम शान्तायै नमः ओम निष्कामायै नमः ओम निरुपप्लवायै नमः ओम नित्यमुक्तायै नमः ओम निर्विकारायै नमः ओम निष्प्रपञ्चायै नमः ओम निराश्रयायै नमः ओम नित्यशुद्धायै नमः ओम नित्यबुद्धायै नमः ओम निरवध्यायै नमः ओम निरन्तरायै नमः ओम निष्कारणायै नमः ओम निष्कलङ्कायै नमः ओम निरुपाधये नमः ओम निरीश्वरायै नमः ओम निरागायै नमः ओम रागपथन्यै नमः ओम निर्मदायै नमः ओम मदनाशिन्यै नमः ओम निश्चिन्तायै नमः ओम निरहंकारायै नमः ओम निर्मोहायै नमः ओम मोहनाशिन्यै नमः ओम निर्ममायै नमः ओम ममताहन्त्यै नमः ओम निष्पापायै नमः ओम पापनाशिन्यै नमः ओम निष्क्रोधायै नमः ओम क्रोधशमन्यै नमः ओम निर्लोभायै नमः ओम लोभनाशिन्यै नमः ओम निस्संशयायै नमः ओम संशयज्ञै नमः ओम निर्भवायै नमः ओम भवनाशिन्यै नमः ओम निर्विकल्पायै नमः ओम निराबाधायै नमः ओम निर्भेदायै नमः ओम भेदनाशिन्यै नमः ओम निर्नाशायै नमः ओम मृत्युमथन्यै नमः ओम निष्क्रियायै नमः ओम निष्परिग्रहायै नमः ओम निस्तुलायै नमः ओम नीलचकुरायै नमः ओम निरपाजायै नमः ओम निरत्ययायै नमः ओम दुर्लभायै नमः ओम दुर्गमायै नमः ओम दुर्गायै नमः ओम दुःखहन्त्यै नमः ओम सुखप्रदायै नमः ओम दुष्टदूरायै नमः ओम दुराचारशमन्यै नमः ओम दोषवर्जितायै नमः ओम सर्वज्ञायै नमः ओम शान्द्रकरुणायै नमः ओम समानाधिकवर्जितायै नमः ओम सर्वशक्तिमय्यै नमः ओम सर्वमङ्गलायै नमः ओम सद्गतिप्रदायै नमः ओम सर्वेश्वर्यै नमः ओम सर्वमय्यै नमः ओम सर्वमन्त्रस्वरूपिण्यै नमः ओम सर्वयन्त्रात्मिकायै नमः ओम सर्वतन्त्ररूपायै नमः ओम मनोन्मन्यै नमः ओम माहेश्वर्यै नमः ओम महादेव्यै नमः ओम महालक्ष्म्यै नमः ओम मृडप्रियायै नमः ओम महारूपायै नमः ओम महापूज्यायै नमः ओम महापातकनाशिन्यै नमः ओम महामाजायै नमः ओम महासत्त्वायै नमः ओम महाशक्त्यै नमः ओम महारत्यै नमः ओम महाभोगायै नमः ओम महेश्वर्यायै नमः ओम महावीर्यायै नमः ओम महाबलायै नमः ओम महाबुद्ध्यै नमः ओम महासिद्ध्यै नमः ओम महायोगेश्वरेश्वर्यै नमः ओम महातन्त्रायै नमः ओम महामन्त्रायै नमः ओम महायन्त्रायै नमः ओम महासनायै नमः ओम महाजागक्रमाराध्यायै नमः ओम महाभैरवपूजितायै नमः ओम महेश्वर महाकल्प महाताण्डवसाक्षिण्यै नमः ओम महाकामेश महिष्यै नमः ओम महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः ओम
चतुष्षष्टिपदाराध्याजी नमः ओं चतुष्षष्टिकलामयी नमः ओं महाचतुष्षष्टिकोटियोगिनीगण सेविताजी नमः ओं मनोविद्याजी नमः ओं चंद्रविद्याजी नमः ओं चंद्रमंडलमध्यगाजी नमः ओं चारुरूपाजी नमः ओं चारुहासाजी नमः ओं चारुचंद्रकलाधराजी नमः ओं जराजर जगन्नाथाजी नमः ओं चक्रराजनिकेतनाजी नमः ओं पार्वती नमः ओं पद्मनयनाजी नमः ओं पद्मरागसमप्रभाजी नमः ओं पंचप्रेतासनासीनाजी नमः ओं पंचब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः ओं चिन्मयी नमः ओं परमानन्दाजी नमः ओं विज्ञानघनरूपिण्यै नमः ओं ध्यानध्यातृध्येयरूपाजी नमः ओं धर्माधर्मविवर्जिताजी नमः ओं विश्वरूपाजी नमः ओं जागरिण्यै नमः ओं स्वपन्यै नमः ओं तेजसात्मिकाजी नमः ओं सुप्ताजी नमः ओं प्राज्ञात्मिकाजी नमः ओं दुर्जाजी नमः ओं सर्वावस्थाविवर्जिताजी नमः ओं सृष्टिकर्त्री नमः ओं ब्रह्मरूपाजी नमः ओं गोप्त्यै नमः ओं गोविन्दरूपिण्यै नमः ओं सम्मारण्यै नमः ओं रुद्ररूपाजी नमः ओं धिरोधानकर्यै नमः ओं ईश्वर्यै नमः ओं सदा शिवाजी नमः ओं अनुग्रहदाजी नमः ओं पञ्चकृत्यपरायणाजी नमः ओं भानुमण्डलमध्यस्थाजी नमः ओं भैरव्यै नमः ओं भगमालिन्यै नमः ओं पद्मासनाजी नमः ओं भगवत्यै नमः ओं पद्मनाभसहोदर्यै नमः ओं उन्मेषनिमिषोत्पन्नविपन्नभुवनावल्यै नमः ओं सहस्रशीर्षवदनाजी नमः ओं सहस्राक्षै नमः ओं सहस्रपते नमः ओं आब्रह्मकेटजनन्यै नमः ओं वर्णाश्रमविधायिन्यै नमः ओं जाज्ञारोपणिकमाजी नमः ओं पुण्यफलप्रदाजी नमः ओं श्रुतिसेमन्तसिन्धूरीकृतपादाब्जधूलिकाजी नमः ओं सकलागमसुन्दोह शुक्तिसम्पूर्णभोक्तिकाजी नमः ओं पुरुषार्थप्रदाजी नमः ओं पूर्णाजी नमः ओं भोगिन्यै नमः ओं भुवनेश्वर्यै नमः ओं अंबिकाजी नमः ओं अनाथनिधनाजी नमः ओं हरिब्रह्मेन्द्रसेविताजी नमः ओं नाराजन्यै नमः ओं नाथरूपाजी नमः ओं नामरूपविवर्जिताजी नमः ओं ह्रीङ्कारजी नमः ओं ह्रीमत्यै नमः ओं हृद्याजी नमः ओं हेयोपादेजवर्जिताजी नमः ओं राजराजार्थिताजी नमः ओं राज्ञै नमः ओं रम्याजी नमः ओं राजीवलोचनाजी नमः ओं रञ्जन्यै नमः ओं रमण्यै नमः ओं रस्याजी नमः ओं नळत्किङ्किनिमेखलाजी नमः ओं रमाजी नमः ओं राकेन्द्रवदनाजी नमः ओं रतिरूपाजी नमः ओं रतिप्रियाजी नमः ओं रक्षाकरजी नमः ओं राक्षसज्ञै नमः ओं लंपटाजी नमः ओं काम्याजी नमः ओं कामकलारूपाजी नमः ओं कदम्बकुसुमप्रियाजी नमः ओं कल्याण्यै नमः ओं जगदीगन्धाजी नमः ओं करुणारससागराजी नमः ओं कलावत्यै नमः ओं कलालापाजी नमः ओं कान्ताजी नमः ओं कादम्बरी प्रियाजी नमः ओं वरदाजी नमः ओं वामनगनाजी नमः ओं वरुणे मदविह्वलाजी नमः ओं विश्वाधिकाजी नमः ओं वेदवेद्याजी नमः ओं विन्ध्याचलनिवासिन्यै नमः ओं विधात्र्यै नमः ओं वेदजनन्यै नमः ओं विष्णुमाजाजी नमः ओं विलासिन्यै नमः ओं क्षेत्रस्वरूपाजी नमः ओं क्षेत्रेश्यै नमः ओं क्षेत्रक्षेत्रज्ञपालिन्यै नमः ओं क्षयवृद्धिविनिर्मुक्ताजी नमः ओं क्षेत्रपालसमर्चिताजी नमः ओं विजयाजी नमः ओं विमलाजी नमः ओं वन्द्याजी नमः ओं वन्दारुजनवत्सलाजी नमः ओं वाग्वादिन्यै नमः ओं वामकेश्यै नमः ओं मन्यमण्डलवासिन्यै नमः ओं भक्तिमत्कल्पलतिकाजी नमः ओं पशुपाशविमोचिन्यै नमः ओं सम्भृताशेषभाषण्डाजी नमः ओं सदाचारप्रवर्तिकाजी नमः ओं तापत्रयाग्निसन्दब्धसमाह्लादचन्द्रिकाजी नमः ओं तरुण्यै नमः ओं तापसाराध्याजी नमः ओं तनुमध्याजी नमः ओं तमोपहाजी नमः ओं चित्यै नमः ओं तत्त्वतलक्षार्थाजी नमः ओं चिदेकरसरूपिण्यै नमः ओं स्वात्मानन्दलवीभूतब्रह्माद्यानन्दसन्तत्यै नमः ओं पराजी नमः ओं प्रत्यक्षिते रूपाजी नमः ओं पश्यन्ती नमः ओं देवताजी नमः ओं मध्यमाजी नमः ओं वैखरी रूपाजी नमः ओं भक्तमानसहंसिकाजी नमः ओं कामेश्वर प्राणनाढ्ये नमः ओं कृतज्ञाजी नमः ओं कामपूजिताजी नमः ओं शृङ्गाररसम्पूर्णाजी नमः ओं जजाजी नमः ओं जालन्धरस्थिताजी नमः ओं ओढ्याळपीठनिलयाजी नमः ओं बिन्दुमण्डलवासिन्यै नमः ओं रहोयागक्रमाराध्याजी नमः ओं रहस्तर्पणचर्पिताजी नमः ओं सद्यःप्रसादिन्यै नमः ओं विश्वसाक्षिण्यै नमः ओं साक्ष्यवर्जिताजी नमः ओं षडङ्गदेवतायुक्ताजी नमः ओं षड्गुण्य परिपूरिताजी नमः ओं नित्यक्लिन्नाजी नमः ओं निरुपमाजी नमः ओं निर्वाणसुखदायिन्यै नमः ओं नित्या षोडशिकारूपाजी नमः ओं श्रीकण्ठार्थशरीरिञ्जै नमः ओं प्रभावत्यै नमः ओं प्रभारूपाजी नमः ओं प्रसिद्धाजी नमः ओं परमेश्वर्यै नमः ओं मूलप्रकृत्यै नमः ओं अव्यक्ताजी नमः ओं व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिण्यै नमः ओं व्यापिन्यै नमः ओं विविधाकाराजी नमः ओं विद्याविद्यास्वरूपिण्यै नमः ओं महाकामेशनयनकौमुदाह्लादकौमुद्यै नमः ओं भक्तहार्दतमोपेदभानुमद्भानुसन्तत्यै नमः ओं शिवदूत्यै नमः ओं शिवाराध्यायै नमः ओं शिवमूर्त्यै नमः ओं शिवङ्कर्यै नमः ओं शिवप्रियायै नमः ओं शिवपरायै नमः ओं श्रेष्ठेष्ठायै नमः ओं शिष्टपूजितायै नमः ओं अप्रमेयायै नमः ओं स्वप्रकाशायै नमः ओं मनोवाचामगोचरायै नमः ओं चित्शक्त्यै नमः ओं चेतनारूपायै नमः ओं जलशक्त्यै नमः ओं जलात्मिकायै नमः ओं गायत्र्यै नमः ओं व्याहृत्यै नमः ओं सन्ध्यायै नमः ओं दजवृन्दनिषेविदायै नमः ओं तत्त्वासनायै नमः ओं तस्मै नमः ओं तुभ्यं नमः ओं मय्यै नमः ओं पञ्चकोशान्तरस्थितायै नमः ओं निस्सीमहिम्ने नमः ओं नित्ययौवनायै नमः ओं मदशालिन्यै नमः ओं मदघूर्णितरक्ताक्ष्यै नमः ओं मदपाटलकण्ठभुवे नमः ओं चन्दनद्रवदिग्धाङ्ग्यै नमः ओं जाम्बेयकुसुमप्रियायै नमः ओं कुशलायै नमः ओं कोमलाकारायै नमः ओं कुरुकुल्लाजी नमः ओं कुलेश्वर्यै नमः ओं कुलकुण्डालयाजी नमः ओं गौरमार्गतत्त्वसेवितायै नमः ओं कुमारगणनाथाम्बायै नमः ओं तुष्ट्यै नमः ओं पुष्ट्यै नमः ओं मत्यै नमः ओं धत्यै नमः ओं शान्त्यै नमः ओं षष्टिमत्यै नमः ओं कान्त्यै नमः ओं नन्दिन्यै नमः ओं विघ्ननाशिन्यै नमः ओं तेजोवत्यै नमः ओं त्रिनयनायै नमः ओं लोलाक्षै कामरूपिण्यै नमः ओं मालिन्यै नमः ओं हंसिन्यै नमः ओं मात्रे नमः ओं मलयाचलवासिन्यै नमः ओं सुमुख्यै नमः ओं नलिन्यै नमः ओं शुभ्रवे नमः ओं
शोभनाजी नमः ओं सुरनादिकाजी नमः ओं कालकंठी नमः ओं कांतिमती नमः ओं शोभिन्ये नमः ओं सूक्ष्मरूपिण्ये नमः ओं वज्रेश्वर्ये नमः ओं वामदेव्ये नमः ओं वजोवस्था विवर्जिताजी नमः ओं सिद्धेश्वर्ये नमः ओं सिद्धविद्याजी नमः ओं सिद्धमात्रे नमः ओं यशस्विन्ये नमः ओं विशुद्धिचक्रनिलयाजी नमः ओं रक्तवर्णाजी नमः ओं त्रिलोचनाजी नमः ओं खड्वांगाज प्रहरणाजी नमः ओं मदनैकसमन्विताजी नमः ओं पायसान्नप्रियाजी नमः ओं तक्षस्थाजी नमः ओं पशुलोकभयङ्करजी नमः ओं अमृतादि महाशक्तिसंवृताजी नमः ओं डाकिनीश्वर्जी नमः ओं श्यामाभाजी नमः ओं अनाहताब्जनिलयाजी नमः ओं मदनद्वयाजी नमः ओं दंष्ट्रोज्ज्वलाजी नमः ओं अक्षमालादिधराजी नमः ओं रुधिर संस्थिताजी नमः ओं कालरात्र्यादिशक्त्यौघवृताजी नमः ओं स्निग्धौदनप्रियाजी नमः ओं महावीरेन्द्रवरदाजी नमः ओं राकिन्यम्बास्वरूपिण्ये नमः ओं मणिपूराब्जनिलयाजी नमः ओं मदनत्रय संयुताजी नमः ओं वज्रादिकाजितोभेदाजी नमः ओं दामरजादिविरावृताजी नमः ओं रक्तवर्णाजी नमः ओं मांसनिष्ठाजी नमः ओं गुडान्नप्रीतमानसाजी नमः ओं समस्तभक्तसुखदाजी नमः ओं राकिन्यम्बास्वरूपिण्ये नमः ओं स्वाधिष्ठानां जगदाजी नमः ओं चतुर्भक्त्रमनोहराजी नमः ओं शूलाद्यायुधसम्पन्नाजी नमः ओं पीतवर्णाजी नमः ओं अतिगर्विताजी नमः ओं मेधोनिष्ठाजी नमः ओं मधुप्रीताजी नमः ओं मन्दिन्यादि समन्विताजी नमः ओं दध्यन्नासक्तहृदयाजी नमः ओं काकिनीरूपधारिण्ये नमः ओं मूलाधारां बुधारूढाजी नमः ओं पञ्चवक्त्राजी नमः ओं हस्तिसंस्थिताजी नमः ओं मुङ्कुशादिप्रहरणाजी नमः ओं वरदादिनिषेविताजी नमः ओं मुग्धौदनासक्तचित्ताजी नमः ओं साकिन्यम्बास्वरूपिण्ये नमः ओं आज्ञाचक्राजनिलयाजी नमः ओं शुक्लवर्णाजी नमः ओं षडाननाजी नमः ओं हंसवती मुख्यसमन्विताजी नमः ओं मज्जासंस्थाजी नमः ओं हरिद्रान्नैकरसिकाजी नमः ओं हाकिनीरूपधारिण्ये नमः ओं सहस्रदलपद्मस्थाजी नमः ओं सर्ववर्णोपशोभिताजी नमः ओं सर्वायुधधराजी नमः ओं शुक्लसंस्थिताजी नमः ओं सर्वतोमुख्ये नमः ओं सर्वोदनप्रीतचित्ताजी नमः ओं याकिन्यम्बास्वरूपिण्ये नमः ओं स्वाहाजी नमः ओं सदाजी नमः ओं अमत्यै नमः ओं मेधाजी नमः ओं श्रुत्यै नमः ओं स्मृत्यै नमः ओं अनुत्तमाजी नमः ओं पुण्यकीर्त्यै नमः ओं पुण्यलभ्याजी नमः ओं पुण्यश्रवणकीर्तनाजी नमः ओं पुलोमधार्चिताजी नमः ओं बन्धमोचिन्ये नमः ओं बर्बरालकाजी नमः ओं विमर्शरूपिण्ये नमः ओं विद्याजी नमः ओं वेदादि जगत्प्रसवे नमः ओं सर्वव्याधिनिवारिण्ये नमः ओं सर्वमृत्युप्रशमन्ये नमः ओं अग्रगण्याजी नमः ओं अचिन्त्यरूपाजी नमः ओं कलिकल्मषनाशिन्ये नमः ओं कात्याजिन्ये नमः ओं कालहंस्ये नमः ओं अक्षमा कमलाक्षनिषेविताजी नमः ओं दाम्बूलपूरितमुख्ये नमः ओं दाडिमीकुसुमप्रभाजी नमः ओं मृगाक्षी नमः ओं मोहिन्ये नमः ओं मोक्षाजी नमः ओं मृडान्ये नमः ओं मित्ररूपिण्ये नमः ओं नित्यतृप्ताजी नमः ओं भक्तनिधये नमः ओं नियन्त्यै नमः ओं निखिलेश्वर्यै नमः ओं मैत्र्यादिवासनालभ्याजी नमः ओं महाप्रलयसाक्षिण्ये नमः ओं पराशक्त्यै नमः ओं परानिष्ठाजी नमः ओं प्रज्ञानगणरूपिण्ये नमः ओं माध्वीपानालसाजी नमः ओं मत्ताजी नमः ओं मातृकावर्णरूपिण्ये नमः ओं महाकैलासनिलयाजी नमः ओं मृणालमृदुदोर्लताजी नमः ओं महनीयाजी नमः ओं दयामूर्त्यै नमः ओं महासाम्राज्यशालिन्ये नमः ओं आत्मविद्याजी नमः ओं महाविद्याजी नमः ओं श्रीविद्याजी नमः ओं कामसेविताजी नमः ओं श्री षोडशाक्षरी विद्याजी नमः ओं त्रिकूटाजी नमः ओं कामकोटिकाजी नमः ओं कटाक्षकिङ्करीभूतकमलाकोटिसेविताजी नमः ओं शिरस्थिताजी नमः ओं चन्द्रनिभाजी नमः ओं फालस्ताजी नमः ओं इन्द्रधनुःप्रभाजी नमः ओं विदयस्ताजी नमः ओं रविप्रख्याजी नमः ओं त्रिकोणान्तरदीपिकाजी नमः ओं दाक्षायिन्ये नमः ओं दैत्यहंसी नमः ओं दक्षयित्यविनाशिन्ये नमः ओं धरान्दोलितदीर्घाक्षी नमः ओं धरासोज्ज्वलन्मुखे नमः ओं गुरुमूर्ति नमः ओं गुणनिधये नमः ओं गोमात्रे नमः ओं गुहजन्मभुवे नमः ओं देवेशी नमः ओं दण्डनीतिस्थाये नमः ओं दहराकाशरूपिण्ये नमः ओं प्रतिपन्मुख्यरागाततिथिमण्डल पूजिताजी नमः ओं कलात्मिकाजी नमः ओं कलानाथाजी नमः ओं काव्यालाप विनोदिन्ये नमः ओं सतावरसभावाणी सङ्गीतक्षणसेविताजी नमः ओं आदिशक्ति नमः ओं महेयाजी नमः ओं मातने नमः ओं परमाजी नमः ओं प्रवनाकृतये नमः ओं अनेककोटि ब्रह्माण्डशरण्ये नमः ओं दिव्यविग्रहाजी नमः ओं क्लीङ्कार्जी नमः ओं कैवल्याजी नमः ओं कोशनाथाजी नमः ओं चतुरङ्गबलेश्वर्ये नमः ओं साम्राज्यदायिन्ये नमः ओं सत्यसन्धाजी नमः ओं सागरमेखलाजी नमः ओं दीक्षिताजी नमः ओं दैत्यशमन्ये नमः ओं सर्वलोक नमः ओं कामधुके नमः ओं कामरूपिण्ये नमः ओं कलानिधये नमः ओं काव्यकलाजी नमः ओं रसज्ञाजी नमः ओं रसशेवधये नमः ओं पुष्टाजी नमः ओं पुरातनाजी नमः ओं पूज्याजी नमः ओं पुष्कराजी नमः ओं पुष्करेक्षणाजी नमः ओं परस्मै ज्योतिषे नमः ओं परस्मै धाम्ने नमः ओं परमानवे नमः ओं परात्पराजी नमः ओं पाशहस्ताजी नमः ओं पाशहंसी नमः ओं परबन्धविभेदिन्ये नमः ओं मुहूर्ताजी नमः ओं अमूर्ताजी नमः ओं अनित्यधृताजी नमः ओं मुनिमानसहंसिकाजी नमः ओं सत्यव्रताजी नमः ओं सत्यरूपाजी नमः ओं सर्वान्तर्यामिन्ये नमः ओं सत्यै नमः ओं ब्रह्माण्ये नमः ओं ब्रह्मणे नमः ओं जरण्ये नमः ओं बहुरूपाजी नमः ओं उदार्शिताजी नमः ओं प्रसवित्यै नमः ओं प्रचण्डाजी नमः ओं आज्ञाजी नमः ओं प्रतिष्ठाजी नमः ओं प्रकटाकृतये नमः ओं प्राणेश्वर्ये नमः ओं प्राणधात्र्ये नमः ओं पञ्चाशत्पीठरूपिण्ये नमः ओं विशृङ्खलाजी नमः ओं विविक्तस्थाजी नमः ओं वीरमात्रे नमः ओं व्यत्प्रसवे नमः ओं कुन्दाजी नमः ओं मुक्तिनिलयाजी नमः ओं मूलविग्रहरूपिण्ये नमः ओं भावज्ञाजी नमः ओं भवरोगज्ञे नमः ओं भवचक्रवर्तिन्ये नमः ओं छन्दसाराजी नमः ओं शास्त्रसाराजी नमः ओं मन्त्रसाराजी नमः ओं त्रोत्रजी नमः ओं उदारकीर्तये नमः ओं
ऊर्धाम वैभवाय नमः ओम वर्णरूपिण्ये नमः ओम जन्म मृत्यु जरा तत्व जन विश्रांति साजिन्ये नमः ओम सर्वोपनिषदुद्गुष्टाय नमः ओम शान्तितीतलात्मिकाय नमः ओम गंभीराय नमः ओम गगनान्तस्थाय नमः ओम गर्विताय नमः ओम गानलोलुपाय नमः ओम कल्पनारहिताय नमः ओम काष्ठाय नमः ओम अकान्ताय नमः ओम गान्धार्थ विग्रहाय नमः ओम कार्यकारण निर्मुक्ताय नमः ओम कामकेली तरंगिताय नमः ओम कनकदाटंकाय नमः ओम लीला विग्रहधारिण्ये नमः ओम मधाय नमः ओम क्षय निर्मुक्ताय नमः ओम मुग्धाय नमः ओम क्षिप्रप्रसादिन्ये नमः ओम अंतर्मुख समाराध्याय नमः ओम बहिर्मुख दुर्लभाय नमः ओम त्रय्ये नमः ओम त्रिवर्ग निलयाय नमः ओम त्रिस्थाय नमः ओम त्रिपुरमालिन्ये नमः ओम निरामादाय नमः ओम निरामयाय नमः ओम निरालंबाय नमः ओम स्वात्मा रामाय नमः ओम सुधासृत्ये नमः ओम संसारभंग निर्मग्न समुद्धरण पंडिताय नमः ओम यज्ञप्रियाय नमः ओम यज्ञकर्त्रे नमः ओम यजमान स्वरूपिण्ये नमः ओम धर्माधाराय नमः ओम धनाध्यक्षाय नमः ओम धनधान्य विवर्धिन्ये नमः ओम विप्रप्रियाय नमः ओम विप्ररूपाय नमः ओम विश्वभ्रमणकारिण्ये नमः ओम विश्वग्रासाय नमः ओम विद्रुमाभाय नमः ओम वैष्णव्ये नमः ओम विष्णुरूपिण्ये नमः ओम अजोन्ये नमः ओम योनिलयाय नमः ओम कूटस्थाय नमः ओम कूटरूपिण्ये नमः ओम वीरगोष्ठी प्रियाय नमः ओम वीराय नमः ओम निष्कर्म्याय नमः ओम नादरूपिण्ये नमः ओम विज्ञानकलनाय नमः ओम कल्याय नमः ओम विदग्धाय नमः ओम बिन्दवासनाय नमः ओम तत्त्वाधिकाय नमः तत्त्वमय्ये नमः ओम तत्त्वमर्थस्वरूपिण्ये नमः ओम सामगानप्रियाय नमः ओम सौम्याय नमः ओम सदाशिवकुटुम्बिन्ये नमः ओम सव्यापसव्यमार्गस्थाय नमः ओम सर्वापद्विनिवारण्ये नमः ओम स्वस्थाय नमः ओम स्वभाव मधुराय नमः ओम धीराय नमः ओम धीरसमर्चिताय नमः ओम चैतन्यार्घ्य समाराध्याय नमः ओम चैतन्यकुसुमप्रियाय नमः ओम सदोदिताय नमः ओम सदा तुष्टाय नमः ओम द्रोणादित्यपाटलाय नमः ओम दक्षिणाराध्याय नमः ओम दरस्मेरमुखाम्बुदाय नमः ओम कौलिनी केवलाय नमः ओम अनर्घ्य कैवल्यपददायिन्ये नमः ओम स्तोत्रप्रियाय नमः ओम श्रीमत्ये नमः ओम श्रुतिसंस्कृतवैभवाय नमः ओम मनस्विन्ये नमः ओम मानवत्ये नमः ओम महेश्ये नमः ओम मङ्गलाकृतये नमः ओम विश्वमात्रे नमः ओम जगद्धात्रे नमः ओम विशालाक्ष्ये नमः ओम विरागिन्ये नमः ओम प्रगल्भाय नमः ओम परमोदाराय नमः ओम परामोदाय नमः ओम मनोन्मये नमः ओम योमकेशे नमः ओम यमानस्थाय नमः ओम वज्रिण्ये नमः ओम वामकेश्वर्ये नमः ओम पञ्चयज्ञप्रियाय नमः ओम पञ्चप्रेत पञ्चातिशायिन्ये नमः ओम पञ्चम्ये नमः ओम पञ्चभूतेश्ये नमः ओम पञ्चसङ्ख्योपचारिण्ये नमः ओम शाश्वत्ये नमः ओम शाश्वतीश्वर्याय नमः ओम शर्मदाय नमः ओम शम्भुमोहिन्ये नमः ओम धराय नमः ओम धरसुताय नमः ओम धन्याय नमः ओम धर्मिण्ये नमः ओम धर्मविवर्धिन्ये नमः ओम लोकातीताय नमः ओम गुणातीताय नमः ओम सर्वातीताय नमः ओम समात्मिकाय नमः ओम बन्धुकुसुमप्रख्याय नमः ओम बालाय नमः ओम लीला विनोदिन्ये नमः ओम सुमङ्गल्ये नमः ओम सुखकर्ये नमः ओम सुवेशाढ्याय नमः ओम सुवासिन्ये नमः ओम सुवासिन्यर्चनप्रीताय नमः ओम आशोभनाय नमः ओम शुद्धमानसाय नमः ओम बिन्दुतर्पणसन्तुष्टाय नमः ओम पूर्वजाय नमः ओम त्रिपुराम्बिकाय नमः ओम दशमुद्रासमाराध्याय नमः ओम त्रिपुरा श्रीवशङ्कर्ये नमः ओम ज्ञानमुद्राय नमः ओम त्रिगुणागम्याय नमः ओम ज्ञानज्ञेयस्वरूपिण्ये नमः ओम योनिमुद्राय नमः ओम त्रिखण्डेश्ये नमः ओम त्रिगुणाय नमः ओम अम्बाय नमः ओम त्रिकोणकाय नमः ओम अनघाय नमः ओम अद्भुतचारित्राय नमः ओम वाञ्छितार्थप्रदायिन्ये नमः ओम अभ्यासातिशयज्ञाताय नमः ओम षडद्वातीतरूपिण्ये नमः ओम अव्याजकरुणामूर्तये नमः ओम अज्ञानध्वान्तदीपिकाय नमः ओम आपालगोपविदिताय नमः ओम सर्वानुल्लङ्घ्य शासनाय नमः ओम श्रीचक्रराजनिलयाय नमः ओम श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरये नमः ओम श्रीशिवाजी नमः ओम शिवशक्त्यैक्यरूपिण्ये नमः ओम श्रीललिताम्बिकायै नमः ओम दुर्गालक्ष्मीसरस्वतीस्वरूपिण्ये नमो नमः ओम प्रकृत्यै नमः ओम विकृत्यै नमः ओम विद्यायै नमः ओम सर्वभूतहितप्रदायै नमः ओम श्रद्धायै नमः ओम विभूत्यै नमः ओम सुरभ्यै नमः ओम परमात्मिकायै नमः ओम वाचे नमः ओम पद्मालयायै नमः ओम पद्मायै नमः ओम स्वाहायै नमः ओम सुधये नमः ओम धन्यायै नमः ओम हिरण्मये नमः ओम लक्ष्मी नमः ओम नित्यपुष्टायै नमः ओम विभावर्ये नमः ओम अदित्यै नमः ओम दित्यै नमः ओम दीप्तायै नमः ओम वसुधायै नमः ओम वसुधारिण्ये नमः ओम कमलायै नमः ओम कान्तायै नमः ओम कामाक्षी नमः ओम क्रोधसम्भवायै नमः ओम अनुग्रहप्रदायै नमः ओम बुद्धये नमः ओम नखायै नमः ओम हरिवल्लभायै नमः ओम अशोकायै नमः ओम अमृतायै नमः ओम दीप्तायै नमः ओम लोकशोकविनाशिन्यै नमः ओम धर्मनिलयायै नमः ओम करुणायै नमः ओम लोकमात्रे नमः ओम पद्मप्रियायै नमः ओम पद्महस्तायै नमः ओम पद्माक्षी नमः ओम पद्मसुन्दर्यै नमः ओम पद्मोद्भवायै नमः ओम पद्ममुख्यै नमः ओम पद्मनाभप्रियायै नमः ओम रमायै नमः ओम पद्ममालाधरायै नमः ओम देव्यै नमः ओम पद्मिन्यै नमः ओम पद्मगन्धिन्यै नमः ओम पुण्यगन्धायै नमः ओम सुप्रसन्नायै नमः ओम प्रसादाभिमुख्यै नमः ओम प्रभायै नमः ओम चन्द्रवदनायै नमः ओम चन्द्रायै नमः ओम चन्द्रसहोदर्यै नमः ओम चतुर्भुजायै नमः ओम चतुर्रूपायै नमः ओम इन्द्रायै नमः ओम इन्दुशीतलायै नमः ओम आह्लादजनन्यै नमः ओम पुष्ट्यै नमः ओम शिवायै नमः ओम शिवकर्यै नमः ओम सत्यै नमः ओम जमलायै नमः ओम विश्वजनन्यै नमः ओम तुष्ट्यै नमः ओम दारिद्र्यनाशिन्यै नमः ओम प्रीतिपुष्करिण्यै नमः ओम शान्तायै नमः ओम शुक्लमाल्याम्बरायै नमः ओम श्रियै नमः ओम भास्कर्यै नमः ओम बिल्वनिलयायै नमः ओम वरारोहायै नमः ओम यशस्विन्यै नमः ओम वसुन्धरायै नमः ओम उदाराङ्गायै नमः ओम हरिण्यै नमः ओम हेममालिन्यै नमः ओम धनधान्यकर्यै नमः ओम सिद्धये नमः ओम स्त्रैणसौम्यायै नमः ओम शुभप्रदायै नमः ओम नृपेशमुदानन्दायै नमः ओम वरलक्ष्म्यै नमः ओम सुप्रदायै नमः ओम शुभायै नमः ओम हिरण्यप्राकारामाजायै नमः ओम समुद्रतनयायै नमः ओम जयायै नमः ओम मङ्गलायै नमः ओम देव्यै नमः ओम विष्णुवक्षस्थलस्थितायै नमः ओम विष्णुपत्न्यै नमः ओम प्रसन्नाक्ष्यै नमः ओम नारायणसमाश्रितायै नमः ओम दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः ओम
सर्वभद्रनिवारिण्यै नमः ओं नवदुर्गायै नमः ओं महाकाल्यै नमः ओं ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकायै नमः ओं त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः ओं भुवनेश्वर्यै नमः ओं धनलक्ष्मी नमः ओं धान्यलक्ष्मी नमः ओं धैर्यलक्ष्मी नमः ओं सन्तानलक्ष्मी नमः ओं सौभाग्यलक्ष्मी नमः ओं कटाक्षलक्ष्मी नमः ओं कारुण्यलक्ष्मी नमः ओं विजयलक्ष्मी नमः ओं वीर्यलक्ष्मी नमः ओं ऐश्वर्यमहालक्ष्मी नमो नमः नानाविधपरिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि नानाविधकुङ्कुमार्चनानि च समर्पयामि ॐ दशाङ्गं गुग्गुलो धूपं सुगन्धं सुमनोहरम् आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् देवदेवी महादेवी शुभं भवतु मे सदा यावत् पूजा समाप्ति स्यात् तावत् प्रज्वलसुस्थिता दीपमहालक्ष्म्यै नमः दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती स्वरूपिण्यै ललिता त्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिका स्वरूपिण्यै दीपमहालक्ष्म्यै नमः दिव्यधूपमाघ्रापयामि साध्यं त्रिवर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरापहं दीपमहालक्ष्मी नमो नमः प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् इदम् आचमनीयं समर्पयामि दोर्ध्ववस्सुवः अमृते अमृतोद्भवे अमृतेश्वरी अमृतवर्षिणी अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा अमृतं भवतु मधुवाताहृतायते मधुक्षरं सिन्धवः माध्वेर्न सन्तोषधीः मधुनक्तमुदोषधि मधुमत्पार्थिवगं रजः मधुज्जौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागुम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः मधु 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 ललितामहा त्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिकायै नमो नमः दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती स्वरूपिण्यै श्री चंडिका दीपमहालक्ष्मी नमो नमः प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् इदम् आचमनीयं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि ललितामहात्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिकायै नमो नमः यथाभागं भक्ष्यविशेषं नानाविधफलानि नारिकेलकण्ठद्वयं ताम्बूलं च निवेदयामि सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि ॐ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः बहुग्वै बह्वश्वाजै बह्वदाविकायै बहुव्रीह्यवाजै बहुमाशतिलायै बहुहिरण्यायै बहुहस्तिकायै बहुदासपूरुषायै रयिमत्यै पुष्टिमत्यै बहुरायस्पोषायै राजास्तु या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिका नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते आवाहिताभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः दीपमहालक्ष्मी नमो नमः समस्तोपचारपूर्वकं कर्पूरनीराजनं दर्शयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे प्रकृष्टपापनाशाय प्रहृष्टफलसिद्धये प्रदक्षिणं करोमि त्वां प्रसीद परमेश्वरी अन्यथा चरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वरी दीपमहालक्ष्मी नमो नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि எல்லாரும் புஷ்பத்தை எடுத்து அம்பாள்கிட்ட போட்டுட்டு முடிஞ்சால் அப்படியே பாவனையை நமஸ்காரம் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா தொட்டு வச்சுக்கோங்க
Namaste. Now Deepa Puja is completed. Now all the women are receiving the prasadam, Sumangali Dravyam from the priest. So they are having a lot of items in this Sumangali Dravyam kit, and they'll be receiving the blessings from goddess. Vimantamindramedhasuputrarum sabhagaham guru Yashahasyam pranade patimeka dashankrihi Yashahasyam putranade patimeka dashankrihi Vichamahagurundrinam bhavena bhavabhita siddhirastu Two persons can come for Harti. அந்த சுமங்கலி வந்திருக்காங்க இப்போ குழாவில் விட்டு அவளுக்கு ஓகே யார் கொடுக்கணும் அப்படி அமிச்சா நீங்கள் கொடுக்க வந்தபடி வந்தானா கொடுத்துருங்க ஓகே நீங்கள் ரெண்டு பேர் அப்படி போயிட்டு அந்த சுமங்கலை கிட்டு கொடுங்க சார் வீட்டில் தான் இருக்கு दशाहस्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादशं कृधी
Swami, Swami Varchi. Namaste. Now the priest is going to start the Sankalpa inside, and same time another set of priests are going to do Dhumavati Ambal Purvanga Puja, and Sankalpa is going on. After that Ambal Japam is going to be there. After Japam, Homam will start. Now the Sankalpa as well as Purvanga Puja is starting now. पूर्वप्रोष्ठपता नक्षत्रे कुम्भरासो जातायाः दत्तात्रेयशिवभाबाजीनाम्याः सदविषा नक्षत्रे रोहन हरित नाम्याः स्वाति नक्षत्रे रितेश शर्मा नाम्याः स्वाति नक्षत्रे रूपल परेख नाम्याः स्वाति नक्षत्रे निरेश बिहारी नाम्याः धनिष्ठा नक्षत्रे श्यामला रघेन्द्र नाम्याः आरुद्धा नक्षत्रे कपिल जोशी नाम्याः पुनर्वसु नक्षत्रे सौम्या सुचित्रा महंती नाम्याः श्रवणा नक्षत्रे घोरा चंद्राय चौधरी नाम्याः आरुद्रा नक्षत्रे झिंझू नाम्याः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे एमेन्द्रा नामधेयस्यः श्रवणा नक्षत्रे इरेन मंडिस नामधेयस्यः पूर्ववर्ती नक्षत्रे समीराध्यान नाम्याः स्वाति नक्षत्रे रामकृष्ण नाम्याः पदा नक्षत्रे रॉबर्ट जोसेफ ब्रहन्नट नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे राधा मनोहर रेड्डी नाम्याः रेड्डी नक्षत्रे विश्वान सिन्हा नाम्याः धनिष्ठा नक्षत्रे पंचप्रकोटी नाम्याः बोधा नक्षत्रे मोहम्मद रिजा नूरी नाम्याः उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे ज्योति जोन्स नाम्याः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे शिल्पा राव नाम्याः सतभिषा नक्षत्रे चंद्रत बृंदा नाम्याः हस्ता नक्षत्रे कोरक कहाली नाम्याः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे लिंधा लिली नाम्याः सुब्रा राय चौधरी नाम्याः उत्तराभाद्रा नक्षत्रोद्भवस्य सतभिषा नक्षत्रे जान अब्रहाम नाम्याः ज्येष्ठा नक्षत्रे रामलिंगम महिलवाहन नामधेयस्यः धनिष्ठा नक्षत्रे नरेंद्र नंदा नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे नितिन दयाल नाम्याः ज्येष्ठा नक्षत्रे प्रशांत पुजारी नाम्याः मका नक्षत्रे शिवकृष्ण राजु वेटुकूरी नाम्याः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे सोनी चिस नाम्याः अश्विनी नक्षत्रोद्भवस्य जॉर्ज स्टीफन नामधेयस्य हस्ता नक्षत्रे शंकर सुब्रह्मण्यम नाम्याः चित्रा नक्षत्रे सविता नाम्याः आश्लेषा नक्षत्रे विल्सी कमलकुमार नाम्याः धर्म नक्षत्रे श्रीधर राव नाम्याः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे जीवमलर नागमुत्तु नाम्याः उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे समर्ति पवन नाम्याः पुष्यमी नक्षत्रे विनय कुमार महाबत्रा नाम्याः पुष्यमी नक्षत्रे विल्सी हेमा नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे निराली पटिधर नाम्याः आश्लेषा नक्षत्रे ज्ञान चंद्र सिंह नाम्याः पुनर्वसु नक्षत्रे क्रोमोस कैमकन नाम्याः धनिष्ठा नक्षत्रे एलिजाबेथ तेमिंग टैंग नाम्याः विशाखा नक्षत्रे पूनम स्वाही नाम्याः आश्लेषा नक्षत्रे रविकुमार नाम्याः उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे लगबकली नाम्याः भरणी नक्षत्रे सुमेश अरोरा नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे लक्ष्मी प्रसाद मरढ़ा नाम्याः पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे महीनपल्ली चंद्रशेखर नाम्याः उत्तराफल्गुनी नक्षत्रे मुरुघा अगस्त्यलिंग नाम्याः आश्लेषा नक्षत्रे कटेबत्सिः नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे नीता पटेल नाम्याः पुष्यमी नक्षत्रे चक्रिया चै नाम्याः विशाखा नक्षत्रे अनिल कुमार नाम्याः हस्ता नक्षत्रे वेदांत बजाज नाम्याः ज्येष्ठा नक्षत्रे अर्चना पटेल नाम्याः रोहिणी नक्षत्रे नेस वेरमुहिन नाम्याः ज्येष्ठा नक्षत्रे विजय गोपाल महेश नाम्याः मका नक्षत्रे एग्नेस जोसेफ नाम्याः धनिष्ठा नक्षत्रे आशिष भाटिया नाम्याः पूर्वभाद्रा नक्षत्रे मिश्रा नाम्याः स्वाति नक्षत्रे श्रीमिश्रा नाम्याः शिवमिश्रा नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे श्याम मिश्रा नाम्याः उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे उत्तराभाद्रा नक्षत्रे सुनीता पृथ्वी नाम्याः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे विवेक ध्यानी नाम्याः भरणी नक्षत्रे सजिल भर्धन नाम्याः उत्तराभाद्रा नक्षत्रे अविन लैमले नाम्याः पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे वैली वेल्स नाम्याः पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे शिव रविशंकर बहुंगांगी नाम्याः विशाखा नक्षत्रे अजय शत्रु शर्मा नाम्याः पूर्वभाद्रा नक्षत्रे धीराव नाम्याः हस्ता नक्षत्रे विजय पौल नाम्याः मुहा नक्षत्रे
मौलिक भारतभट्ट नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे सेवध्रं जम्बुलिङ्गं नाम्याः शतभिक्षा नक्षत्रे अहेलिशिन् कडुः नाम्याः उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे दिलीप कार्त नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे विवेकानन्दन् द्वैस्वामी नाम्याः काश्यपगोत्रोद्भवस्याः उत्तराषाढा नक्षत्रे सोनाली मोडी नाम्याः उत्तराषाढा नक्षत्रे एनिस् मोडी नाम्याः काश्यपगोत्रोद्भव अशोक मोडी नाम्याः अश्विनी नक्षत्रोद्भवस्यः काश्यपगोत्रोद्भवसे नर्मदा भेल नाम्याः ज्येष्ठा नक्षत्रोद्भवस्यः विशाखा नक्षत्रे नीलेश मोडी नाम्याः मृगशिरो नक्षत्रोद्भवे एस्की च्योङ् नाम्याः पूर्वाभद्रा नक्षत्रे आक्लेश सुमन नाम्याः भरणी नक्षत्रे रेणुका सैमन शेखरन नाम्याः स्वाति नक्षत्रे मनोज कुमार सोनी नाम्याः आर्द्रा नक्षत्रे करीना शकी नाम्याः ज्येष्ठा नक्षत्रे अमित कुमार कपूर नाम्याः पुष्यमी नक्षत्रे तिलकराज वेणुगोपाल नाम्याः रोहिणी नक्षत्रे चंद्रशेखर नाम्याः पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे लक्ष्मी बालाजी प्रीति नाम्याः पूर्वभाद्रा नक्षत्रे बालाजी नाम्याः अश्लेषा नक्षत्रे चिदानंद नाम्याः बालाजी नाम्याः पुष्यमी नक्षत्रे आदित्य बालाजी नाम्याः मृगशिरो नक्षत्रे झेरी टाटन नाम्याः पुनर्वसु नक्षत्रे भैरवी ढैली नाम्याः कृतिका नक्षत्रे हेमेन लियोन नाम्नयस्य भरणी नक्षत्रे सुचित्रा एलिन मौर नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे शेमन मिलिंग नाम्याः पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे विजय राघवन नाम्याः उत्तराषाढा नक्षत्रे जगदीश निलिपत्ति नाम्याः कृतिका नक्षत्रे सुसुन्हा घोरव नाम्याः पूर्वाषाढा नक्षत्रे रोसरिया एस्ट्रिया बोको नाम्याः मृगशिरो नक्षत्रे श्रीशा सिंह नाम्याः उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे पूर्णिमा गोपीनाथ नाम्याः पुनर्वसु नक्षत्रे राजपटानी नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे डॉन टॉमसन नाम्याः कलवकुंटल सतीश नाम्याः रेवती नक्षत्रोद्भवस्यः पुष्यमी नक्षत्रे बालाजी मंजू नाम्याः पिळ्ळै पुरवी नाम्याः सिद्धा नक्षत्रे कलवकुंटल गायत्री नाम्याः श्रवणा नक्षत्रे श्रवकुंटल नाम्याः मका नक्षत्रे अनिता चंद्रकुंटला नाम्याः ज्येष्ठा नक्षत्रे गौरव झौ नाम्याः विशाखा नक्षत्रे रीजा खान नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे ललिता अंजलिका जुलेन्द्रा नाम्याः चित्ता नक्षत्रे अजय महोरात्रा नाम्याः पुष्यमी पुनर्वसु नक्षत्रे महलिया एना मैल्डिघल नाम्याः श्रवणा नक्षत्रे प्रभा महोपर नाम्याः कृतिका नक्षत्रे सुशील महाजन नाम्याः पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे काशीनाथन नाम्याः पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे मोहमदर बतुमलै नाम्याः धनिष्ठा नक्षत्रे भ्रोगौत्री नाम्याः कृतिका नक्षत्रे पैट्रिक धनिस नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे मरियम शल्लर नाम्याः उत्तराभाद्रा नक्षत्रे संजय धर्मः नाम्याः सदविषा नक्षत्रे किरण महन नाम्याः सदविषा शरणा नक्षत्रे ऐसन जैक्ली नाम्याः भरणी नक्षत्रे प्रशांत दोषी नाम्याः सदविषा नक्षत्रे सिल्क प्रोबल नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे राजहय्यर नाम्याः मका नक्षत्रे मौनी भे नाम्याः सदविषा नक्षत्रे भैनी राजा नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे ब्रंडो कार्नर नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे मैरिना गैसरिन नाम्याः श्रवणा नक्षत्रे वेणुगोपाल वेंकटकृष्णन नाम्याः विशाखा नक्षत्रे पुनीत अरोरा नाम्याः उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे परेश दाहा नाम्याः हस्ता नक्षत्रे मोनिका तुलसिलोरमेश नाम्याः आश्लेषा नक्षत्रे चंद्रशेखर नाम्याः पुष्यमी नक्षत्रे जीसस कैस्ट्रो नाम्याः हस्ता नक्षत्रे गिरीश कोभक नामधेयस्य शिक्षा महोत्रा नाम्याः मृगशिरो नक्षत्रे मुरलीधरन संघरबल्ली नाम्याः स्वाति नक्षत्रोद्भवस्यः हरीश वर्षा नाम्य पुनर्वसु नक्षत्रे चिंतिया नाम्याः उत्तरा नक्षत्रोद्भवस्याः सुरेश लीलाः शतविषा नक्षत्रोद्भवस्य मधुराघा नाम्य पूर्वफल्गुनी नक्षत्रोद्भवस्य भविन एस दाहा नाम्याः बिहिन्दिल्मुहुला नक्षत्रोद्भवस्यः आदयोः उत्तराषाढा नक्षत्रे स्वामिनाथन श्रीनिवासन नाम्याः पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे सुब्रह्मण्यम जयशंकर नाम्याः कृतिका नक्षत्रे सुषमा जगन नाम्याः भरणी नक्षत्रे गणेश नाम्याः आश्लेषा नक्षत्रे झीकौर नाम्याः उत्तराषाढा नक्षत्रे इंद्रा नेकौलन वेल्स नाम्याः मृगशिरो नक्षत्रे झूली बैकर नाम्याः कृतिका नक्षत्रे संध्रा अलहेन्द्र नाम्याः पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे राकेश परवर्णन नाम्याः पुष्यमी नक्षत्रे जैना भौज नाम्याः अभरणी नक्षत्रे जेम्स कुह नाम्याः मूला नक्षत्रे प्रेमलता अप्पड़ नायडू नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे श्रीकांत सवैन्यान्याः अनुराधा नक्षत्रे गुलाम मोहम्मद नाम्याः श्रवणा नक्षत्रे सत्येंद्र राज नाम्याः राय नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे विलियम टकर नाम्याः सदभिषा नक्षत्रे आनो कौधरिया नाम्याः पुनर्वसु नक्षत्रे मार्कंडेयन जयराम नाम्याः स्वाति नक्षत्रे
टैरी लौरसन् नाम्याः उत्तराषाढनक्षत्रे जोसेफ् रोड्रिक्ला नाम्याः उत्तरफल्गुनी नक्षत्रोद्भवस्य संजय अगरवाल नाम्याः आरुद्धा नक्षत्रे इलविद्यार्थी नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे संदीप यादव पाशम नाम्याः आरुद्धा नक्षत्रे रिजाना नैकोलटी नाम्याः स्वाति नक्षत्रे विनु श्रीजित् बाबू नाम्याः रेवती नक्षत्रे मोहनाक्षी स्वेहिनी नाम्याः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे फेबिल राजन नाम्याः जन्म नक्षत्रे एटिला मौसू नाम्याः पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे जस्टीप कांग नाम्याः रेवती नक्षत्रे जेनिफर हेमिंग्स नाम्याः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे विजयेन्द्रन उत्तरापति नाम्याः पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे क्रिस्टीन विलियम्स नाम्याः जन्म नक्षत्रे रेश्मा देशाय नाम्याः प्रेमा स्वामीनाथन नाम भरणी नक्षत्रे प्रेमा स्वामीनाथन नामधेयस्य मेषरासुजातायाः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे मकररासु सरस्वती स्वामीनाथन नाम्याः कृत्तिका नक्षत्रे ऋषभरासुजातस्य गणेश स्वामीनाथन नाम्याः तिरुभा आरुद्धा नक्षत्रे मिथुनरासुजातस्य नैत्रभगाश्रभगोत्रोद्भवस्याः लीला जयशंकर नाम्याः अनुराधा नक्षत्रोद्भवस्य रेवती नक्षत्रे अरुणा जयशंकर नाम्याः रोहिणी नक्षत्रे कार्तिक जयशंकर नाम्याः भारत भातगोत्रोद्भवस्य आवयोः आरुद्धा नक्षत्रे प्रीता सिल्वा नाम्याः पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे मेरिया एंटोनिरा नाम्याः आश्लेषा नक्षत्रे सोनी जिंकिस नाम्याः पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे रिकॉर्ड डॉकान नाम्याः पुष्टमी नक्षत्रे मेलिंदा वेक्सलर नाम्याः भरणी नक्षत्रे रॉबर्ट ग्रार्गिल नामधेयस्य उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे क्रिस कैम्स नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे एवेंगलिया निसाका एस्ट्रोम नाम्याः श्रवणा नक्षत्रे निर्मल गहद्या नाम्याः कृत्तिका नक्षत्रे एनस आरोग्यम नाम्याः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे अजय राज नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे वैभव गौतम नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे क्लैरा एंजल नाम्याः धनिष्ठा नक्षत्रे जॉन रोकस नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे ऐसी बंदोपाध्याया नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे एंसन कैसु नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे मैरी वाइट नाम्याः उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे पैटी गोल्डन नामधेयस्य आरुद्रा नक्षत्रे क्लिफोर्ड अल्फोर्ड नामधेयस्य उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे अंजलिका गेट्कर नामधेयस्य मका नक्षत्रे टैंगो मंसोंग्यु नाम्याः भरणी नक्षत्रे देवाशिशूट नाम्याः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे डोमिनिको डोयालिया नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे थॉमसन टर्पिन नाम्याः रोहिणी नक्षत्रे वेणुगोपाल नाम्याः हस्ता नक्षत्रे विजय पौल नाम्याः आश्लेषा नक्षत्रे फिलिप बर्सन नाम्याः पुनर्वसु नक्षत्रे कैरी गैर्लन नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे श्रीधर वेंकटेश्वरन नाम्याः विशाखा नक्षत्रे शर्मिला मंजुमदर नाम्याः मकरसु नक्षत्रे अबूट कुलकर्णी नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे सूसन कैफ्टली वर्क नाम्याः स्वाति नक्षत्रे वेंकटेश कमलमूर्ति नाम्याः धनिष्ठा नक्षत्रे प्रदीप चक्रवर्ती नाम्याः विशाखा नक्षत्रे नैन्सी जॉन्सन नामधेयस्य पुष्टवी नक्षत्रे मनोज टैम्डन नामधेयस्य आरुद्रा नक्षत्रे एनी फ्रांसिस नामधेयस्य आवयोः विशाखा नक्षत्रे राकेश नंदन नाम्याः आश्लेषा नक्षत्रे पीयूष नंदन नाम्याः आश्लेषा नक्षत्रे सुशीला डी डोरा नाम्याः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे लारा वेरन ओर्टिका नाम्याः आश्लेषा नक्षत्रे हरिणी लो बत्तीस नाम्याः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे लहुरा शैली नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे नर्तमा मौलिक भट्ट नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे नैसमलर वधुमलै नाम्याः रोहिणी नक्षत्रे रामचंद्रन वडिवेल नाम्याः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे उदित महंती नाम्याः पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे संदीप घोष नाम्याः आर्द्रा नक्षत्रे रोस्मेरी मर्फी नाम्याः हस्ता नक्षत्रे रश्मि श्रीवत्सा नाम्याः पूर्वफल्गुनी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे पैठनोलापियोजिट नाम्याः हस्ता नक्षत्रे सक्षी किरण नाम्याः श्रवणा नक्षत्रे सोहाली मोहम्मद खान नाम्याः सोइल मोहम्मद खान नाम्याः पुष्यमी नक्षत्रे विंजा रोडिग्रस नाम्याः पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे डैनियल एल्बा नाम्याः श्रवणा नक्षत्रे एल्बा मार्शल मैडिसन क्लबस नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे हेर्मल एक्सल वेलुंजा बैलंडर नाम्याः सतभिषा नक्षत्रे जेम्स बोर्डहस नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे चिंतु सदसर नामधेयस्य मृगसुरो नक्षत्रे मैत्री मधुरी नाम्याः पुष्यमी नक्षत्रे कविता बब्बर नाम्याः कृत्तिका नक्षत्रे पूजा बोसु कलेरी नाम्याः रोहिणी नक्षत्रे नहिना गरोव्या नाम्याः मूला नक्षत्रे जैन तौरो रईस नामधेयस्य हस्ता नक्षत्रे गोवल्ली मुरलीधर नाम्याः रोहिणी नक्षत्रे कृष्ण मुरली वीरास्वामी नाम्याः कृत्तिका नक्षत्रे मैट एटर नामधेयस्य उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे जेनिफर एब्लस नामधेयस्य श्रेया श्रीवत्स नामधेयस्य श्रीनिवास श्रीवत्सव नामधेयस्य मूला नक्षत्रे विनीत विजयराघवन नाम्याः श्रवणा नक्षत्रे मैट कैब लौस्टिन नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे सोनार मोडी नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे जीन्स लैप्लर नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे टॉमी मोरोल नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे डोनाल्ड
रिभेक् नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे लूइसा लेमस् नामधेयस्य मूलानक्षत्रे मृषालिनी हरिचन्द्रनी नाम्याः हस्तानक्षत्रे अनीता गैहा नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे आष्टुस् गैहा नाम्याः महानक्षत्रे इथालीदास् नाम्याः हस्तानक्षत्रे श्रीनिवास गरिमण्डला नाम्याः उत्तराषाढा नक्षत्रे च्योङ्ग् जिस्मि एसुन् लियान् नामधेयस्य नक्षत्रोद्भवस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे मीरा भट् नाम्याः पूर्वबल्गुनी नक्षत्रे एवाक्विक् नाम्याः स्वाति नक्षत्रे अहमद बर्जूस् नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे संजय जैन नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे मैग्रेट् ग्राफ्सम् नाम्याः पुष्यमी नक्षत्रे गली जैक्सन् नाम्याः पुष्यमी नक्षत्रे संजय आर् पाण्डे नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे शांति एवं नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे मेरिया मरोठा नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे लिंडा सेम् किंग नामधेयस्य पुनर्वसु नक्षत्रे स्टीवन किंग नाम्याः चित्ता नक्षत्रे नटिला एल्कस् नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे विवेक एड्बस् विक्की एड्बस् नामधेयस्य पुष्यमी नक्षत्रे हरिता नंगुबंडी नाम्याः आश्लेषा नक्षत्रे अस्सा ताकर् नामधेयस्य पुष्यमी नक्षत्रे सेव्धा गोब्लिन् नाम्याः ज्येष्ठा नक्षत्रे करीना हेन्सन् नाम्याः पुनर्वसु नक्षत्रे सामुवेल् उल्लिस् नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे खोरी मिल्लर् नामधेयस्य पूर्वाषाढा नक्षत्रे प्रणय रेड्डी नाम्याः विशाखा नक्षत्रे निशा राम पटेल नाम्याः उत्तराषाढा नक्षत्रे रीना सकोवा नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे अनूप नाइक नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे प्रियंका कुमार नाम्याः पुष्यमी नक्षत्रे तिरुमूलं मारिमुत्तु नाम्याः स्वाति नक्षत्रे भानुमती तिरुमूलं नाम्याः पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे सबीना कुर्मेरी नाम्याः पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे अनुष्का रमेश घोषला नाम्याः जन्म नक्षत्रे नैल डन्फोर्ड नामधेयस्य पुनर्वसु नक्षत्रे पद्मा मालिनी रिसिंग नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे देवीश्री मेरी जुडित सुलीवन् नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे विल्ली नाम्याः पुनर्वसु नक्षत्रे नैन्सी नौद्भौत्या नामधेयस्य नैन्सी नौसर्बोर् नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे गौरी डेप्लैन् नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे भर्बरारिस् नाम्याः मका नक्षत्रे उमेश मटेज लेवर्स्निक् नाम्याः पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे जॉर्ज नटिल् नाम्याः उत्तराषाढा नक्षत्रे तीर्थडीपा पसंदी नाम्याः प्रधान नाम्याः अरूप प्रधान नाम्याः आश्लेषा नक्षत्रोद्भवस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे मेल्कम न्यू नाम्याः उत्तराषाढा नक्षत्रे कबीर साल्वर् नामधेयस्य पूर्वबल्गुनी नक्षत्रे मैराढेम नाम्याः मूला नक्षत्रे अशोक सिंह नाम्याः आश्लेषा नक्षत्रे डेविड एफ्सल नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे विक्टोरिया हरन् नामधेयस्य पूर्वाषाढा नक्षत्रे जैक बॉक्स्ली नाम्याः कृत्तिका नक्षत्रे रानवा कुनै नाम्याः पुनर्वसु नक्षत्रे हीरो बसानी नाम्याः पूर्वबल्गुनी नक्षत्रे एम्सिन बेरोनिस थॉमस नामधेयस्य वेंटिस नामधेयस्य सदविषा नक्षत्रे मैर्सिया मेकोडो नाम्याः मृगसुरो नक्षत्रे मैरो नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे सुरेंद्र शेहल नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे हेतरिष्पग् नाम्याः मखा नक्षत्रे महेन्द्रन नवरत्नय्या नाम्याः नवरत्नराजय्या नाम्याः मृगसुरो नक्षत्रे जिया शेख नाम्याः श्रवणा नक्षत्रे विष्णुशरण शुंकु नाम्याः जन्म नक्षत्रे ललिता श्रीनाथ नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे श्रीनिवास नाम्याः आश्लेषा नक्षत्रे रीटा नाथनी नाम्याः उत्तरा फल्गुनी नक्षत्रे विवेकनाथनी नाम्याः श्रवणा नक्षत्रे एल्सिया लैमर् नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे कैंटकर नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे मौसमी दत्ता नाम्याः जन्म नक्षत्रे
चक्षुदत्वा हिरण्यपक्षं वरुणस्य दोतं यमस्य योनौ शकुनं भुरण्यम् आप्याय स्वदमे तुते विश्वदस्त्वमवृष्टयं भवावाजसुतं कथे यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सयवोषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना भवेश तस्मै रुद्राय अस्तो इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समूढमस्य पाकं सुरे इन्द्रं विश्वावीवृधान् समुद्रव्यतिसङ्गिरः रथीतमकं रथीनां वादानाकं सत्पतिं पतिं भोर्भुवस्तु वः आपो वा इदकं सर्वं विश्वाभूतान्यावः प्राणावावः पशवापोन्सराडापश्चन्दागस्यापो ज्योतिर्गस्यापो यजोगस्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भवस्तु वराप ॐ वः प्रणयते श्रद्धा वा आपः श्रद्धा मे वारभ्यः प्रणीय प्रचलति पः प्रणयति यज्ञो वा आपः यज्ञमेवारभ्यः प्रणीय प्रचलति पः प्रणयति वज्रो वा आपः वज्रमेव भ्रातृव्येभ्यः प्रहृत्य प्रणीय प्रचलति पः प्रणयति आपो वै रक्षोऽग्निः रक्षसामुपहत्यै आपो वै देवानां प्रियं धाम देवानामेव प्रियं धाम प्रणीय प्रचलति पः प्रणयति आपो वै सर्वा देवताः देवता एवारभ्यः प्रणीय प्रचलति पः प्रणयति आपो वै शान्ताः शान्ताभिरेवाशिशुजगुं शमयति देवावस्विदोत्तु नादो अच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः सहिरत्राणुदाधुषे स्वादितविदाभगः कोर्चाग्रे राक्षसान् घोरान् सिन्धिकर्मविघातिनः त्वामर्पयामि कुम्भेऽस्मिन् साफल्योङ्गरगर्भणे वृक्षराजितमद्भूता शाखायाः पल्लवत्वजः युष्मान् कुम्भे सर्पयामि सर्वदोषापणत्वये नारकेळसमुद्धूततृणेऽत्र विदा शिखया धृतं सर्वं पापं पीडां च मेनुदा सर्वे समुद्रा सलिलतीर्था धनदाहृदाः इमं मे वरुणश्रुति हिममद्याति मृडया त्वामवस्युराजके तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशा आस्ते दमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः बोधिरजगं समानाजो प्रमोषीः अस्मिन् कुम्भे सकलतीर्थाधिपतिं श्रीवरुणं ध्यायामि श्रीवरुणम् आवाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्य इदमासनं वरुणाय नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि वरुणाय नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि वरुणाय नमः अर्घ्यं समर्पयामि वरुणाय नमः आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि वरुणाय नमः स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः वस्त्रोत्तरीयं समर्पयामि वरुणाय नमः समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ॐ वरुणाय नमः ॐ प्रचेतसे नमः ॐ स्वरूपिणे नमः ॐ अपाम्पतये नमः ॐ मकरवाहनाय नमः ॐ जलाधिपतये नमः ॐ पाशहस्ताय नमः ॐ तीर्थराजाय नमः ॐ वरुणमूर्तये नमः ॐ वरुणाय नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि अस्य श्रीधूमावती महामन्त्रस्य पिप्पलादर्शिः निवृत्छन्दः श्रीधूमावती देवता धूम बीजं स्वाहा शक्तिः धूमावती कीलकं श्रीधूमावती प्रसादसिद्ध्यर्थे सङ्कल्पितयजमानयोर्भक्तमहाजनयोः मनसि सकलकार्येषु विजयत्वलाभसिद्ध्यर्थे जपे होमे च विनियोगः ॐ धूम धूम अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ धूम तर्जनीभ्यां नमः ॐ मां मध्यमाभ्यां नमः ॐ वम् अनामिकाभ्यां नमः ॐ तिं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ स्वाहा हृदयं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॐ धूम धूम हृदयाय नमः ॐ धूम शिरसे स्वाहा ॐ मां शिखायै विषटे ॐ वं कवचाय हं ॐ तिं नेत्रत्रयाय वौषटे ॐ स्वाहा अस्त्राय फटे भोर्भुवस्वरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम् अत्युच्चामलिवां राखिलजनोद्वोगावः दुर्मना ऋक्षाक्षित्रितया विश्वासदना सूर्योदरी चञ्चला प्रस्वेदाम्बुचिताक्षुधाकुलतनुः कृष्णातिरुक्षा प्रभा ध्येये मुक्तागता सदा प्रियकलिर्धूमावती मन्निना ॐ धूम धूमावती स्वाहा ॐ धूम धूम धूमावती स्वाहा अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां श्रीदशमहाविद्यास्वरूपिणीं धूमावती अम्बिकां ध्यायामि श्रीधूमावती अम्बिकाम् आवाहयामि ॐ धूम धूम धूमावती स्वाहा धूमावती अम्बिकायै नमः आसनार्थं रत्नसिंहासनं समर्पयामि ॐ धूम धूम धूमावती स्वाहा
धूमावत्यम्बिकायै नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि ॐ धूम धूम धूमावती स्वाहा धूमावती अम्बिकायै नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि ॐ धूम धूम स्वाहा धूमावती अम्बिकायै नमः मुखे आचमनीयं समर्पयामि ॐ धूम धूम धूमावत्यै नमः धूमावत्यम्बिकायै नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि आपोहिष्ठामयो भवस्तानभूर्जे दधातना यावश्वतमोरसस्य भाते देहनः उषधीरिव मातरः तस्मारङ्गमामभोजस्य क्षयाय जुन्वथा आपो ॐ धूम धूम धूमावत्यै नमः श्रीधूमावती अम्बिकायै नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि ॐ धूम धूम धूमावत्यै नमः धूमावत्यम्बिकायै नमः वस्त्रोत्तरीयं समर्पयामि ॐ धूम धूम धूमावत्यै नमः धूमावत्यम्बिकायै नमः पुष्पमालां समर्पयामि मङ्गलपुष्पैः पूजयामि देवी स्तोत्रमस्य ओम गौर्यै नमः ओम गौर्यै नमः ओम गणेशजनन्यै नमः ओम गिरिराजतनोद्भवायै नमः ओम गुहाम्बिकायै नमः ओम जगन्मात्रे नमः ओम गंगाधरकुटुम्बिन्यै नमः ओम वीरभद्रप्रसुवे नमः ओम विश्वव्यापिन्यै नमः ओम विश्वरूपिण्यै नमः ओम अष्टमूर्त्यात्मिकायै नमः ओम दारिद्र्यशमन्यै नमः ओम शिवायै नमः ओम शाम्भव्यै नमः ओम शङ्कर्यै नमः ओम बालायै नमः ओम भवान्यै नमः ओम भद्रदायिन्यै नमः ओम माङ्गल्यदायिन्यै नमः ओम सर्वमङ्गलायै नमः ओम मञ्जुभाषिण्यै नमः ओम महेश्वर्यै नमः ओम महामायायै नमः ओम मन्त्राराध्यायै नमः ओम महाबलायै नमः ओम हिमाद्रिजायै नमः ओम हैमवत्यै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम पापनाशिन्यै नमः ओम नारायणां सजायै नमः ओम नित्यायै नमः ओम निरीशायै नमः ओम निर्मलायै नमः ओम अंबिकायै नमः ओम मृडान्यै नमः ओम मुनिसंसेव्यायै नमः ओम मानिन्यै नमः ओम मेनकात्मजायै नमः ओम कुमार्यै नमः ओम कन्यकायै नमः ओम दुर्गायै नमः ओम कलिदोषनिषूदिन्यै नमः ओम कात्यायन्यै नमः ओम कृपापूर्णायै नमः ओम कल्याण्यै नमः ओम कमलार्चितायै नमः ओम सत्यै नमः ओम सत्त्वमय्यै नमः ओम सत्यायै नमः ओम सौभाग्याम्बायै नमः ओम सरस्वत्यै नमः ओम अमलायै नमः ओम अमरसंसेव्यायै नमः ओम अन्नपूर्णायै नमः ओम अमृतेश्वर्यै नमः ओम अखिलागमसंस्तुतायै नमः ओम सुखसच्चित्सुधारयायै नमः ओम बाल्याराधितभूतेशायै नमः ओम भानुकोटिसमद्युतये नमः ओम हिरण्मय्यै नमः ओम परायै नमः ओम सूक्ष्मायै नमः ओम शीतां सुकृतेखरायै नमः ओम हरिद्राकुङ्कुमाराध्यायै नमः ओम सार्वकालसुमङ्गल्यै नमः ओम सर्वभोगप्रदायै नमः ओम समाशिखायै नमः ओम वेदान्तलक्षणायै नमः ओम कर्मब्रह्मण्यै नमः ओम कामकलनायै नमः ओम काङ्क्षितार्थदायै नमः ओम चन्द्रार्कायितताटङ्कायै नमः ओम चिदम्बरशरीरिण्यै नमः ओम श्रीचक्रवासिन्यै नमः ओम देव्यै नमः ओम कामेश्वरसत्यै नमः ओम कलायै नमः ओम मारारातिप्रियार्थाङ्ग्यै नमः ओम मार्कण्डेयवरप्रदायै नमः ओम पुत्रपौत्रप्रदायै नमः ओम पुण्यायै नमः ओम पुरुषार्थप्रदायिन्यै नमः ओम सत्यधर्मरतायै नमः ओम सर्वसाक्षिण्यै नमः ओम शान्तिरूपिण्यै नमः ओम श्यामलायै नमः ओम बगलायै नमः ओम चण्ड्यै नमः ओम मातृकायै नमः ओम भगमालिन्यै नमः ओम शूलिन्यै नमः ओम विरजायै नमः ओम स्वाहा स्वधायै नमः ओम प्रत्यङ्गिराम्बिकायै नमः ओम आर्यायै नमः ओम दाक्षायण्यै नमः ओम दीक्षायै नमः ओम सर्ववस्तूत्तमोत्तमायै नमः ओम शिवाभ्रिधनायै नमः ओम श्रीविद्यायै नमः ओम प्रणवार्थस्वरूपिण्यै नमः ओम ह्रीङ्कार्यै नमः ओम नादरूपायै नमः ओम त्रिपुरायै नमः ओम त्रिगुणाम्बिकायै नमः ओम सौन्दर्यै नमः ओम स्वर्णगौर्यै नमः ओम षोडशाक्षरदेवतायै नमः धूम धूम धूमावत्यै नमः नानाविधपरिमलमन्त्रपुष्पाणि समर्पयामि ओम धूम धूम धूमावत्यै नमः धूपदीपार्थं पुष्पाणि समर्पयामि ओम धूम धूम धूमावत्यै नमः दशांगं गुग्गुलो धूपं सुगंधं सुमनोहरम् आग्रेयः सर्वदेवानां
धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् श्रीधूमावत्यम्बिकायै नमः अतिसुगन्धधूपमाघ्रापयामि साज्यं त्रिवर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरापहम् ॐ श्रीधूमावत्यम्बिकायै नमः घृतवर्तिदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् इदम् आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं षड्रसोपेतं नानाफलसमन्वितं गृहाण देवदेवेशी धूमावती नमोऽस्तु ते श्रीधूमावत्यम्बिकायै नमो नमः नानाविधफलानि एतत्सर्वम् अमृतं महानैवेद्यं निवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि पूगीफलसमायुक्तं नागवल्लीदलैर्युतं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां श्रीधूमावत्यम्बिकायै नमः समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि अनया पूजया श्रीधूमावत्यम्बिकाः प्रीयन्ताम् ओम तत्सत् ओम अत्युच्चामलिवाम्राखिलजनोद्गोवावः दुर्मनारुक्षाक्षित्रितया विश्वासदना सूर्योदरी चञ्चला प्रस्वेदाम्बुदिताक्षुधाकुलतनः कृष्णातिरुक्षा प्रभा ध्येया मुक्तकचा सदा प्रियकलिर्धूमावती मन्निना ओम धूम धूम धूमावत्यै नमः श्रीधूमावत्यम्बिकायै नमो नमः समस्तापराधक्षमापणार्थं सन्मङ्गलप्राप्त्यर्थं कर्पूरनीराजनं दर्शयामि रक्षां धारयामि योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावाहन् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति श्रीधूमावत्यम्बिकायै नमो नमः प्रार्थनापूर्वकं प्रदक्षिणवेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा 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 ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा
ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा श्री धूमावत्यंबिकायै नमः। ओम अत्युच्चामलिवां राखिलजनोद्भोगावः दुर्मनार्क्षाक्षित्रितया विश्वासदशना सूर्योदरी चञ्चला प्रस्वेदाम्बुजिताक्षदा कुलतनुः कृष्णातिरुक्षा प्रभा ध्येया मुक्तकथा सदा प्रियकलिर्धूमावती मन्निना ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। श्री धूमावत्यंबिकायै नमः। पूर्वांग पूजा समये प्रार्थनापूर्वकं कर्पूरनीराजनं दर्शयामि रक्षां धारयामि। ओम हरा
Namaste. We had just concluded Dhumavati Ambal, Purvanga Puja and Ambal Japam. Now we are going to start Dhumavati, Homa for Dhumavati. It's going to be next 35 to 45 minutes. After that we will have a Punahuti. Now priests are preparing for the Homa. As I have mentioned earlier, Dhumavati is one made out of smoke, represented in the form of old widow, a symbolic representation of pure potential energy that is Shakti without Shiva. She dispels poverty, debt, quarrels, misunderstanding, and provide protection against legal actions, dispels all affections due to planet Ketu. Now we are starting the Homa. प्रज्वाल्या प्राक्तोयन्निधाय परिस्तीर्य ओम अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व ओम सरस्वतेन मन्यस्व ओम देवसवितः प्रसुवा ओम अस्य श्री धूमावती अस्य श्री धूमावती महामंत्रस्य पिप्पलाद ऋषिः निवृच्छन्दः श्री धूमावती देवता धूम बीजम स्वाहा शक्तिः धूमावती कीलकम श्री धूमावती प्रसाद सिद्ध्यर्थे संकल्पित महाजनयो मनसि सकल कार्येषु विजयत्व सिद्ध्यर्थे दीर्घायुष सिद्ध्यर्थे जपे होमे च विनियोगः ओम धूम धूम अंगुष्ठाभ्यां नमः ओम धूम तर्जनीभ्यां नमः ओम माम मध्यमाभ्यां नमः ओम वम अनामिकाभ्यां नमः ओम तिम कनिष्ठिकाभ्यां नमः ओम स्वाहा करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ओम धूम धूम हृदयाय नमः ओम धूम शिरसे स्वाहा ओम मां शिखाये वषट ओम कं ओम वम कवचाय हम ओम तिम नेत्रत्रयाय वषट ओम स्वाहा अस्त्राय भट भोर्भवस्वरो विजिदिग्बन्धः ध्यानम् अत्युच्चामलिवां राखिल जनोद्भोवागा अत्युच्चामलिवाम्राखिलजनोद्भोगावः दुर्मनार्क्षा क्षित्रितया विश्वासदशना सूर्योधरी चञ्चला बृहस्पदाम्बुचिता क्षुधाकुलतनुः कृष्णातिरुक्षा प्रभा ध्येया मुक्ततया सदा प्रियकलुर्धूमावती मन्निना ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा अस्मिन् यज्ञाग्नौ दशमहाविद्यास्वरूपिणीं श्री धूमावती अंबिकां ध्यायामि ओम धूम धूमावत्यै नमः श्री धूमावत्यंबिकाजी नमः आसनं समर्पयामि ओम धूम धूमावत्यंबिकाजी नमः आसनं कल्पयामि नमः स्वाहा ओम धूम धूमावती स्वाहा श्री धूमावत्यंबिकाजी नमः पादयोः पाद्यं कल्पयामि नमः स्वाहा ओम धूम धूमावती स्वाहा श्री धूमावत्यंबिकाजी नमः अर्घ्यं कल्पयामि नमः स्वाहा ओम धूम धूमावती स्वाहा श्री धूमावत्यंबिकाजी नमः आचमनीयं कल्पयामि नमः स्वाहा ओम धूम धूमावती स्वाहा धूमावत्यंबिकाजी नमः शुद्धोदकस्नानं कल्पयामि नमः स्वाहा ओम धूम धूमावती स्वाहा धूमावत्यंबिकाजी नमः स्नानानन्तरम् आचमनीयं कल्पयामि नमः स्वाहा ओम धूम धूमावती स्वाहा धूमावत्यंबिकाजी नमः वस्त्रयज्ञोपवीत उत्तरीय आभरणं कल्पयामि नमः स्वाहा ओम धूम धूमावती स्वाहा धूमावत्यंबिकाजी नमः उपवीत आभरणं कल्पयामि नमः स्वाहा ओम धूम धूमावती स्वाहा श्री धूमावत्यंबिकाजी नमो नमः गन्धाक्षतान् समर्पयामि नमः स्वाहा ओम धूम धूमावती स्वाहा धूमावत्यंबिकाजी नमः धूपदीपार्थं पुष्पाणि समर्पयामि नमः स्वाहा
पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओं भवस्य देवस्य पत्नी नमः ओं शर्वस्य देवस्य पत्नी नमः ओं ईशानस्य देवस्य पत्नी नमः ओं पशुपतेर्देवस्य पत्नी नमः ओं रुद्रस्य देवस्य पत्नी नमः ओं उग्रस्य देवस्य पत्नी नमः ओं भीमस्य देवस्य पत्नी नमः ओं महतो देवस्य पत्नी नमः ओं ब्रह्मकीटजनन्यै नमः ओं वर्णाश्रमविधायिन्यै नमः ओं निजाज्ञारोपनिगमायै नमः ओं पुण्यफलप्रदायै नमः ओं श्रुतिसीमन्तसिन्धूरीगतपादाब्जधूलिकायै नमः ओं सकलागमसन्दोह शुक्तिसम्पूर्णमुक्तिकादी नमः ओं मोक्षार्थप्रदादी नमः ओं भुवनादी नमः ओं भोगिन्यै नमः ओं भुवनेश्वर्यै नमः ओं अम्बिकादी नमः ओं अनाथनिधनादी नमः ओं हरिब्रह्मेन्द्रसेवितादी नमः ओं नारायण्यै नमः ओं श्रीधूमावत्यम्बिकायै नमो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ओं धूम धूम धूमावति स्वाहा धूमावत्यम्बिकायै नमो नमः धूपं कल्पयामि नमः स्वाहा ओं धूम धूम धूमावति स्वाहा धूमावत्यम्बिकायै नमः दीपं कल्पयामि नमः स्वाहा ओं धूम धूम धूमावती स्वाहा श्री धूमावत्यम्बिकायै नमो नमः नैवेद्यस्थाने लाजं निवेदयामि नमः स्वाहा ओं धूम धूम धूमावति स्वाहा धूमावत्यम्बिकायै नमो नमः कर्पूरताम्बूलं समर्पयामि नमः स्वाहा समस्तोपचारान् समर्पयामि ओं धूम धूमावत्यै नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि ओं धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा 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 ओं धूम धूम धूमावति स्वाहा ओं धूम धूम धूमावति स्वाहा 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 स्वाहा
ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा
Om Dhum Dhum Dhumavati Swaha Swaha. 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 Om Dhum Dhum Dhumavati Swaha Swaha.
Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha. Om Dhom Dhom Dhomavati Swaha Swaha.
ओम धूम धूम धूमावधि स्वाहा स्वाहा 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 ओम धूम धूमावधि स्वाहा स्वाहा ओम धूम 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 धूम धूमावधि स्वाहा ओम धूम धूम धूमावधि स्वाहा स्वाहा ओम धूम धूम धूमावधि स्वाहा स्वाहा सर्वत्र श्री धूमावत्यंबिकायै नमः एतत्कर्म समृद्ध्यर्थम् अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा अग्नये स्विष्टकृत इदन्नमः एतत्कर्म समृद्ध्यर्थं जयादिस्थाने मिन्दाहुतीन् होष्यामि यन्मात्मनो मिन्दाभूदग्निस्तत्त्वनराः जातवेदा विदर्शनि स्वाहा अग्नये जातवेदसे विदर्शन इदन्नमः पुनरग्निश्चक्षुर्दात् पुनरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मेश्विनाय वञ्चक्षुराधत्तवक्षो स्वाहा अग्ने इन्द्र बृहस्पत्यश्वभ्य इदन्नमः भू स्वाहा अग्ने इदन्नमः भुव स्वाहा वायवे इदन्नमः नमः ओम प्रजापत यजमानयोर्भक्तमहाजनयोः सङ्कल्पितप्रकारेण दशमहाविद्यास्वरूपिणी अद्य दिनसाध्य शारदा नवरात्रि महोत्सवे अद्य दिनसप्तमदिनसाध्य श्रीधूमावत्यम्बिका जपहोमकर्मणि मध्ये सम्भावितमन्त्रलोपतन्त्रलोपक्रियालोपाद्यलोपपदलोप न्यून अतिरिक्तविधिविध्यपराधप्रायश्चित्तार्थं सर्वप्रायश्चित्ताहुतिं होष्यामि ओम भूर्भुवस्सुवः स्वाहा प्रजापतये नमः श्री विष्णवे स्वाहा विष्णवे परमात्मने नमः नमो रुद्राय पशुपतये स्वाहा रुद्राय पशुपतये नमः अपपुपस्पृश्य
Namaste all. As you have seen, we have just concluded Homa for Dhumavati. Now they are preparing, the priests are preparing for Purnahuti. Purnahuti is the ritual where we offer the complete prayers at the end of the Homa. And we request you all pray Goddess Dhumavati. We are on 7th day of Navaratri celebrations. She is the goddess Dhumavati, is one of the Dasha Mahavidyas. As I have mentioned earlier, Dhumavati is a one made out of smoke, represented in the form of the old widow, a symbolic presentation of pure potential energy, that is Shakti without Shiva. She dispels poverty, debt, quarrels, misunderstanding, and provide protection against legal actions. Dhumavati, goddess Dhumavati, also dispels all affections with the planet Ketu. Now the priests are preparing for Purnahuti. Please pray, offer your prayers by looking at Purnahuti, and your prayers are going to be conveyed through this Purnahuti. All the essential items for Purnahuti are being shown, and priest is going to offer a one by one item, that is turmeric, kumkumam, and other two items are there, and there is a coconut, dry coconut thing in the red cloth. Please pray for all your wishes. ॐ जातवेदसे सुनवामसोममराति यतो निदहाति वेदः स नः परिषदति दुर्गान् विश्वानावेव सिन्धुन् तामग्निवर्णान्तपथा वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गान् विश्वा पोष्टवृत्तिबहुलानवर्वी भवातोकायतनयाय विश्वाणिनो दुर्गः जातवेदसिन्धन्ननावातुरिदातिपर्षि अग्ने त्रिवन्मनसा गृणानो अस्माकं बोध्यविता प्रतनाजितकं सहमानमग्रमग्निकं हवेम परमार्थस्थात् स नः परषदति दुर्गान् विश्वाक्षामद्देवोजितुरिदात्यग्निः प्रत्नोषि कमीड्योद्धरेषु सनात्तहोदानव्यश्च दत्सि स्वाञ्चाग्ने धनवं पिप्रयस्वाभ्यञ्जसो भगमाय यस्वात् गोभिर्जुष्टमयुजोर्षिक्तन्दवेहेन्द्रविष्णो नागस्य पृष्ठमभितं वसानो वैष्णवीन् लोकैहमादयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमार धीमहि श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती स्वरूपिण्यै दशमहाविद्या स्वरूपिण्यै ललिता महात्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिका स्वरूपिण्यै श्री धूमावत्यम्बिकायै नमः। दिव्यमङ्गलसौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि नमः स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा स्वाहा। ओम श्री धूम बीजाक्षर देवताजी धूमावत्यम्बिकाजी नमो नमः। सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि नमः स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावति स्वाहा। श्री धूमावत्यम्बिकाजी नमो नमः। दिव्य परिमल सुगंध गंधान् धारयामि सौभाग्यद्रव्यं कल्पयामि नमः स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावत्यम्बिकाजी नमो नमः। अतिसुगंध धूपं कल्पयामि नमः स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावत्ति स्वाहा।
ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। धूम बीजाक्षरदेवतायै श्री धूमावत्यम्बिकायै नमो नमः। दिव्यमंगल सौभाग्य द्रव्यं कल्पयामि नमः स्वाहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णादर्विपरापदसु पूर्णा पुनरापता वस्नेव विक्लीनावः इषमोर्जगुं शतक्रतो पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः देवदेवोत्तमायै देवता सार्वभौमायै अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायिकायै पञ्चकृत्यपरायणायै पञ्चब्रह्मस्वरूपिण्यै श्रीदशमहाविद्यास्वरूपिण्यै श्रीधूमावत्यम्बिकायै नमः। समस्तहरिहरदेवताभ्यै नमो नमः। गन्धपुष्पाक्षतकुङ्कुमफलताम्बूलसहितां महापूर्णाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा। ओम सप्तते अग्ने समिधा सप्त जिह्वा सप्त ऋषयः सप्तधाम सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयोनिराप्रणस्वा घृतेन अग्नये सप्तपदे इदं नमः। अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितौ प्रासावीः। धूम बीजाक्षरदेवताजी श्री धूमावत्यम्बिकाजी नमो नमः। यथावशिक्तम् इदं बलिं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि। आवाहित श्री धूमावत्यम्बिकायै नमो नमः। आसनाद्युपचारान् समर्पयामि गन्धाद्युपचारान् समर्पयामि पुष्पाद्युपचारान् समर्पयामि दिव्यमङ्गलपुष्पैः सम्पूजयामि। ओं भवस्य देवस्य पत्नी नमः। ओं सर्वस्य देवस्य पत्नी नमः। ओं ईशानस्य देवस्य पत्नी नमः। ओं वशुपतेर्देवस्य पत्नी नमः। ओं रुद्रस्य देवस्य पत्नी नमः। ओं उग्रस्य देवस्य पत्नी नमः। ओं महदोर्देवस्य पत्नी नमः। ओं श्री धूमावत्यम्बिकायै नमो नमः। ललिता महात्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिकायै नमो नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। दशाङ्गं गुग्गुलोधूपं सुगन्धं सुमनोहरम्। धूम बीजाक्षरदेवतायै श्री धूमावत्यम्बिकायै नमो नमः। अतिसुगन्धधूपमाघ्रापयामि। धूपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। साध्यं त्रिवर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिराप। धूम धूम बीजाक्षरदेवतायै श्री धूमावत्यम्बिकायै नमो नमः। घृतवर्तिदीपं दर्शयामि। धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। भूर्भुवस्सुवः। अमृते अमृतोद्भवे अमृतेश्वरी अमृतवर्षिणी अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा। अमृतं भवतु श्री धूम धूम बीजाक्षरदेवतायै श्री धूमावत्यम्बिकायै नमो नमः। नानाविधफलानि नारिकेलगण्ठद्वयं दादीफलानि एतत्सर्वमृतं महानैवेद्यं निवेदयामि। आचमनीयं समर्पयामि। समस्तोपचारान् समर्पयामि। पूगीफलसमायुक्तं नागवल्लीदलैर्युतं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां कर्पूरताम्बूलं समर्पयामि। समस्तोपचारान् समर्पयामि। ओम बहुग्वै बह्वश्वाजी बह्वजाविकायै बहुव्रीह्यवाजी बहुमाहितिलायै बहुहिरण्यायै बहुहस्तिकायै बहुदासपूरुषायै रजिमत्यै पुष्टिमत्यै बहुरायस्पोषायै
धूम धूम बीजाक्षर देवताजय श्री धूमावत्यंबिकाजय नमो नमः दशमहाविद्यास्वरूपिण्यै नमो नमः ललिता महात्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिकाजय नमो नमः समस्तापराधक्षमापणार्थं सर्वमङ्गलप्राप्त्यर्थं कर्पूरनीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि दिव्यमङ्गलरक्षां धारयामि सर ओम योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावाहन् पशुमान् भवति चन्द्रमा वापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावाहन् पशुमान् यो वेदादोऽसुरः प्रोक्तो वेदान्ते च तस्य प्रकृतिरीनस्य यः परस्य महेश्वरः बीजा धूमावत्यम्बिकायै नमो नमः ललिता महात्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिकायै नमो नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि छत्रं समर्पयामि चामरं बीजयामि नृत्यं दर्शयामि वाद्यं घोषयामि अश्वानारोपयामि समस्तराजोपचार देवोपचार शक्त्योपचार भक्त्योपचार षोडशोपचार पूजाः समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं करोमि त्वां प्रसीद परमेश्वरी अन्यथाचरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् रक्ष रक्ष महेश्वरी धूमावत्यम्बिकायै नमो नमः प्रार्थनापूर्वकं प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान् ते हनागमहिमान् सजन्ते यत्र पूर्वे तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः सदाशास्ते यजमानो हविर्भिः अहेनमानो वरुणेः बौद्धिर्षकं समानाय अस्मात् कुम्भादस्मात् मण्डलाच्चावाहिताः श्रीधूमावत्यम्बिकाः यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम ध्रुपदादिवेन्मुचानः स्विन्नस्नात्विमलादिवा भूतं पवित्रेणेवाद्यं आपशुन्धन्तु मेनसः भूर्भुवस्सु वो भूर्भुवस्सु वो भूर्भुवस्सुवः ओम यम यम कामयते नित्यं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् यो वैतां ब्रह्मणो वेद अमृतेनावृतां पुरीं तस्मै ब्रह्म च ब्रह्मा च आयुः कीर्तिं प्रजां दधु आराध्यमान श्री धूमावत्यम्बिका प्रसादेन सर्वाभीष्टसिद्धिरस्तु मनसि सकलकार्येषु विधेत्वलाभसिद्धिरस्तु उन्नतोन्नतकीर्तिलाभसिद्धिरस्तु यो वैतां ब्रह्मणो वेद अमृतेनावृतां पुरीं तस्मै ब्रह्म च ब्रह्मा च आयुः कीर्तिं प्रजां दधुः Namaste. We thank you all for watching today's event and having the blessings of Goddess. Tomorrow exactly after 12 and a half hours, 8 a.m. IST, we are going to start Baglamukhi Puja and Homa. That is tomorrow morning, that is 8th day and 8th October, Indian Standard Time, 8 a.m. We'll meet you again tomorrow. Till then, thank you very much. Good night and good day. Namaste.
blaming it on others has become such a common occurrence in life. You have not probably come across anyone who doesn't blame on someone or some event or something that happened. But it is important to look into the concept of blaming itself. If you blame, if anyone blames, it means that person is powerless. He doesn't want to accept responsibility. And he is coming from a place of no power. He is giving away his power. He says that he cannot do anything. That's why he keeps blaming it on others. So the moment you find yourself blaming it on others, or blaming the event, blaming the destiny, or blaming your race, blaming your lack of education, or other people blaming other people, whenever you find that somebody is engaged in this game of blaming it on others, you should know that you don't want to be in that frame of mind or be associated with those people who blame others. You don't want to be powerless. So instead of blaming, you get into a state of power and then say, well, I can take control of the situation. I don't have to blame it on anyone, because blaming is not going to do anything at all. On the other hand, I will focus on a solution of the problem. This is a great teaching. You have to, look at yourself and also look at others. And if there is blaming involved, and that is the time that you have to really become alert and then say to yourself, I'm going to get out of here, because I never ever want to be powerless. Because the truth is, regardless of whatever a person thinks about himself or herself, the truth is, you are God. And do you think that God is going to blame it on others? No. He knows that He is in charge. So be in charge. And being in charge is not blaming it on others. God bless. Yogasanas and benefits. Garudasana, eagle pose. Stand with an erect spine with arms to your sides in Tadasana. Bend your knees forward slightly. Balance your body in the left foot and cross your right knee over the left thigh. Bring your hands forward. Place your right arm under your left arm. Bend your arms at the elbows and wrap. Twist your arms together, palms touching each other. Hold the posture for few breaths. Relax yourself from the posture slowly. Follow the same pattern on your left side. Balance your right foot and cross your left knee over the right thigh. Bring your hands forward. Place your left arm under your right arm. Bend your arms at the elbows and wrap. Twist your arms together, palms touching each other. Hold the posture for few breaths. Relax yourself from the posture slowly. Benefits. Garudasana strengthens your thighs, hips, ankles and calves.
It stretches your shoulders and upper back and promotes body balance, focus, and concentration. It improves lung capacity and is helpful for those with lower sciatica. Vatayanasana, horse face pose. Stand straight and bring the right leg up at the knee so that your right heel touches the groin and toes along the left thigh. Now, slowly bend your left knee forward and lower your body till you place your folded right knee on the ground. So, you are now on your right knee and left foot on the floor. Stretch your hands forward. Bring your right arm under your left arm. Bend your arms at the elbows and wrap. Twist your arms together, palms touching each other. Hold the posture for few breaths. Relax yourself from the posture slowly and stand up to Tadasana. Now, follow the same routine on your left side. Stand straight and bring the left leg up at the knee so that your left heel touches the groin and toes along the right thigh. Now, slowly bend your right knee forward and lower your body till you place your folded left knee on the ground. So, you are now on your left knee and right foot on the floor. Stretch your hands forward. Bring your left arm under your right arm. Bend your arms at the elbows and wrap. Twist your arms together, palms touching each other. Hold the posture for few breaths. Relax yourself from the posture slowly and stand up to Tadasana. Benefits. Vatayanasana helps to relieve stiffness from the sacro-iliac area and minor deformity in the hips and thighs. It improves blood circulation in the hip region and also reduces hyperactivity of the kidneys. Ardha Shalabhasana, half locust pose. Lie flat on your stomach with your chin on the floor. Interlock your fingers and place them under your hips near your groin. Lift your right leg straight upwards and simultaneously bend your left leg up with the support of your left knee and rest your left foot on the right thigh. Hold the position for few seconds and return back to normal position. Now, follow the same steps on your left side. Lift your left leg straight upwards and simultaneously bend your right leg up with the support of your right knee and rest your right foot on the left thigh. Hold the position for few seconds and return back to normal position. Benefits. Ardha Shalabhasana strengthens your lower back and stimulates the pelvic organs. It regulates your blood pressure and exercises circulatory, endocrine, nervous, and reproductive systems. Yogasanas and benefits. Dhanurasana, bow pose. Lie flat on your stomach with your legs apart and rest your arms close to your body. Now, fold your knees and take your hands and hold your respective ankles. As you inhale slowly, lift your chest off the ground and expand your chest. Your body is now in the shape of a bow. Inhale and exhale slowly, holding the pose for few breaths. Release your ankles and relax yourself from this position. Benefits. Dhanurasana, the bow pose, stimulates your reproductive system and opens up your neck, shoulders, and chest.
It strengthens your abdominal and back muscles and is an excellent stress buster. Adho Mukha Svanasana, downward facing dog pose. Sit on the floor in Vajrasana, sitting on your heels. Now place your palms on the floor and raise your hip upward and push your legs backward to come to the mountain position. Make sure to keep your hands and legs straight. Slowly bring down your head between your arms and touch your forehead on the floor. Hold the position for few breaths. Relax yourself from the position and come to Shashankasana, child pose. And finally to Vajrasana. Benefits. Adho Mukha Svanasana, known as downward facing dog pose, rejuvenates your system and calms down your brain, relieving stress and depression. It strengthens the spine and the muscles of your arms, shoulders, and legs. It also improves digestion and helps in combating insomnia and fatigue. Bhujangasana, Cobra pose, and Parvatasana, mountain pose. Bhujangasana, Cobra pose. Sit on the floor in Vajrasana, sitting on your heels. Now, place your palms on the floor and raise your body to a straight line. Slowly bring your body forward to the ground and stretch your legs backward, one at a time. Now, slowly lift your upper body, push your chest forward and your head facing upwards. Balance the weight of your body on your palms. This pose is called Bhujangasana. Benefits. Bhujangasana opens up your shoulders and neck and tones your abdominal muscles. It expands your chest and improves blood circulation. It also reduces stress and fatigue and is highly useful for people with respiratory disorders. From the Bhujangasana position, raise your hip upward and push your legs backward to bring your body to a mountain position. Bring your head in between your arms and balance your body weight on your palms and toes. This is called Parvatasana. Benefits. Parvatasana gives you a full body stretch and strengthens the muscles of arms and legs. It reduces mental stress and improves concentration and memory. It also increases blood circulation in the upper spine around the shoulder blades and neck. Utkatasana, chair pose. The asana poses you on an imaginary chair and hence the chair pose or Utkatasana. Stand erect with your feet slightly apart. Stretch your hands in front of you without bending your elbows. Bend your knees and slowly push your pelvis, imagining sitting on a chair. Make sure to keep your hands parallel to the ground. Hold the position for a few seconds. Now slowly return back to normal position. Benefits. Utkatasana strengthens the muscles of your lower back and exercises your spine, chest and hips.
As the pose requires you to focus well, it improves your concentration. Yogasanas and benefits. Double leg raise. Lie flat on your back with your legs close to each other and arms close to your body. Now, inhale and slowly lift both your legs upward to 90 degrees without bending your knees. Hold there for a few breaths, and as you exhale, bring down both the legs back to the ground. Please repeat this process for a few more times. Benefits. Double leg raise stretches your ankles, calves, hamstrings, knees and thighs. It also works on your lower back, hips and neck. Halasana, plow pose. Lie flat on your back with your legs close to each other and arms close to your body. Now, inhale and slowly lift both your legs and stop at 90 degrees. Now, support your back and hip with your palms and bring your legs to 180 degrees over your head till your toes touch the ground behind. Hold this pose for a few breaths. As you exhale, relax and bring back your legs to the front and to the floor slowly. Benefits. Halasana helps fight constipation and stomach ailments. It also cures menstrual disorders. It strengthens and opens up your shoulders, back, neck and abs. It adds flexibility to your backbone and also regulates blood pressure. This asana also calms down your central nervous system and reduces stress and fatigue. Anantasana, side reclining leg lift or Vishnu's pose. Lie flat on your back. Now, turn to your left side and support your head with your left hand bent at the elbow. Slowly catch your right toe with your right hand and lift your right leg to 90 degrees. Try not to bend your knee. Hold the position for few breaths. And relax yourself from the posture. Now, repeat the same on your opposite side. Turn to your left side and support your head with your right hand bent at the elbow. Slowly catch your left toe with your left hand and lift your left leg to 90 degrees. Try not to bend your knee. Hold the position for few breaths. And relax yourself from the posture. Benefits. Anantasana tones up your abdominal muscles and stimulates the immune system. It gently massages and stretches your liver and spleen, promoting detoxification. It reduces excess fat in the hips and thighs and increases blood circulation in leg muscles. This asana strengthens your shoulders and is helpful in treating disorders of the urinary bladder and reproductive organs. Yogasanas and benefits. Supta Virasana, reclining hero pose. Start this asana with a Virasana position.
Hero pose. Bend your upper body backwards, supporting your weight on your elbows. This is followed by balancing your posture on your forearms and wrists. Tilt back your head and place it on the floor. Arc your back as much as possible. Join the tips of your index and thumb fingers to form a ring and place your hands beside your hips. Hold the position for few seconds and then relax. Benefits. Supta Virasana gives a great stretch to your abdomen, thighs, knees, deep hip flexors and ankles. It relaxes tired legs and strengthens the arches of your feet. This asana also acts as a therapeutic treatment for menstrual problems, digestive disorders, flat feet and sciatica. Paryankasana, couch pose. Start this asana with Supta Virasana position, reclining hero pose. As you tilt your head and place it on the floor, fold your hands and clasp respective elbows. Place them above your head on the ground. Arc your back as much as possible. Hold the position for few breaths and relax in Shashankasana and finally Vajrasana. Benefits. Paryankasana, couch pose, opens up your chest and lungs and gently stretches your abdominal organs. This asana benefits the thyroid and parathyroid glands and improves blood circulation. Padmasana, lotus pose. Sit on the floor with your spine straight and legs stretched out. Fold your right knee and place your right foot on the left thigh and vice versa. Your heels should be positioned close to your abdomen. With both your legs crossed, join the tips of your thumb and index finger to form a ring, mudra, and place them on your knees. Close your eyes and focus on your breath. Inhale and exhale slowly and deeply. Hold the position for a minute or two and relax yourself by taking out your crossed legs one by one. Benefits. Padmasana, lotus pose, calms down your mind and improves concentration and focus. It stretches your knees and ankles and adds flexibility to your hips. On regular practice, it helps combat sciatica and menstrual disorders. If practiced during pregnancy upon supervision, it eases your childbirth. This asana also improves your posture and removes excess fat around your thighs and hips. Tulasana, swing or scale pose. Tula,
means balance or scale. This asana is also known as raised lotus pose. To begin this asana, get into Padmasana position, lotus pose. Keep your spine erect and place your palms on the sides of your body on the floor. Inhale and press your palms on the floor. Exhale and try to lift or elevate your body off the ground. Swing your body back and forth while resting on your palms. After a few swings, come back to Padmasana. Relax yourself from the position by taking out your crossed legs one by one and stretch out your legs. Benefits. Tulasana regulates blood flow in your hands, elbows, wrists, chest and shoulders. It strengthens your arms, hands and shoulders. This asana requires your eyes to focus and is helpful for rectifying basic eye imperfections. It also increases body balance and removes uterus disorders. Single leg raise. Lie flat on your back with your legs close to each other and arms close to your body. Now, inhale and slowly lift your right leg upward to 90 degrees without bending your knee. Hold there for a few breaths and as you exhale, bring the leg down to the ground. Now, raise your left leg the same way without bending your knee. Hold there for a few breaths and as you exhale, bring the leg down to the ground. Do it for a few times on both the sides. Benefits. Single leg raise primarily targets and strengthens your abs, hip flexors and lower back. Yogasanas and benefits. Janusirasasana, head to knee forward bend. Sit on the floor with your spine straight and legs stretched out. Fold your right leg at 90 degrees and place your right foot against the inner part of your left thigh. Keep your left leg straight without bending your knee. Inhale and stretch your hands sideward to your shoulder level with your palms facing upward. Bring your hands above your head. Exhale and slowly bend forward to hold your left foot. Try to touch your left knee with your forehead. Hold the position for few seconds. And relax. Repeat the same on your right side. Fold your left leg at 90 degrees and place your left foot against the inner part of your right thigh. Keep your right leg straight without bending your knee. Inhale and stretch your hands sideward to your shoulder level with your palms facing upward. Bring your hands above your head. Exhale
and slowly bend forward to hold your right foot. Try to touch your right knee with your forehead. Hold the position for few seconds and relax. Benefits. Janusirasasana gives greater stretch to your spine, groin, hamstrings and shoulders. It gently massages your abdominal and reproductive organs. This helps in effective digestion and relieves from menstrual and menopausal disorders. This asana also relieves you from headache, fatigue, and acts as a cure for insomnia and sinusitis. Paschimottanasana, seated forward bend pose. Sit on the floor with your spine straight and legs stretched out. Bring your hands sideward to your shoulder level with your palms facing upward and slowly raise your hands above your head. Keep your elbows straight and bend forward to hold your feet. Bend forward as far as you can so that your forehead touches your knees. Keep your legs straight. Hold the position for few seconds and relax. Benefits. Paschimottanasana is an awesome stress reliever. It calms down your mind and removes anxiety and anger. It offers greater stretch to your spine and reduces excess fat from your abdomen. It gently massages and tones your abdominal and pelvic organs. This asana is also believed to increase height. Purvottanasana, upward plank pose. Sit on the floor with your spine straight and legs stretched out. Keep your wrists behind your hips so that the fingers are pointing away from you. Now, breathe in, and as you exhale, push your palms and feet strongly on the ground to lift your hips upward as much as possible. Let your head be held back and balance the posture by stretching your spine. Hold the position for few breaths and relax back to normal position. Benefits. Purvottanasana stretches your ankles, chest and shoulders and strengthens your arms, wrists and legs. It calms down your mind and reduces depression and fatigue. Purvottanasana Variation 2, Reverse Table Pose. Sit on the floor with your spine straight and legs stretched out. Keep your wrists behind your hips so that the fingers are pointing away from you. Bend your legs at knees and place them apart at hips width. Now, breathe in, and as you exhale, push your palms and feet strongly on the ground to lift your hips upward as much as possible. Hang your head backwards and balance the posture by stretching your spine. Your pose resembles a reverse table. Hold the position for few breaths and relax back to normal position. Benefits. This asana gives a deep stretch to your upper body. This highly strengthens all your core muscles and spine. The position adds strength to your arms, wrists, legs and back. It relieves your stress and fatigue, leaving you rejuvenated and energized. Virasana,
Hero Pose. Sit on the floor with your spine straight and legs stretched out. Bend your knees back one by one and place your feet near your body. You will be now sitting on the floor with your feet on your sides. Place your palms on the thighs. Breathe in and out gently. Benefits. Virasana strengthens your feet and thighs. It increases concentration and improves your body posture. Yogasanas and benefits. Vakrasana, twisted pose. Sit straight on the ground and stretch your legs forward. Place your palms on the floor beside your body. Bend your right leg at the knee and bring it closer to your chest. Move your right palm backwards and place it on the ground to support your posture. Now, inhale and slowly lift your left hand to your shoulder level with your palm facing upwards. Exhale and lift your hand upward, bend your elbow and bring your left hand to the right side, twisting your spine. Keep your fingers open. Place your left hand on the outer side of your left knee. Your head must be facing your back. Hold the position for few seconds. Relax and return back to normal position. Now, repeat the same routine on your left side. Bend your left leg at the knee and bring it closer to your chest. Move your left palm backwards and place it on the ground to support your posture. Now, inhale and slowly lift your right hand to your shoulder level and face your palm upwards. Exhale and lift your hand upward, bend your elbow and bring your right hand to the left side, twisting your spine. Keeping your fingers open, place your right hand on the outer side of your right knee. Your head must be facing your back. Hold the position for few seconds. Relax and return back to normal position. Benefits. Vakrasana twisted pose increases flexibility of your spine and vertebrae. It gently massages the abdominal organs and reduces belly fat. It helps in regulating the secretion of digestive juices and acts as a cure for various digestive disorders. Ardha Matsyendrasana, half spinal twist pose. Sit straight on your heels with palms on your thighs, Vakrasana. Bring your left leg over your right leg and place it on the floor. Now, you are sitting on your right heel with your left leg bent at the knee and placed on the right side of your right knee. Balance your posture with your left arm stretched back on the floor. Now, inhale and slowly lift your right hand to your shoulder level, your palm facing upwards. Exhale and lift your hand upward and bring your right hand to your left side, twisting your spine. While keeping your head backwards, stretch your right hand over the left thigh and hold your right toe. Hold the position for few seconds. Inhale and exhale slowly and deeply. Release yourself from the posture and relax in Vajrasana.
Repeat the same steps on your right side. Take out your right leg over your left leg and place it on the floor. Now, you are sitting on your left heel with your right leg bent at the knee and placed on the left side of your left knee. Balance your posture with your right arm stretched back on the floor. Now, inhale and slowly lift your left hand to your shoulder level with your palm facing upwards. Exhale and lift your hand upward and bring your left hand to your right side, twisting your spine. While keeping your head facing your back, stretch your left hand over the right thigh and hold your left toe. Hold the position for few seconds. Inhale and exhale slowly and deeply. Release yourself from the posture and relax in Vajrasana. Benefits. Ardha Matsyendrasana adds flexibility to your spine and hips. It opens up your chest and increases lung capacity. It cleans your internal organs, improves digestion, and aids in detoxification. This asana is known to have therapeutic effect on constipation, menstrual discomfort, diabetes, and urinary tract disorders. Gomukhasana, cow face pose. Sit straight on the floor with your legs stretched out. Now, bend your knees and stack them one upon the other, left knee over the right knee, so that the knees are placed close to each other. Balance your body weight evenly on your sitting bones. Lift your left arm to your shoulder level with your palm facing upwards. Slowly bend your elbow and bring your left hand to your back towards your spine. Bend your right arm at the elbow and bring it to your spine from the bottom. Try to hold your fingers together. Initially, it may be difficult, but as you practice regularly and develop flexibility, you can catch hold of your hands easily. Hold the posture for few seconds and breathe in and out. Holding your hands together, bend down and try to touch your knees with your chin. Release yourself from the posture and relax. Now, perform the same steps on your right side. Bend your knees and stack them one upon the other, right knee over the left knee, so that the knees are placed close to each other. Balance your body weight evenly on your sitting bones. Lift your right arm to your shoulder level and face your palm upwards. Slowly bend your elbow and bring your right hand to your back towards your spine. Bend your left arm at the elbow and bring it to your spine from the bottom. Try to hold your fingers together. Hold the posture for a few seconds and breathe in and out. Holding your hands together, bend down and try to touch your knees with your chin. Release yourself from the posture and relax.
Benefits. Gomukhasana, cow face pose, adds flexibility to your spine and removes any stiffness from the shoulders. It is highly helpful to treat sciatica and stimulates your kidney to treat diabetes. It also reduces stress and anxiety upon regular practice. Yogasanas and benefits. Marjari Asana, cat and cow pose. There are two variations available for this asana. First, let us try the original version. Sit straight on your heels with your palms on your thighs, Vajrasana. Slowly bend forward and extend your hands with your palms facing the floor. Bend your knees at right angle and get on all fours. Your pose now resembles a cat. Now, deeply inhale and lift your chin up. Push your navel downwards and feel the compression in your lower back. Hold this pose for a few seconds. As you exhale, drop your chin down and arc your back up as much as you can. Retaining this pose, relax your lower back. Hold this pose for a few seconds. Get back to the cat pose and repeat the steps a few more times. Once you are done, complete the asana by coming to Shashankasana, hare pose, and finally Vajrasana. Benefits. Marjari Asana, cat and cow pose, gives extreme flexibility to your spine and relaxes your back muscles. It gently massages your abdominal and reproductive organs. It also improves digestion and tones up your abdominal muscles. Cat and cow pose variation 1. Back stretch. Sit straight on your heels with your palms facing inward on your thighs, Vajrasana. Slowly bend forward and extend your hands with your palms on the floor. Bend your knees at right angle and get on all fours. Your pose now resembles a cat. Inhale deeply and stretch your right leg backwards as far as you can without bending the knee. Now, as you exhale, bend back your leg towards the chest. Simultaneously, bring your head towards your chest and try to touch the right knee. Repeat the same steps on your left side. Inhale deeply and stretch your left leg backwards as far as you can without bending the knee. Now, as you exhale, bring your leg and head towards your chest and try to touch the left knee with your head. Do this a few times on each side. Once you are done, come back to cat pose, Shashankasana, cat and cow pose, and finally Vajrasana. Benefits. Cat and cow pose variation 1 gives extreme flexibility to your spine and relaxes your back muscles. It gently massages your abdominal and reproductive organs. It also improves digestion and tones up your abdominal muscles. Cat and cow variation 2. Upper back stretch, shoulder twisting. Sit straight on your heels with your palms on your thighs, Vajrasana. Slowly bend forward and stretch your hands forward with your palms facing the floor. Bend your knees at right angle and get on all fours. Your pose now resembles a cat.
Stretch your right hand upwards without bending your elbow. Now, slowly bring your right hand down to your left side and twist your shoulders. Now, resting your right shoulder on the ground, stretch your left hand upward. Wave it back and forth few times, feeling the stretch in your upper back. Relax and come back to cat pose. Repeat the same steps on your left side. Stretch your left hand upwards without bending your elbow. Slowly, bring your left hand down to your right side and twist your shoulders. Now, resting your left shoulder on the ground, stretch your right hand upward. Wave it back and forth few times, feeling the stretch in your upper back. Relax and come back to cat pose, Sashankasana, hare pose, and finally Vajrasana. Benefits. Cat and cow variation 2 gives extreme flexibility to your spine and relaxes your back muscles. It gently massages your abdominal and reproductive organs. It also improves digestion and tones up your abdominal muscles. Yogasanas and benefits. Viparita Shalabhasana. Lie flat on your stomach and stretch your hands forward above your head. Rest your palms on the floor. Now, raise your alternate hand and leg up. First, lift your right hand and left leg upward. Try not to bend your elbow and knee. Hold the position for few seconds and relax. Then, lift your left hand and right leg upward. Hold the position for few seconds and relax. Lift both your hands and legs upward, balancing your body at your abdomen. Try not to bend your elbows and knees. Benefits. Viparita Shalabhasana keeps your kidneys healthy and stimulates your reproductive and digestive systems. The asana also strengthens and stretches your shoulder, chest, arms, legs, and abdomen. Shashankasana, child pose. Sit straight on your heels with palms on your thighs, Vajrasana. Slowly bend forward and stretch your hands forward, palms facing down. Stretch till your forehead touches the floor. Breathe in and breathe out slowly. Now, bring your hands backward, parallel to your feet. Join the tip of your index finger and thumb to form a ring. Hold the position for a minute or two. Relax back to normal position. Benefits. Shashankasana calms down your body, mind, and soul. It gently massages your abdominal organs and stretches your spine. This stimulates easy digestion and excretion of waste from your body. Shashankasana, extended child's pose. Sit straight on your heels with palms on your thighs, Vajrasana. Slowly bend forward and stretch your hands forward, palms facing down. Lift your hip upwards while kneeling on the floor and stretch forward till your forehead touches the ground. Breathe in and out slowly.
Hold the position for a minute or two. Relax back to normal position. Benefits. Extended child's pose offers greater stretch to your spine, hips, thighs and ankles. It is an awesome stress reliever. This asana calms down your brain and puts an end to your fatigue. Hip rotation on all fours. Sit straight on your heels with palms on your thighs, Vajrasana. With the support of your palms and knees, form the table pose. After getting on all fours with your palms facing the ground, inhale and slowly lift your hip upward. As you exhale, slowly rotate your hips clockwise and anti-clockwise direction 3 times. Relax and get back to Vajrasana position. Raise up. Relax yourself by lying flat on your stomach. Now, bend your legs at the knees, 90-degree angle at your hip. Place your palms on the floor and raise up. Eye exercise. Procedure. Bend your legs at your knees and sit on your feet. Interlock your fingers with your thumbs facing upward. Raise your hand to the level of your eyes. Concentrate your eyes on the thumbs. Move your hands to your right and left sides while focusing your vision on the thumbs. Repeat the exercise 4 times. 1, 2, 3, 4. Up and down. Now, raise your hands above your forehead and bring them down till the knees while focusing your vision on the thumbs. Repeat the exercise 4 times. 1, 2, 3, 4. Diagonal, right to left. Now, raise your hands diagonally to your upper right side and move them down to your left knee while focusing your vision on the thumbs. Repeat the exercise 4 times. 1, 2, 3, 4. Diagonal, left to right. Now, raise your hands diagonally to your upper left side and move them down to your right knee while focusing your vision on the thumbs. Repeat the exercise 4 times. 1, 2, 3, 4. Rotation.
rotate your hands clockwise and anti-clockwise for 4 times while focusing your vision on the thumbs. Repeat the exercise 4 times. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zoom. Raise your hands to your eye level. Bring them closer to your eyes and move back to the previous position while focusing your vision on the thumbs. Repeat the exercise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Now rub your palms together. Place them gently on closed eyelids. Benefits: eye exercises improve eyesight, concentration, peripheral vision, and reduce chances of eye diseases. These exercises calm down the mind and relieve eye strain from prolonged usage of computers. Palming is an ancient technique that promotes optic nerve relaxation and improves vision. Neuromuscular breathing. Procedure: bend your legs at your knees and sit on your feet. Fold your fingers with your thumbs inside and keep them in the groin. Inhale deeply and then exhale as you bring your chest forward to your knees. Hold the position for few seconds. Raise upright to your normal position. Repeat the exercise 4 times. One, 2, 3, 4. Benefits: this exercise improves lung and liver functions. It also helps to increase blood flow to your pelvic area and stomach. It further aids bowel movement and promotes better digestion. ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतः सुरुचो वेनावः स बुद्धिजावुपमास्य विष्ठास्ततश्चयो निमसतश्च विवः नाके सुपर्णमुपयत्पदन्तकं हृदा वेनन्तोऽभ्यचक्षतत्वा हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकनं भरण्यम् आप्यायस्वसमेतु ते विश्वदस्वामवृष्णियम् भवावाजस्य सङ्गथे यो रुद्रो अग्नव्यो अप्सयवोषधीषयो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पागं सुरे इन्द्रं विश्वाभिवृधन् समुद्रव्यचसङ्गिरः रथीतमगं रथीनां वाजानागुं सत्पतिं पतिं भूर्भवस्सुवः आपो वाजिदगुं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः पशवापोन्नमापोऽमृतमापः सम्राडापो गिराडापस्वराडापश्छन्दागस्यापो ज्योतिगुष्यापो यजोगुष्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूद्भवस्तु वराप ॐ अपः प्रणयति श्रद्धा वा आपः
श्रद्धामेवारभ्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति यज्ञो वा आपः यज्ञमेवारभ्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति वज्रो वा आपः वज्रमेव भ्रातृव्येभ्यः प्रहृत्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति आपो वै रक्षोऽग्निः रक्षसा महत्यै अपः प्रणयति आपो वै देवानां प्रियन्धाम देवानामेव प्रियन्धाम प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति आपो वै सर्वा देवताः देवता देवारभ्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति आपो वै शान्ताः शान्ताभिरेव शिशुजगुं शमयति देवो वस्तवितोत्पुनातो अच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः सहिरत्नानि दासुषे सुवादिभिदाभगः तं भागं चित्रमीमहे कूर्चाग्रैराक्षसान् घोरान् सिन्धिकर्मविघातिनः तामर्पयामि कुम्भेऽस्मिन् साफल्यं गुरुकर्मणि वृक्षराजसमद्भूता शाखायाः पल्लवत्वचः युष्मान् कुम्भेश्वर्पयामि सर्वदोषापणुत्तये नारिकेलसमद्भूतत्रिनेत्रहरसंविदा शिखया दुरिदं सर्वं पापं पीडान्तमेनुदा सर्वे समुद्रा सलिलस्तीर्था जनदाहृदाः आजान्तु देव पूजार्थं दुरिदक्षजकारकाः इमं मे वरुणश्रुतिहवमद्या च मृडया त्वामवस्युराचके तत्त्वायामि ब्रह्मणावन्तमानस्तदाशास्तेदमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्यरुषकं समानाजः प्रमोषीः अस्मिन् कुम्भे सकलतीर्थाधिपतिं श्रीवरुणं ध्यायामि श्रीवरुणम् आवाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्येदमासनं सकलाराधनैस्वर्चिताम् पुनर्नो देव्यदिति स्पृणोतो पुनर्वसूनः पुनरेतां यज्ञं पुनर्नो देवा अभियन्तु सर्वे पुनः पुनर्वो हविषायिदामः एवान देव्यदितिरनर्वा विश्वस्य भर्त्री जगतः प्रतिष्ठा पुनर्वसु हविषा वर्धयन्ति प्रियं देवानामप्येतुपासः अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां पुनर्वसु नक्षत्रदेवताम् अदितिं ध्यायामि अदितिम् आवाहयामि पुनर्नो देव्यदिति स्पृणोतो पुनर्वसो नः पुनरेतां यज्ञं पुनर्नो देवा अभियन्तु सर्वे पुनः पुनर्वो हविषायिदामः एवान देव्यदितिरनर्वा विश्वस्य भर्त्री जगतः प्रतिष्ठा पुनर्वसु हविषा वर्धयन्ति प्रियं देवानामप्येतुपासः स्वाहा देव्यदिति स्पृणोतो पुनर्वसो नः पुनरेतां यज्ञं पुनर्नो देवा अभियन्तु सर्वे पुनः पुनर्वो हविषायिदामः एवान देव्यदितिरनर्वा विश्वस्य भर्त्री जगतः प्रतिष्ठा पुनर्वसु हविषा वर्धयन्ति प्रियं देवानामप्येतुपासः स्वाहा पुनर्नो देव्यदिति स्पृणोतो पुनर्वसो नः पुनरेतां यज्ञं पुनर्नो देवा अभियन्तु सर्वे पुनः पुनर्वो हविषायिदामः एवान देव्यदितिरनर्वा विश्वस्य भर्त्री जगतः प्रतिष्ठा पुनर्वसु हविषा वर्धयन्ति प्रियं देवानामप्येतुपासः स्वाहा अदित्यै स्वाहा पुनर्वसुभ्यागः स्वाहा अभूत्यै स्वाहा प्रजात्यै स्वाहा पुनर्वसु नक्षत्रदेवता आदित्याय नमः ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं परस्ताद्विसीमतः सुरुचो वेनावः स बुद्धिजावुपमास्य विष्ठास्ततश्चयो निमशतश्च विवः नाके सुपर्णमुपयत्पदन्तकं हृदा वेनन्तोऽभ्यचक्षतत्वा हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकनं भरण्यम् आप्यायस्वसमे सुते विश्वदस्वामवृष्णियं भवावादस्य सङ्गथे यो रुद्रो अग्नव्यो अप्सयवोषधीषयो रुद्रो विश्वाभुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पार्वं सुरे इन्द्रं विश्वाविवृधन् समुद्रव्यचसङ्गिरः रथीतमगुं रथीनां वाजानागुं सत्पतिं पतिं भूर्भवस्सुवः आपो वाजिदगुं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः पशवापोन्नमापोऽमृतमापः सम्राडापो गिराडापस्वराडापश्छन्दागस्यापो ज्योतिगुष्यापो यजोगुष्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भवस्तु वराप ओम् अपः प्रणयति श्रद्धा वा आपः श्रद्धामेवारभ्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति यज्ञो वा आपः यज्ञमेवारभ्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति वज्रो वा आपः वज्रमेव भ्रातृव्येभ्यः प्रहृत्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति आपो वै रक्षोऽग्निः रक्षसा महत्यै अपः प्रणयति आपो वै देवानां प्रियन्धाम देवानामेव प्रियन्धाम प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति आपो वै सर्वा देवताः देवता देवारभ्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति आपो वै शान्ताः
शान्ताभिरेव शिशुजगुं शमयति देवो वस्तवितोत्पुनातो अच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः सहिरत्नानि दासुषे सवादिविदाभगः तं भागं चित्रमीमहे कूर्चाग्रैराक्रसान् घोरान् सिन्धिकर्मविघातिनः तामर्पयामि कुम्भेऽस्मिन् साफल्यं गुरुकर्मणि वृक्षराजसमद्भूता शाखायाः पल्लवत्वचः युष्मान् कुम्भेश्वर्पयामि सर्वदोषापणुत्तये नारिकेलसमद्भूतत्रिनेत्रहरसंविदा शिखया दुरिदं सर्वं पापं पीडान्तमेनुदा सर्वे समुद्रा सलिलतीर्था जनदाहृदाः आजान्तु देव पूजार्थं दुरिदक्षजकारकाः इमं मे वरुणश्रुतिहवमद्या च मृडया त्वामवस्युराचके तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाघास्तेदमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्यरुषकं समानाजः प्रमोषीः अस्मिन् कुम्भे सकलतीर्थाधिपतिं श्रीवरुणं ध्यायामि श्रीवरुणम् आवाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्येदमासनं सकलाराधनैस्वर्चिताम् ओम अग्निर्नः पातु कृत्तिकाः नक्षत्रं देवमिन्द्रियम् इदमासां विचक्षणं हविरासं जुहोदना यस्य भान्ति रश्मयो यस्य केतवः यस्येवा विश्वाभवनानि सर्वाः सकर्तिकाभिरभिदं वसानः अग्निर्नो देवस्तु विदे दधातु अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां कृत्तिका नक्षत्रदेवताम् अग्निम् आवाहयामि प्रजापते रोहिणी वेत पत्नी विश्वरूपा बृहती चित्रभानुः सा नो यज्ञस्य विदे दधातु यथा जीवेम शरदश्वीराः रोहिणी देव्युदगात् तुरस्तात् विश्वारूपाणि प्रतिमोदमाना प्रजापतिं हविषा वर्धयन्ति प्रिया देवानामुपयातु यज्ञम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां रोहिणी नक्षत्रदेवतां प्रजापतिं ध्यायामि प्रजापतिम् आवाहयामि सोमो राजा मृगशीर्षेण आगन् शिवन्नक्षत्रं प्रियमस्य धाम आप्यायमानो बहुधा जनेषु रेतः प्रजायदमाने ददातु यत्ते नक्षत्रं मृगशीर्षमस्ति प्रियगुं राजन् प्रियतमं प्रियाणां तस्मै ते सोम हविषा विधेम शन्नजेधिद्युपदेशं चतुष्पदे अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां मृगशिरो नक्षत्रदेवतां सोमं ध्यायामि सोममावाहयामि आर्द्रजा रुद्रः प्रथमानयेति श्रेष्ठो देवानां प्रतिरग्नियानां नक्षत्रमस्य हविषा विधेम मानः प्रजागमृषन्नोद वीरान् हेति रुद्रस्य परिणो वृणक्तो आर्द्रा नक्षत्रं हृतागं हविर्नः प्रमुञ्चमानौ दुरितान् विश्वा अपाघशकं सन्नुदतामर्रातिम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् आर्द्रा नक्षत्रदेवतां श्रीरुद्रं ध्यायामि श्रीरुद्रम् आवाहयामि पुनर्नो देव्यदिति स्पृणोतो पुनर्वसूनः पुनरेतां यज्ञं पुनर्नो देवा अभियन्तु सर्वे पुनः पुनर्वो हविषा इदामः एवान देव्यदितिरनर्वा विश्वस्य भर्त्री जगतः प्रतिष्ठा पुनर्वसु हविषा वर्धयन्ति प्रियं देवानामप्येतुपासः अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां पुनर्वसु नक्षत्रदेवताम् अदितिं ध्यायामि अदितिम् आवाहयामि बृहस्पतिः प्रथमं जायमानः तिष्यन्नक्षत्रमभिदं बभूव श्रेष्ठो देवानां प्रतनासु जिष्णुः दिशो न सर्वाभयन्नोऽस्तु तिष्यः पुरस्तादुतमध्यतो नः बृहस्पतिर्नः परिपातु पश्चात् बाधेतान्तेषो भयं कृणुतां सुवीर्यस्य पतयस्याम अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां पुष्यनक्षत्रदेवतां बृहस्पतिं ध्यायामि बृहस्पतिम् आवाहयामि इदगुं सर्पेभ्यो हविरस्तु जुष्टम् आश्लेषादेशामनुयन्ति चेतः ये अन्तरिक्षं पृथिवीं क्षियन्ति तेन सर्पासोऽहवमागमिष्ठाः ये रोचने सूर्यस्यापि सर्पाः ये दिवं देवीवनु सञ्चरन्ति येषामाश्लेषानुयन्ति कामम् तेभ्यः सर्पेभ्यो मधुमज्जुहोमि अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् आश्लेषा नक्षत्रदेवतां सर्पराजं ध्यायामि सर्पराजम् आवाहयामि उपहूताः पितरो ये मघासु मनोजवसत्सु कृतस्सु कृत्याः तेनो नक्षत्रे वमागमिष्ठाः स्वधाभिर्यज्ञं प्रेतं जुषन्तां ये अग्निदग्धाः ये मल्लोकं पितरः क्षियन्ति यागश्च विद्मयागम् उच न प्रविद्मा मघासु यज्ञकं सुकृतं जुषन्ताम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां मघा नक्षत्रदेवतां पितॄन् ध्यायामि आवाहयामि गवां पतिः फल्गुनी नामसि त्वं तर्यमन्वरुणमित्रचारो तन्त्वा वयगुं सनितारगुं सनीनां जीवा जीवन्तमुपसंविषेम ये नेमा विश्वा भुवनानि सञ्चिता यस्य देवान् संयन्ति चेतः
अर्यमाराजाचरस्तु विष्मान् फल्गुनी नाम शभोरोरवीति अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां पूर्व फल्गुनी नक्षत्र देवतां अर्यमणं ध्यायामि अर्यमणम् आवाहयामि श्रेष्ठो देवानां भगवो भगासि तत्त्वाविदुः फल्गुनीस्तस्य वित्तात् अस्मभ्यं क्षत्रमजरगुं सवीर्यं गोमदश्नुवदुपसन्नु देह भगोः दाता भगजित्प्रदाता भगो देवी फल्गुनीराविवेश भगस्येत्तं बसवङ्कमेव यत्र देवी सधमादं वदेम अस्मिन् कुम्भे स्यां प्रतिमायाम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रदेवतां भगं ध्यायामि आवाहयामि आयातु देवस्य वितोपजातु हिरण्यजेन सुवृतारथेन वहन हस्तकं सुभगं विद्मनाभसं प्रयच्छन्तं पपरिं पुञ्जमच्छ हस्तप्रयच्छत्तमृतं वसीयः दक्षिणेन प्रतिगृह्णीमयेन दातारमद्य सविता विधेय यो नो हस्ताय प्रसवाति यज्ञम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां हस्तनक्षत्रदेवतां सवितारं ध्यायामि सवितारम् आवाहयामि त्वष्टा नक्षत्रमभ्येति चित्रां सुभगं संयुवतिकुं रोचमानां निवेशयन्नमृतान् मर्त्यागश्च रूपाणि विगुंशन् भवनान् विश्वा तन्नस्त्वष्टास्तु चित्रा विजष्टां तन्नक्षत्रं भूरिदास्तु मह्यं तन्नः प्रजां वीरवतीगुं सनोतो गोभिर्नो अश्वैः समनक्तु यज्ञम् अस्मिन् कुम्भे स्यां प्रतिमायां चित्रा नक्षत्रदेवतां त्वष्टारं ध्यायामि आवाहयामि वाजुर्नक्षत्रमभ्येति निष्ट्यां दिग्भशृङ्गो वृषभो रोरुवाणः समीरयन्भवनामातरिष्वा अपद्देशागुंसनुजतामरातीः तन्नो वायुस्तुनिष्ट्या शृणोतु तन्नक्षत्रं भूरिदास्तु मह्यं तन्नो देवासो अनुजानन्तु कामं यथा तरेम दुरितानि विश्वा अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां स्वाती नक्षत्रदेवतां वायुं ध्यायामि स्वाती नक्षत्रदेवतां वायुम् आवाहयामि दूरमस्मच्छत्रवोजन्तु भीताः तदिन्द्राग्ने कृणतां तद्विशाखे तन्नो देवानमदन्तु यज्ञं पश्चात् पुरस्तादभजन्नोऽस्तु नक्षत्राणामधिपत्नी विशाखे श्रेष्ठाविन्द्राग्नि भुवनस्य गोपौ विशोचशत्रूनुपबाधमानौ अपक्षुधन्नुदतामरातिम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां विशाखा नक्षत्रदेवते इन्द्राग्नीं ध्यायामि इन्द्राग्नीम् आवाहयामि ऋद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसद्य मित्रं देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शरञ्जीवेव शरदस्य वीराः चित्रं नक्षत्रमुदगात् पुरस्तात् अनुराधासयति यद्वदन्ति तन्मित्रयेति पथिभिर्देव जानैः हिरण्यजीर्विततैरन्तरिक्षे अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् अनुराधा नक्षत्रदेवतां मित्रं ध्यायामि मित्रम् आवाहयामि इंद्रो ज्येष्ठामणुनक्षत्रमेति यस्मिन् वृत्रं वृत्रतौर्ये ततारा तस्मिन् वजममृदन्दुहानाः कृधन्तरे मधुरितन्दुरिष्टिं पुरन्दराज वृषभाज धृष्णवे अषाढाय सहमानाज मीढुषे इंद्राय ज्येष्ठा मधुमद्दुहाना उरुङ्कृणोति गजमानाज लोकम् अस्मिन् कुम्भे स्यां प्रतिमायां ज्येष्ठा नक्षत्रदेवताम् इन्द्रं ध्यायामि आवाहयामि मूलं प्रजां वीरवतीं विदेय पराचेतु निर्ऋतिः पराचा गोभिर्नक्षत्रमुषुभिः समक्तम् आर्भोजाद्यजमानाजवश्यम् आहर्नो अद्यस विदेश दातु मूलन्नक्षत्रमिति यद्विदन्ति पराचीं वाचा निर्ऋतिन्नुदामि शिवं प्रजाजी शिवमस्तु मह्यम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां मूलनक्षत्रदेवतां प्रजापतिं ध्यायामि आवाहयामि या दिव्या वःपयसा सम्बभूवुः या अन्तरिक्ष उतपार्थिवीर्याः यासामषाढानि यन्ति कामम् तानापश्यग्गस्यो नाभवन्तो याश्च कूप्या याश्च राज्याः समुद्रयाः याश्च वैशन्तीरुतप्रासचीर्याः यासामषाढा मधुपक्षयन्ति तानापश्यग्गस्यो नाभवन्तो अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां पूर्वाषाढा नक्षत्रदेवताः अपः ध्यायामि अपः आवाहयामि तन्नो विश्वे उपशृण्वन्तु देवाः सदषाढाभिसंयन्तु यज्ञं तन्नक्षत्रं प्रसदां वशुभ्यः कृषर्वेष्टिर्यजमानाय कल्पतां शुभ्राः कन्याजुवतयः सुपेशतः कर्मकृतः सुकृतो वीर्यावतीः विश्वान् देवान् हविषा वर्धयन्तीः अषाढाः काममुपजान्तु यज्ञम्
अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् उत्तराषाढा नक्षत्रदेवतां विश्वान् देवान् ध्यायामि विश्वान् देवान् आवाहयामि शृण्वन्ति श्रोणाममृतस्य गोपां पुण्यामस्यामुपशृणामि वातं महीं देवीं विष्णुपत्नीमजोर्यां प्रतीचीमेनागुं हविषा इदामः श्रेधा विष्णुरुगाजो विचक्रमे महीं दिवं पृथिवीमन्तरिक्षं तच्छोणैति श्रवीच्छमाना पुण्यग्श्लोकैदमानाय गृह्णवती अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां श्रवणनक्षत्रदेवतां श्री महाविष्णुं ध्यायामि आवाहयामि अष्टौ देवा वसवः सोम्यासः सहस्रो देवी रजरा सविष्ठाः ते यज्ञं पान्धरजसः परस्तात् संवत्सरेण ममर्दग्गः स्वस्ति यज्ञन्नः पान्धवसवः पुरस्तात् दक्षिणतोऽभियन्तश्रविष्ठाः पुण्यन्नक्षत्रमभिधं विशाम मानो राधिरघशकुं सागन् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां श्रविष्ठा नक्षत्रदेवतां वसून् ध्यायामि आवाहयामि क्षत्रस्य राजा वरुणोऽधिराजः नक्तन्नो नक्षत्रं हृदभिजग्जुषानं दीर्घमाजस्मृतिरद्धेशजानि अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां शतभिषं नक्षत्रदेवतां श्रीवरुणं ध्यायामि श्रीवरुणम् आवाहयामि अजयेकपादुदगात् तुरस्तात् विश्वाभूतानि प्रतिमोदमानः तस्य देवाः प्रसवयन्ति सर्वे प्रोष्ठपदासो अमृतस्य गोपाः विभ्राजमानः समिधान उग्रः आन्तरिक्षमरुहत गन्द्यां तकं सोऽद्यं देवमतमेकपादं प्रोष्ठपदासो नयन्ति सर्वे अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां पूर्वप्रोष्ठपदा नक्षत्रदेवताम् अजयेकपादं ध्यायामि अजयेकपादम् आवाहयामि अहिर्बुध्नयः प्रथमानयेति श्रेष्ठो देवानामुतमानुषाणां तं ब्राह्मणाः स्वामपाः सौम्यासः प्रोष्ठपदासो अभिरक्षन्ति सर्वे तत्त्वारयेकमभिकर्म देवाः प्रोष्ठपदासीति यान् वदन्ति ते बुद्धयं परिषद्यग्स्तुवन्तः अहिगुं रक्षन्ति नमसोपसद्या अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् उत्तरप्रोष्ठपदा नक्षत्रदेवताम् अहिर्बुद्धयं ध्यायामि अहिर्बुद्धयम् आवाहयामि पोषारेवत्यन्वेति बन्धाम् पुष्टिपति पशुपावादवस्यौ इमानि हव्या प्रेतादुषाणा सुगैर्नोयानैर्वजाता यज्ञम् क्षुत्रान् वृषोण्डक्षुतरेवतीनः गावो नो अश्वागुम् मण्डेतु पूषा अन्नकुम् रक्षन्तो बहुधा विरूपम् वाचकुम् सनुता इदमानाय यज्ञम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां रेवती नक्षत्रदेवतां पूषणं ध्यायामि पूष्णम् आवाहयामि तदश्विनावश्वयुजोपजातां शुभङ्गमिष्टौ सुयमेभिरश्वैः सन्नक्षत्रकुं विचाजन्तौ मद्वासं प्रक्तौ यजुषा समक्तौ तौ देवानां भिरजौ हव्यवाहौ विश्वस्य दोदावमृतस्य गोपौ तौ नक्षत्रं जुजुषा नोपजातां नमोऽश्वभ्यां कृणमोऽश्वयुभ्याम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् अश्विनी नक्षत्रदेवताम् आश्वयुजौ ध्यायामि आश्वयुजौ आवाहयामि अपपाप्मानं भरणेर्भरन्तो तद्यमो राजा भगवान् विचष्टां लोकस्य राजा महतो महान् हि सुगन्धः पान्थामुभयं गृणोतु यस्मिन् नक्षत्रे जमयति राजा यस्मिन्नेनमभ्यषञ्चन्त देवाः तस्य चित्रकं हविषा इदाम अपपाप्मानं भरणेर्भरन्तो अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् अपभरणी नक्षत्रदेवतां यमधर्मराजं ध्यायामि यमधर्मराजम् आवाहयामि 28 नक्षत्रदेवताभ्यो नमः अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् अभिजिन् नक्षत्रदेवतां ब्रह्माणं ध्यायामि ब्रह्माणम् आवाहयामि कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरण्यन्त 28 नक्षत्रदेवताभ्यो नमः आसनार्थं रत्नसिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि 28 नक्षत्रदेवताभ्यो नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरण्यन्त 28 नक्षत्रदेवताभ्यो नमः दिव्यमङ्गलवस्त्रोत्तरीयं समर्पयामि उपवीताभरणार्थे पुष्पाणि समर्पयामि गन्धकुङ्कुमाक्षतान् समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि
ఓం వరుణాయ నమః ఓం ప్రచేతసే నమః ఓం స్వరూపిణే నమః ఓం అపాంపతయే నమః ఓం మకరవాహనాయ నమః ఓం జలాధిపతయే నమః ఓం పాశహస్తాయ నమః ఓం తీర్థరాజాయ నమః ఓం శ్వేతఛత్రధరాయ నమః ఓం అనర్ఘమణిభూషణాయ నమః ఓం యాతసాంపతయే నమః ఓం వాయునిరతిమధ్యస్థాయ నమః ఓం వాల్మీకీదాతాయ నమః ఓం మునిపుంగవాయ నమః ఓం వరుణమూర్తయే నమః ఓం కృత్తికా నక్షత్రదేవతాయై అగ్నజే నమః ఓం రోహిణీ నక్షత్రదేవతాయై ప్రజాపతయే నమః ఓం మృగశిరో నక్షత్రదేవతాయై సోమాయ నమః ఓం ఆర్ద్రా నక్షత్రదేవతాయై శ్రీరుద్రాయ నమః ఓం పునర్సూ నక్షత్రదేవతాయై అదిత్యై నమః ఓం పుష్య నక్షత్రదేవతాయై బృహస్పతయే నమః ఓం ఆశ్లేష నక్షత్రదేవతాయై సర్పరాజాయ నమః ఓం మఘా నక్షత్రదేవతాభ్యః పితృభ్యో నమః ఓం పూర్వఫల్గుణీ నక్షత్రదేవతాయై అర్యమ్నే నమః ఓం ఉత్తరఫల్గుణీ నక్షత్రదేవతాయై భగాయ నమః ఓం హస్త నక్షత్రదేవతాయై సవిత్రే నమః ఓం చిత్రా నక్షత్రదేవతాయై త్వష్ట్రే నమః ఓం స్వాతి నక్షత్రదేవతాయై వాజవే నమః ఓం విశాఖా నక్షత్రదేవతే ఇంద్రాగ్నిభ్యాం నమః ఓం అనురాధా నక్షత్రదేవతాం మిత్రాయై నమః ఓం జ్యేష్ఠా నక్షత్రదేవతాయై ఇంద్రాయ నమః ఓం మూల నక్షత్రదేవతాయై ప్రజాపతయే నమః ఓం పూర్వాషాఢా నక్షత్రదేవతాభ్యః అభ్యో నమః ఓం ఉత్తరాషాఢా నక్షత్రదేవతాభ్యః విశ్వేభ్యో దేవేభ్యో నమః ఓం శ్రవణ నక్షత్రదేవతాయై శ్రీ మహావిష్ణవే నమః ఓం శ్రవిష్ఠా నక్షత్రదేవతాభ్యః వసుభ్యో నమః ఓం సుదభిషంగ్ నక్షత్రదేవతాయై వరుణాయ నమః ఓం పూర్వప్రోష్టపదా నక్షత్రదేవతాయై అజయేకపాదాయ నమః ఓం ఉత్తరప్రోష్టపదా నక్షత్రదేవతాయై అహిర్బుద్ధ్యాయై నమః ఓం రేవతీ నక్షత్రదేవతాయై పూష్ణే నమః ఓం అశ్వినీ నక్షత్రదేవతాభ్యాం ఆశయుభ్యాం నమః ఓం అపభరణీ నక్షత్రదేవతాయై ధర్మరాజాయ నమః ఓం అభిజిన్ నక్షత్రదేవతాయై బ్రహ్మణే నమః కృత్తికా నక్షత్ర ప్రవృతి అభవరణ్యంత అష్టావింశతి నక్షత్రదేవతాభ్యో నమః నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాణి సమర్పయామి ఓం యత్పురుషం యదసుః కతిధా వ్యకల్పయన్ ముఖం కిమస్య కౌ బాహు కావూరోపాదా ఉచ్యేతే అష్టావింశతి నక్షత్రదేవతాభ్యో నమః అతిసుగంధధూపమాఘ్రాపయామి బ్రాహ్మణోऽస్య ముఖమాసీత్ బాహోరాజన్యః కృతः ఊరో తదస్య యద్వైశ్యः పద్భ్యాగం శూద్రో అజాయత కృత్తికా నక్షత్ర ప్రభృతి అపభరంజంత అష్టావింశతి నక్షత్రదేవతాభ్యో నమః ఘృతవత్తి దీపం దర్శయామి ధూపదీపానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి భూద్భవస్తువః చంద్రమా మనసో జాతః చక్షో సూర్యో జాయత ముఖాదింద్రశ్చాగ్నిశ్చ ప్రాణాద్వాయురజాయత కృత్తికా నక్షత్ర ప్రభృతి అవభరణ్యంత అష్టావింశతి నక్షత్రదేవతాభ్యో నమః నానావిధ ఫలసమూహాని ఏతత్సర్వం నివేదయామి ఆచమనీయం సమర్పయామి పూగీ ఫలసమాయుక్తం నాగవల్లీదలయుతం కర్పూరచోర సంయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం నాభ్యాసీదంతరిక్షం శీర్ష్ణాద్యౌ సమవర్తత పద్భ్యాం భవమిర్దిశ్రోత్రాత్ తథా లోకాగం అకల్పయన్ కృత్తికా నక్షత్ర ప్రభృతి అపహరణ్యంత అష్టావింశతి నక్షత్రదేవతాభ్యో నమః ఆసనార్థం రత్నసింహాసనం సమర్పయామి పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి ఆచమనీయం సమర్పయామి అష్టావింశతి నక్షత్రదేవతాభ్యో నమః శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి స్నానానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి కృత్తికా నక్షత్ర ప్రభృతి అపభరణ్యంత అష్టావింశతి నక్షత్రదేవతాభ్యో నమః దివ్యమంగళ వస్త్రోత్తరీయం సమర్పయామి ఉపవీత ఆభరణార్థే పుష్పాణి సమర్పయామి గంధ కుంకుమాక్షతాన్ సమర్పయామి పుష్పమాలాం సమర్పయామి పుష్పైః పూజయామి ఓం వరుణాయ నమః ఓం ప్రచేతసే నమః ఓం స్వరూపిణే నమః ఓం అపాంపతయే నమః ఓం మకరవాహనాయ నమః ఓం జలాధిపతయే నమః ఓం పాశహస్తాయ నమః ఓం తీర్థరాజాయ నమః ఓం శ్వేతఛత్రధరాయ నమః ఓం అనర్ఘమణిభూషణాయ నమః ఓం యాతసాంపతయే నమః ఓం వాయునిరతిమధ్యస్థాయ నమః ఓం వాల్మీకీదాతాయ నమః
ओम मुनिपुंगवाय नमः ओम वरुणमूर्तये नमः ओम कृत्तिका नक्षत्र देवतायै अग्नये नमः ओम रोहिणी नक्षत्र देवतायै प्रजापतये नमः ओम मृगशिरो नक्षत्र देवतायै सोमाय नमः ओम आर्द्रा नक्षत्र देवतायै श्रीरुद्राय नमः ओम पुनर्सु नक्षत्र देवतायै आदित्यै नमः ओम पुष्य नक्षत्र देवतायै बृहस्पतये नमः ओम आश्लेषा नक्षत्र देवतायै सर्पराजाय नमः ओम मघा नक्षत्र देवताभ्यः पितृभ्यो नमः ओम पूर्वफल्गुनी नक्षत्र देवतायै अर्यम्ने नमः ओम उत्तरफल्गुनी नक्षत्र देवतायै भगाय नमः ओम हस्त नक्षत्र देवतायै सवित्रे नमः ओम चित्रा नक्षत्र देवतायै त्वष्ट्रे नमः ओम स्वाति नक्षत्र देवतायै वाजवे नमः ओम विशाखा नक्षत्र देवते इंद्राग्निभ्यां नमः ओम अनुराधा नक्षत्र देवतां मित्रायै नमः ओम ज्येष्ठा नक्षत्र देवतायै इंद्राय नमः ओम मूल नक्षत्र देवतायै प्रजापतये नमः ओम पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र देवताभ्यः अभ्यो नमः ओम उत्तराषाढ़ा नक्षत्र देवताभ्यः विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम श्रवण नक्षत्र देवतायै श्री महाविष्णवे नमः ओम श्रविष्ठा नक्षत्र देवताभ्यः वसुभ्यो नमः ओम सदभिषं नक्षत्र देवतायै वरुणाय नमः ओम पूर्वप्रोष्ठपदा नक्षत्र देवतायै अजयकपादाय नमः ओम उत्तरप्रोष्ठपदा नक्षत्र देवतायै अहिर्बुद्धियायै नमः ओम रेवती नक्षत्र देवतायै पूष्णे नमः ओम अश्विनी नक्षत्र देवताभ्याम् आशयुभ्यां नमः ओम अपभरणी नक्षत्र देवतायै धर्मराजाय नमः ओम अभिजिन् नक्षत्र देवतायै ब्रह्मणे नमः कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अभवरण्यन्त अष्टाविंशति नक्षत्र देवताभ्यो नमः नानाविध परिमल पत्र पुष्पाणि समर्पयामि ओम यत्पुरुषं यदसुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु काभूरोपादा उच्येते अष्टाविंशति नक्षत्र देवताभ्यो नमः अतिसुगन्धधूपमाघ्रापयामि ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरञ्जन्त अष्टाविंशति नक्षत्र देवताभ्यो नमः घृतवत्ति दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि भूद्भवस्तुवः चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो जायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अवभरण्यन्त अष्टाविंशति नक्षत्र देवताभ्यो नमः नानाविधफलसमूहानि एतत्सर्वं निवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि पूगी फलसमायुक्तं नागवल्लीदलयुतं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीर्ष्णाद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागम् अकल्पयन् अष्टाविंशति नक्षत्र देवताभ्यो नमः कर्पूरताम्बूलं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि ओम न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं हेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरण्यन्त अष्टाविंशति नक्षत्र देवताभ्यो नमः पूर्वाङ्गपूजान्ते कर्पूर नीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि दिव्यमङ्गलरक्षां धारयामि ओम हरा ओम योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरण्यन्त अष्टाविंशति नक्षत्र देवताभ्यो नमः प्रार्थनाः वेदोक्त मंत्र पुष्पाञ्जलिं च समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि अनया पूजया आराधिताः सर्वा देवताः प्रीयन्ताम् ओम तत्सत् शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ओम ओम भूर्भुवस्वरों ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं
अद्य पूर्वोक्त एवं गुण सकल विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायां मंगलवासर युक्तायाम् अंगारकग्रह प्रीत्यर्थम अंगारकग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम अंगारकग्रह प्रसादेन सर्वेषां भक्तमहाजनानां सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य धैर्य शौर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थम सत्संतान सौभाग्य समृद्ध्यर्थम समस्त दुरित उपशांत्यर्थम अंगारकग्रह प्रसादेन सर्वेषां जातकवशात् सप्तमस्थाने अंगारकस्थित्या यो दोषः तद्दोष परिहारार्थं विवाह प्रतिबंधक दोष निवृत्तिपूर्वक विवाह मंगल लाभ सिद्ध्यर्थम अंगारकग्रह प्रसादेन स्थलमार्गे सर्व वाद प्रतिवाद विषये सर्वानुकूल्य सिद्ध्यर्थम स्थल विक्रय मार्गे सर्वानुकूल्य सिद्ध्यर्थम मंगल भौमवासरे अंगारक ग्रह जप होम आख्य कर्म करिष्ये अंगारक ग्रह जप होम आख्य कर्म करिष्ये अक्षतान् निरस्या अपवुपस्पृश्य ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो वेनावः स बुद्धिजामुपमास्य विष्ठास्ततश्च यो निमसतश्च विवः नाके सुपर्णमुपयत्पतन्तकं हृदावेनं चोभ्यचक्षतत्वा हिरण्यपक्षं वरुणस्य दोदं यमस्य योनौषकटुम्भरण्यम् आप्यायस्व समेतु ते विश्वतस्वामवृष्टियं भवावाजस्य सङ्गथे यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सयवोषधीषयो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पागुं सुरे इन्द्रं विश्वा विवृधान् समुद्रव्यजसङ्गिरः रथीदमगं रथीनां वाजानागुं सत्पतिं पतिं भोर्भवस्वः आपो वा इदगुं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणा वा आपः पशव आपोन्नमापो प्रथमापः सम्राडापो विराडापस्वराडापश्चं दागस्यापो ज्योतिगस्यापो यजोगस्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भवस्तु वरापवो अपः प्रणयति श्रद्धा वा आपः श्रद्धामेवारभ्यः प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति यज्ञो वा आपः यज्ञमेवारभ्यः प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति वज्रो वा आपः वज्रमेव भ्रातृव्येभ्यः प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति आपो वीरक्षोऽग्निः रक्षसामुपहत्यै अपः प्रणयति आपो वै देवानां प्रियं धाम देवानामेव प्रियं धाम प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति आपो वै सर्वा देवताः देवता एवारभ्यः प्रणीय प्रचलति अपः प्रणयति आपो वै शान्ताः शान्ताभिरेवासृजगुं शमयति देवो वस्तुवितोत्पुनातो अच्छिद्रेण पवित्रेण वसोः सूर्यस्य रश्मिभिः स हि रत्नानि दासुषे सुवाजुषविदाभकः तं भागं चित्रमीमहे कूर्चाग्रैराक्षसान् घोरान् सिन्धिकर्मविघातिनः स्वामर्पयामि कुम्भेऽस्मिन् साफल्यङ्गुरकर्मणि वृक्षराजसमद्भूताः शाखायाः पल्लवत्वजः युष्मान् कुम्भेष्वर्पयामि सर्वदोषापनुत्तजे नारिकेलसमद्भूतत्रिनेत्रहरसंविदा शिखया दुरितं सर्वं पापं पीडां च मेनुदा सर्वे समुद्रा सलिलस्तीर्था जनता हृदाः आयान्तु देव पूजार्थं दुरितक्षयकारकाः इमं मे वरुणश्रुतिहवमद्या च मृडया त्वामवस्युराचके तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते दमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोऽध्युरषगं समान आदः प्रमोषीः अस्मिन् कुम्भे सकलतीर्थाधिपतिं श्रीवरुणं ध्यायामि श्रीवरुणम् आवाहयामि वरुणस्य इदमासनं वरुणाय नमः सकलाराधनैस्वर्चितम् ॐ अग्निर्मूर्धा दिवः ककोत्पतिः पृथिव्या अयम् अपागं रेतागं सिजिन्वति स्योना पृथिवी भवान् रक्षरा निवेशनी यच्छा न शर्म सप्रथा आह
क्षेत्रस्य पतिना वयगुंहितेन वजयामसि गामश्वं पोषजित्नुवासनो मृडातीदृशे भूद्भवस्वरो अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् अस्मिन् बिम्बे च अंगारकग्रहं ध्यायामि अंगारकग्रहम् आवाहयामि अंगारकग्रहाय नमः आसनार्थं रत्नसिंहासनं समर्पयामि वरुणसहितांगारकग्रहस्वामिने नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि वरुणसहितांगारकग्रहस्वामिने नमः अर्घ्यं समर्पयामि वरुणसहितांगारकग्रहस्वामिने नमः आचमनीयं समर्पयामि वरुणसहितांगारकग्रहस्वामिने नमः मधुपर्गं समर्पयामि वरुणसहितांगारकग्रहस्वामिने नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि वरुणसहितांगारकग्रहस्वामिने नमः दिव्यमङ्गलवस्त्रोत्तरीयं समर्पयामि वरुणसहितांगारकग्रहस्वामिने नमः उपवीताभरणार्थे पुष्पाणि समर्पयामि वरुणसहितांगारकग्रहस्वामिने नमः दिव्यगन्धान् धारयामि हरिद्रामङ्गलकुङ्कुमं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ॐ वरुणाय नमः ॐ प्रचेतसे नमः ॐ सुरूपिणे नमः ॐ अपाम्पदये नमः ॐ मकरवाहनाय नमः ॐ जलाधिपतये नमः ॐ तीर्थराजाय नमः ॐ पाशहस्ताय नमः ॐ वायुनिरतिमध्यस्थाय नमः ॐ वाल्मीकिदाताय नमः ॐ वरुणमूर्तये नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ॐ अंगारकाय नमः ॐ पृथिव्यै नमः ॐ क्षेत्रपालकाय नमः ॐ महीसुताय नमः ॐ महाभागाय नमः ॐ मङ्गलाय नमः ॐ मङ्गलप्रदाय नमः ॐ महावीराय नमः ॐ महाशूराय नमः ॐ महाबलपराक्रमाय नमः ॐ महारौद्राय नमः ॐ महाभद्राय नमः ॐ माननीयाय नमः ॐ दयाकराय नमः ॐ मानदाय नमः ॐ पर्वणाय नमः ॐ क्रूराय नमः ॐ तापपापविवर्जिताय नमः ॐ सुप्रतीपाय नमः ॐ सुताम्राक्षाय नमः ॐ सुब्रह्मण्याय नमः ॐ सुखप्रदाय नमः ॐ वक्रस्तम्भादिगमनाय नमः ॐ वरेण्याय नमः ॐ वरदाय नमः ॐ सुखिने नमः ॐ वीरभद्राय नमः ॐ विरूपाक्षाय नमः ॐ विदूरस्थाय नमः ॐ विभावसवे नमः ॐ नक्षत्रचक्रसञ्चारिणे नमः ॐ क्षत्रपाय नमः ॐ क्षात्रवर्जिताय नमः ॐ क्षयवृद्धिविनिर्मुक्ताय नमः ॐ क्षमायुक्ताय नमः ॐ विचक्षणाय नमः ॐ अक्षीणफलदाय नमः ॐ चतुर्गोचराय नमः ॐ वीतरागाय नमः ॐ वीतभयाय नमः ॐ विज्वराय नमः ॐ विश्वकारणाय नमः ॐ नक्षत्रराशिसञ्चाराय नमः ॐ नानाभयनिकृन्तनाय नमः ॐ कमनीयाय नमः ॐ दयासाराय नमः ॐ कनत्कनकभूषणाय नमः ॐ भयघ्नाय नमः ॐ भव्यफलदाय नमः ॐ भक्ताभयवरप्रदाय नमः ॐ शत्रुहन्त्रे नमः ॐ शमोपेताय नमः ॐ शरणागतपोषणाय नमः ॐ साहसाञ्जाय नमः ॐ सद्रुणाध्यक्षाय नमः ॐ साधवे नमः ॐ समरदुर्जयाय नमः ॐ दुष्टदूराय नमः ॐ शिष्टपूजिताय नमः ॐ सर्वकष्टनिवारकाय नमः ॐ दुश्चेष्टवारकाय नमः ॐ दुःखभञ्जनाय नमः ॐ धुर्धराय नमः ॐ हरये नमः ॐ दुःस्वप्नहन्त्रे नमः ॐ दुर्धर्षाय नमः ॐ दुष्टगर्वविमोचकाय नमः ॐ भरद्वाजकुलोदभूताय नमः ॐ भूसुताय नमः ॐ भव्यभूषणाय नमः ॐ रक्ताम्बराय नमः ॐ रक्तवपुषे नमः ॐ भक्तफलतत्पराय नमः ॐ चतुर्भुजाय नमः ॐ गदाधारिणे नमः ॐ मेषवाहनाय नमः ॐ मिताशनाय नमः ॐ शक्तिशूलधराय नमः ॐ शान्ताय नमः ॐ शस्त्रविद्याविशारदाय नमः ॐ तार्किकाय नमः ॐ तामसाधाराय नमः ॐ तपस्विने नमः ॐ ताम्रलोचनाय नमः ॐ तप्तकाञ्चनसङ्काशाय नमः ॐ रक्तकिञ्जल्कसन्निभाय नमः ॐ गोत्राधिदैवताय नमः ॐ गोमध्यचराय नमः ॐ गुणाविभूषणाय नमः
ओम असृजे नमः ओम अहंगारकाय नमः ओम अवंतीदेशाधीशाय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम सूर्यसाम्राज्यप्रदेशस्थाय नमः ओम यौवनाय नमः ओम याम्य विदुन्मुखाय नमः ओम त्रिलोकमण्डलागतये नमः ओम त्रिदशाधिपाय नमः ओम सन्नुताय नमः ओम शुचये नमः ओम शुचिकराय नमः ओम शूराय नमः ओम शुचये नमः ओम वश्याय नमः ओम शुभावहाय नमः ओम मेषवृश्चिकाशीषाय नमः ओम मेधाविने नमः ओम मितभाषिने नमः ओम सुखप्रदाय नमः ओम सुरूपाक्षाय नमः ओम सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः ओम अंगारकग्रहस्वामिने नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ओम दशांगं गुग्गुलोधूपं सुगन्धं सुमनोहरम् आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् वरुणसहित अंगारकग्रहस्वामिने नमः अतिसुगन्धधूपम् आघ्रापयामि ओम साध्यं त्रिवर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया गृहानमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरापहां वरुणसहिताङ्गारकग्रहस्वामिने नमः अलङ्कारणार्थं घृतवर्तिदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि भोर्भवस्वः अमृते अमृतोद्भवे अमृतेश्वरा अमृतवर्षणा अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा अमृतं भवतो वरुणसहिताङ्गारकग्रहस्वामिने नमः नानाविधफलानि नारिकेलकण्ठद्वयताम्बूलं च निवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि भोर्भवस्वः पूगीफलसमायुक्तं नागवल्लीदलैर्युतं कर्पूरचोरसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां वरुणसहिताङ्गारकग्रहस्वामिने नमः दिव्यताम्बूलं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि ओम अग्निर्मूर्धादिवः ककोत्पतिः पृथिव्या अयम् अपागुं रेतागुं सिजिन्वति स्योनावृथिविभवान् रक्षदा निवेशनी यच्छानः शर्म सप्रथाः क्षेत्रस्य पतिना वयगं हितेनेव ददामसि गामश्वं पोषजित्नुवासुनो मृडादीदृशे वरुणसहिताङ्गारकग्रहस्वामिने नमः पूर्वाङ्गपूजान्ते कर्पूरनीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि दिव्यमङ्गलरक्षान् धारयामि ॐ हर ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति वरुणसहिताङ्गारकग्रहस्वामिने नमः प्रार्थनापूर्वकं वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि अनया पूजया आराधितश्री अङ्गारकग्रहः प्रीयताम् ॐ तत्सत् ॐ अङ्गारकाय नमः 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 ॐ अङ्गारकाय
Namaha. Om Angarakaya 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 Namaha. Om Angarakaya
Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om
Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om
Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om
Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om
Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya. Om वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात् अग्नये नमः। ॐ भूर्भुवस्वरोम् अग्निं प्रतिष्ठाप्य अग्निमिध्वा अग्निं प्रज्वाल्य प्राक्तोयन्निधाय भूर्भुवस्सुवः अदितेनु मन्यस्व अनुमतेनु मन्यस्व सरस्वतेनु मन्यस्व देवसवितः प्रसुवा। ॐ अग्निर्मूर्धा दिवः ककोत्पतिः प्रसूया अयम् अपागुं रेतागुं सिजन्वती स्योना पृथिविभवान् रक्षरा निवेशनी यच्छा नः शर्म सप्रथाः क्षेत्रस्य पतिना वयगुं हितेनेव जजामसि गामश्वं पोषजित्नवासनो मृडातीदृशे धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम्
कुमारं शक्तिहस्तन्तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम् भूर्भुवस्वरो अस्मिन् यज्ञाग्नौ अङ्गारकग्रहं ध्यायामि अङ्गारकग्रहम् आवाहयामि अङ्गारकग्रहाय नमः आसनार्थं रत्नसिंहासनं कल्पयामि नमः स्वाहा पादयोः पाद्यं कल्पयामि नमः स्वाहा अर्घ्यं कल्पयामि नमः स्वाहा अङ्गारकग्रहाय नमः आचमनीयं कल्पयामि नमः स्वाहा अङ्गारकग्रहाय नमः मधुपर्गं कल्पयामि नमः स्वाहा अङ्गारकग्रहाय नमः शुद्धोदकस्नानं कल्पयामि नमः स्वाहा अङ्गारकग्रहाय नमः आचमनीयं कल्पयामि नमः स्वाहा अङ्गारकग्रहाय नमः वस्त्रोत्तरीयं कल्पयामि नमः स्वाहा अङ्गारकग्रहाय नमः उपवीताभरणं कल्पयामि नमः स्वाहा अङ्गारकग्रहाय नमः गन्धकुङ्कुमाक्षतान् कल्पयामि नमः स्वाहा अङ्गारकग्रहाय नमः पुष्पमालां कल्पयामि नमः स्वाहा अङ्गारकग्रहाय नमः पुष्पैः पूजयामि ॐ अङ्गारकाय नमः ॐ पृथिव्यै नमः ॐ क्षेत्रपालकाय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि अङ्गारकग्रहाय नमः धूपं कल्पयामि नमः स्वाहा अङ्गारकग्रहाय नमः दीपं कल्पयामि नमः स्वाहा अङ्गारकग्रहाय नमः नैवेद्यस्थाने आद्योपहारं निवेदयामि नमः स्वाहा अङ्गारकग्रहाय नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि ॐ अग्निर्मूर्धाद्वः कुगत्वतिः पृथिव्यायाम् अपागं रेदागं सिजिन्वति स्वाहा 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 अग्निर्मूर्धाद्वः कुगत्वतिः पृथिव्यायाम् अग्निर्मूर्धाद्वः कुगत्वतिः पृथिव्यायाम् अपागं रेदागं सिजिन्वति स्वाहा 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 दिवः कुगत्वतिः पृथिव्यायाम् अपागं रेदागं सिजिन्वति स्वाहा अग्निर्मूर्धाद्वः 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 कुगत्वतिः पृथिव्यायाम् अग्निर्मूर्धाद्वः कुगत्वतिः पृथिव्यायाम् अपागं रेदागं सिजिन्वति स्वाहा 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 अग्निर्मूर्धाद्वः कुगत्वतिः पृथिव्यायाम् अपागं रेदागं सिजिन्वति स्वाहा
अग्निर्मूर्धाद्वः कगत्वतः पृथिव्यायम् अपागुं रेदागुं सजिन्वति स्वाहा अग्निर्मूर्धाद्वः कगत्वतः पृथिव्यायम् अपागुं रेदागुं सजिन्वति स्वाहा अग्निर्मूर्धाद्वः कगत्वतः पृथिव्यायम् अग्निर्मूर्धाद्वः कगत्वतः पृथिव्यायम् अपागुं रेदागुं सजिन्वति स्वाहा 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 अग्निर्मूर्धाद्वः कगत्वतः पृथिव्यायम् अग्निर्मूर्धाद्वः कगत्वतः पृथिव्यायम् अपागुं रेदागुं सजिन्वति स्वाहा 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 अग्निर्मूर्धाद्वः कगत्वतः पृथिव्यायम् अग्निर्मूर्धाद्वः कगत्वतः पृथिव्यायम् अपागुं रेदागुं सजिन्वति स्वाहा 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 अग्निर्मूर्धाद्वः कगत्वतः पृथिव्यायम् अङ्गारकग्रहाजेदन्नमम ॐ स्योनावृथिभवान् रक्षदा निवेशनी यच्छार शर्वसप्रथा स्वाहा स्योनावृथिभवान् रक्षदा निवेशनी यच्छार शर्वसप्रथा स्वाहा स्योनावृथिभवान् रक्षदा निवेशनी यच्छार शर्वसप्रथा स्वाहा पृथिव्या इदन्नमम क्षेत्रस्य पतिना वयगुंहितेनेव दजामसि रामश्वं पोषयित्वा समामराजीदृशे स्वाहा क्षेत्रस्य पतिना वयगुंहितेनेव दजामसि रामश्वं पोषयित्वा समामराजीदृशे स्वाहा क्षेत्रस्य पतिना वयगुंहितेनेव दजामसि रामश्वं पोषयित्वा समामराजीदृशे स्वाहा क्षेत्रपालकाजेदन्नमम धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम् कुमारं शक्तिहस्तन्तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं स्वाहा धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम् कुमारं शक्तिहस्तन्तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं स्वाहा धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम् कुमारं शक्तिहस्तन्तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं स्वाहा अङ्गारकग्रहाजेदन्नमम अङ्गारकग्रहप्रसादेन सर्वेषां महाजनानां सहकुटुम्बानां क्षेत्रपालकप्रसादे सर्वाभीष्टसिद्धिरस्तु अङ्गारकग्रहदोषो निर्दोषोऽस्तु अङ्गारकग्रहः प्रीयताम् ॐ पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति
अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते साङ्गाय सायुधाय सवाहनाय सपरिवाराय अंगारकग्रहस्वामिने नमः समस्तहरिहरदेवताभ्यो नमः गन्धपुष्पाक्षतकुङ्कुमफलताम्बूलसहिताम् महापूर्णाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा ॐ सप्तते अग्ने समिधः सप्त जिह्वा सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा यजन्ति सप्तजोनि आवृणस्वाधृतेन स्वाहा अग्नजे सप्तवतेरन्नमः उदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितः प्रासावीः ॐ मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशना यद्भुतन्तु मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते राजश्चित्तानि शेषाणि तपः कर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानस्मरणं परं कृष्णाय नमः कृष्ण 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 ॐ सोमो वा एतस्य राज्यमादत्ते यो राजासन् राज्यो वा सोमेन यजते देवशुभामेतानि हवीगुंषु भवन्ति एतावन्तो वै देवानागुं सवाः तदेवास्मै सवान् प्रयच्छन्ति तदेनं पुनस्तुवन्ते राज्याय देवसूराजा भवति धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम् कुमारं शक्तिहस्तन्तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम् वरुणसहिताङ्गारकग्रहस्वामिने नमः समस्तापराधक्षमापनार्थं सर्वमङ्गलप्राप्त्यर्थं कर्पूरनीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि दिव्यमङ्गलरक्षां धारयामि ॐ हर ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावाहन् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा पां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावाहन् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति यो वेदादोस्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः वरुणसहित अङ्गारकग्रहस्वामिने नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि छत्रं समर्पयामि चामरं बीजयामि नृत्यं दर्शयामि वाद्यं घोषयामि समस्तराजोपचार देवोपचार शक्त्योपचार भक्त्योपचार षोडशोपचार पूजाः समर्पयामि यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानस्तजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते इदमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोधिरुषकं समान आजः प्रमोषीः अस्मात् कुम्भात् अस्मात् मण्डलाच्च वरुणसहिताङ्गारकग्रहस्वामिनं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च ॐ ध्रुपदादिवमुञ्चतो ध्रुपदादिवेन्ममुचानः स्विन्नस्नात्वीमलादिव पूतं पवित्रेणेवाद्यम् आपश्युन्धन्तुमैनसः भूर्भुवस्तुवो भूर्भुवस्तुवो भूर्भुवस्तुवः ॐ ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्तजिन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतान् ध्रुवम् पर्वत इवाविचाचलिः इन्द्रयुवेह ध्रुवस्तिष्ठा इह राष्ट्रमुधारया अभितिष्ठभृतन्यतः अधरे सन्तु शत्रवः
ఇంద్ర ఇవ వృత్రః తిష్ఠా సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు దేవీం వాచమజనయంత దేవాః తాం విశ్వరూపాః పశవో వదంతి सा नो मन्त्रेषमूर्धन्दुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुदयितु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु ॐ अच्युताय नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ गोविन्दाय नमः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॐ भूर्भुवस्वरों ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेते अङ्घ्रियुगं स्मरामि करिष्यमाणस्य कर्मणः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थम् आदौ विघ्नेश्वर पूजां करिष्ये अपवपस्पृश्य ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् भूर्भुवस्वरोम् अस्मिन् हरिद्राबिम्बे सुमुखं महागणपतिं ध्यायामि अस्मिन् बिम्बे च महागणपतिमावाहयामि महागणपतये नमः आसनार्थं रत्नसिंहासनं समर्पयामि महागणपतये नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि महागणपतये नमः अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि महागणपतये नमः स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि महागणपतये नमः दिव्यमङ्गलवस्त्रोत्तरीयं समर्पयामि महागणपतये नमः उपवीताभरणार्थे पुष्पाणि समर्पयामि दिव्यपरिमलसुगन्धगन्धान् धारयामि हरिद्रामङ्गलकुङ्कुमं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ॐ सुमुखाय नमः ॐ एकदन्ताय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ गजकर्णकाय नमः ॐ लम्बोधराय नमः ॐ विकटाय नमः ॐ विघ्नराजाय नमः ॐ विनायकाय नमः ॐ धूमकेतवे नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॐ फालचन्द्राय नमः ॐ गजाननाय नमः ॐ वक्रतुण्डाय नमः ॐ शूर्पकर्णाय नमः ॐ हेरम्बाय नमः ॐ स्कन्दपूर्वजाय नमः महागणपतये नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि महागणपतये नमः दशाङ्गं गुग्गुलोधूपं सुगन्धं सुमनोहरम् आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् महागणपतये नमः मङ्गलमूर्तये नमः अतिसुगन्धधूपमाघ्रापयामि साध्यं त्रिवर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरापहम् महागणपतये नमः प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि भूर्भुवस्सुवः महागणपतये नमः नैवेद्यस्थाने कदलीफलताम्बूलं च निवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि भूर्भुवस्सुवः कर्पूरताम्बूलं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि ॐ नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोधराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः महागणपतये नमः समस्तापराधक्षमापणार्थं सर्वमङ्गलप्राप्त्यर्थं कर्पूरनीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि दिव्यमङ्गलरक्षां धारयामि ॐ हरा ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोधरश्च विकटो विघ्नराजो विनायकः धूमकेतुर्गणाध्यक्षः फालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डः शूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः
कलासङ्ख्यानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते। महागणपतये नमः। मङ्गलमूर्तये नमः। आरम्भकाले अभीप्सितप्रार्थनाः समर्पयामि। ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ भूर्भुवस्वरो ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभाभ्याम् अद्य पूर्वोक्त एवं गुण सकल विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायां मंगल शुभतिथौ 28 नक्षत्रदेवतानां प्रसाद सिद्ध्यर्थं प्रसादेन आसेतु हिमाचल अंतर्वर्तिनां सर्वेषां भारतीयानां सर्वेषां सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य धैर्य शौर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मा विरोधेन चिंतित सकल कार्येषु विजयत्वलाभ सिद्ध्यर्थं आरोग्य प्रतिबंधक दोष निवृत्तिपूर्वक अरोग दृढ़गात्रदा सिद्ध्यर्थं 28 नक्षत्र देवतानां प्रसाद सिद्ध्यर्थं आरोग्य भाग्य वेदोक्त शतायुषः संपूर्णदा सिद्ध्यर्थं अपमृत्यु कालमृत्यु अस्त्रमृत्यु शस्त्रमृत्यु सर्व मृत्युबाधा शत्रुबाधा शरीरबाधा निवृत्तिपूर्वक सुखजीवन प्राप्त्यर्थं 28 नक्षत्र देवतानां प्रीतिकर 28 नक्षत्र शांति जपहोम आख्य कर्म करिष्ये। 28 नक्षत्र शांति जपहोम आख्य कर्म करिष्ये। अपवपस्पृश्य महागणपतये नमः। समस्तोपचार पूजा समर्पयामि। ओम ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो वेनावः सबुद्धिजावुपमास्य विष्ठास्ततश्चयो निमसतश्च विवः नाके सुपर्णमुपयत्पदन्तकं हृदा वेनन्तोऽभ्यचक्षतत्वा हिरण्यपक्षं वरुणस्य दोतं यमस्य योनौषकनं भरण्यम् आप्यायस्व समेतु ते विश्वदस्वामवृष्णियं भवावादस्य सङ्गथे यो रुद्रो अग्नव्यो अप्सयवोषधीषयो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पागं सुरे इन्द्रं विश्वाविवृधन् समुद्रव्यचसङ्गिरः रथीतमगं रथीनां वाजानागुं सत्पतिं पतिं भूर्भवस्सुवः आपो वाजिदगुं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः पशवापोन्नमापोऽमृतमापः सम्राडापो विराडापस्वराडापश्छन्दागस्यापो ज्योतिगुष्यापो यजोगुष्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भवस्तु वराप ओम् अपः प्रणयति श्रद्धा वा आपः श्रद्धामेवारभ्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति यज्ञो वा आपः यज्ञमेवारभ्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति वज्रो वा आपः वज्रमेव भ्रातृव्येभ्यः प्रहृत्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति आपो वै रक्षोऽग्निः रक्षसा महत्यै अपः प्रणयति आपो वै देवानां प्रियन्धाम देवानामेव प्रियन्धाम प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति आपो वै सर्वा देवताः देवता देवारभ्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति आपो वै शान्ताः शान्ताभिरेव शिशुजगुं शमयति देवो वस्त्रवितोत्पुनातो अच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः सहिरत्नान् जासुषे सुवादिह विदाभगः तं भागं चित्रमीमहे कूर्चाग्रैराक्रसान् घोरान् सिन्धिकर्म विघातिनः तामर्पयामि कुम्भेऽस्मिन् साफल्यं गुरुकर्मणि वृक्षराजसमद्भूता शाखायाः पल्लवत्वचः युष्मान् कुम्भे सर्पयामि सर्वदोषापनुत्तये नारिकेलसमद्भूतत्रिणेत्रहरसंविदा शिखया दुरिदं सर्वं पापं पीडान्तमेनुदा सर्वे समुद्रा सलिलतीर्था जनदाहृदाः आजान्तु देव पूजार्थं दुरिदक्षजकारकाः इमं मे वरुणश्रुतिहवमद्या च मृडया त्वामवस्युराचके तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्तेजमानो हविर्भिः
अहेडमानो वरुणेह बोध्यरुषकं समानाजः प्रमोषीः अस्मिन् कुम्भे सकलतीर्थाधिपतिं श्रीवरुणं ध्यायामि श्रीवरुणम् आवाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्येदमासनं सकलाराधनैस्वर्चिताम् ओम अग्निर्नः पातु कृत्तिकाः नक्षत्रं देवमिन्द्रियम् इदमासां विचक्षणं हविरासं जुहोदना यस्य भान्ति रश्मयो यस्य केतवः यस्येवा विश्वा भुवनानि सर्वाः सकर्तिकाभिरभिदं वसानः अग्निर्नो देवस्तु विदे दधातु अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां कृत्तिका नक्षत्रदेवताम् अग्निम् आवाहयामि प्रजापते रोहिणी वेत पत्नी विश्वरूपा बृहती चित्रभानुः सा नो यज्ञस्य विदे दधातु यथा जीवेम शरदस्य वीराः रोहिणी देव्युदगात् तुरस्तात् विश्वारूपाणि प्रतिमोदमाना प्रजापतिं हविषा वर्धयन्ति प्रिया देवानामुपयातु यज्ञम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां रोहिणी नक्षत्रदेवतां प्रजापतिं ध्यायामि प्रजापतिम् आवाहयामि सोमो राजा मृगशीर्षेण आगन् शिवन्नक्षत्रं प्रियमस्य धाम आप्यायमानो बहुधा जनेषु रेतः प्रजायितमाने ददातु यत्ते नक्षत्रं मृगशीर्षमस्ति विजयगुं राजन् प्रियतमं प्रियाणां तस्मै ते सोम हविषा विधेम शन्नजेधिद्युपदेशं चतुष्पदे अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां मृगशिरो नक्षत्रदेवतां सोमं ध्यायामि सोममावाहयामि आर्द्रजा रुद्रः प्रथमानयेति श्रेष्ठो देवानां प्रतिरग्नियानां नक्षत्रमस्य हविषा विधेम मानः प्रजागमृषन्नोद वीरान् हेति रुद्रस्य परिणो वृणक्तो आर्द्रा नक्षत्रं हृतागं हविर्नः प्रमुञ्चमानौ दुरितान् विश्वा अपाघशकं सन्नुदतामरातिम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् आर्द्रा नक्षत्रदेवतां श्रीरुद्रं ध्यायामि श्रीरुद्रम् आवाहयामि पुनर्नो देव्यदिति स्पृणोतो पुनर्वसूनः पुनरेतां यज्ञं पुनर्नो देवा अभियन्तु सर्वे पुनः पुनर्वो हविषायिधामः एव न देव्यदितिरनर्वा विश्वस्य भर्त्री जगतः प्रतिष्ठा पुनर्वसु हविषा वर्धयन्ति प्रियं देवानामप्येतुपासः अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां पुनर्वसु नक्षत्रदेवताम् अदितिं ध्यायामि अदितिम् आवाहयामि बृहस्पतिः प्रथमं जायमानः तिष्यन्नक्षत्रमभिदं बभूव श्रेष्ठो देवानां प्रतनासु जिष्णुः दिशो न सर्वाभयन्नोऽस्तु तिष्यः पुरस्तादुतमध्यतो नः बृहस्पतिर्नः परिपातु पश्चात् बाधेतान्ते शोभयं कृणुतां सुवीर्यस्य पतयस्याम अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां पुष्यनक्षत्रदेवतां बृहस्पतिं ध्यायामि बृहस्पतिम् आवाहयामि इदगुं सर्पेभ्यो हविरस्तु जुष्टम् आश्लेषादेशामनुयन्ति चेतः ये अन्तरिक्षं पृथिवीं क्षियन्ति तेन सर्पासोऽहवमागमिष्ठाः ये रोचने सूर्यस्यापि सर्पाः ये दिवं देवीमनु सञ्चरन्ति येषामाश्लेषानुयन्ति कामम् तेभ्यः सर्पेभ्यः मधुमज्जुहोमि अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् आश्लेषा नक्षत्रदेवतां सर्पराजं ध्यायामि सर्पराजम् आवाहयामि उपहूताः पितरो ये मघासु मनोजवसत्सु कृतस्सु कृत्याः ते नो नक्षत्रे वमागमिष्ठाः स्वधाभिर्यज्ञं प्रयतं जुहन्तां ये अग्निदग्धा येनग्निदग्धाः ये मल्लोकं पितरः क्षियन्ति यागश्च विद्मयागम् उचन प्रविद्मा मघासु यज्ञकं सुकृतं जुहन्ताम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां मघा नक्षत्रदेवतां पितॄन् ध्यायामि आवाहयामि गवां पतिः फल्गुनी नामसि त्वं तदर्यमन्वरुणमित्रचारो तन्त्वा विजगुंसनितारगुं सनीनां जीवा जीवन्तमुपसंविषेम ये नेमा विश्वा भुवनानि सञ्चिता यस्य देवान् संयन्ति चेतः अर्यमा राजाचरस्तु विष्मान् फल्गुनी नाम शभोरोरवीति अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां पूर्वफल्गुनी नक्षत्रदेवताम् अर्यमणं ध्यायामि अर्यमणम् आवाहयामि श्रेष्ठो देवानां भगवो भगासि तत्त्वाविदुः फल्गुणीस्तस्य वित्तात् अस्मभ्यं क्षत्रमजरगुं सवीर्यं गोमदश्नुवदुपसन्नु देह भगोः दाता भगजित्प्रदाता भगो देवी फल्गुनीराविवेश भगस्येत्तं बसवङ्कमेव यत्र देवी सधमातं वदेम अस्मिन् कुम्भे स्यां प्रतिमायाम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रदेवतां भगं ध्यायामि आवाहयामि
आयातु देवस्वितोपजातु हिरण्यजेन सुवृता रथेन वहनहस्तकं सुभगं विद्मनाभसं प्रयच्छन्तं पपुरिं पुण्यमच्छ हस्तप्रयच्छत्वमृतं वसीयः दक्षिणेन प्रतिगृह्णीमयेन च दातारमद्य सविता विधेय यो नो हस्ताय प्रसवाति यज्ञम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां हस्तनक्षत्रदेवतां सवितारं ध्यायामि सवितारम् आवाहयामि त्वष्टा नक्षत्रमभ्येति चित्रां सुभगं संयुवतिकं रोचमानां निवेशयन्नमृतान् मर्त्यागश्च रूपाणि विगुंशन् भवनानि विश्वा तन्नस्त्वष्टास्तु चित्रा विजष्टां तन्नक्षत्रं भूरिदास्तु मह्यं तन्नः प्रजां वीरवतीगुं सनोतो गोभिर्नो अश्वैः समनक्तु यज्ञम् अस्मिन् कुम्भे स्यां प्रतिमायां चित्रा नक्षत्रदेवतां त्वष्टारं ध्यायामि आवाहयामि वाजुर्नक्षत्रमभ्येति निष्ट्यां दिग्भशृङ्गो वृषभो रोरुवाणः समीरयन्भवनामातरिष्वा अपद्देशागुंसनजतामरातीः तन्नो वायुस्तदुनिष्ट्या शृणोतु तन्नक्षत्रं भूरिदास्तु मह्यं तन्नो देवासो अनुजानन्तु कामं यथा तरे मधुरितानि विश्वा अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां स्वाती नक्षत्रदेवतां वायुं ध्यायामि स्वाती नक्षत्रदेवतां वायुम् आवाहयामि दूरमस्मच्छत्रवोजन्तु भीताः तदिन्द्राग्नि गृणतां तद्विशाखे तन्नो देवानमदन्तु यज्ञम् पश्चात्तुरस्तादभयन्नोऽस्तु नक्षत्राणामधिपत्नी विशाखे श्रेष्ठाविन्द्राग्नि भुवनस्य गोपौ विशोचशत्रूनुपबाधमानौ अपक्षुधन्नुतामरातिम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां विशाखा नक्षत्रदेवते इन्द्राग्नीं ध्यायामि इन्द्राग्नीम् आवाहयामि ऋद्ध्यास्महव्यैर्नमसोपसज्य मित्रं देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु अनोराधान् हविषा वर्धयन्तः शरञ्जीवेव शरदस्य वीराः चित्रं नक्षत्रमुदगात् तुरस्तात् अनोराधासयति यद्वदन्ति तन्मित्रयेति पथिभिर्देव जानैः हिरण्यजीर्विततैरन्तरिक्षे अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् अनुराधा नक्षत्रदेवतां मित्रं ध्यायामि मित्रम् आवाहयामि इन्द्रो ज्येष्ठामणुनक्षत्रमेति यस्मिन् वृत्रं वृत्रतौर्ये ततारा तस्मिन् वजममृतं दुहानाः कृधन्तरे मधुरितन्दुरिष्टिं पुरन्दराज वृषभाज धृष्णवे अषाढाय सहमानाज मीढुषे इन्द्राय ज्येष्ठा मधुमद्दुहाना उरुङ्कृणोति गजमानाज लोकम् अस्मिन् कुम्भे स्यां प्रतिमायां ज्येष्ठा नक्षत्रदेवताम् इन्द्रं ध्यायामि आवाहयामि मूलं व्रजां वीरवतीं विदेय पराचेतु निर्ऋतिः पराच गोभिर्नक्षत्रमुषुभिः समक्तम् आर्भोजाद्यजमानाजवश्यम् आहर्नो अद्य सुविदे ददातु मूलन्नक्षत्रमिति यद्विदन्ति पराचीं वाचा निर्ऋतिन्नुदामि शिवं व्रजादि शिवमस्तु मह्यम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां मूलनक्षत्रदेवतां प्रजापतिं ध्यायामि आवाहयामि या दिव्या वःपयसा सम्बभूवुः या अन्तरिक्ष उतपार्थिवीर्याः यासामषाढानयन्ति कामम् तानापश्यग्रस्यो नाभवन्तो याश्च कूप्या याश्च नाद्याः समुद्रयाः याश्च वैशञ्चीरुतप्रासचीर्याः यासामषाढा मधुपक्षयन्ति तानापश्यग्रस्यो नाभवन्तो अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां पूर्वाषाढा नक्षत्रदेवताः अपः ध्यायामि अपः आवाहयामि तन्नो विश्वे उपशृण्वन्तु देवाः तदषाढाभिसंयन्तु यज्ञम् तन्नक्षत्रं प्रसदां वशुभ्यः कृशर्वेष्टिर्यजमानाय कल्पतां शुभ्राः कन्याजुवतयः सुपेशतः कर्मकृतः सुकृतो वीर्यावतीः विश्वान् देवान् हविषा वर्धयन्तीः अषाढाः काममुपजान्तु यज्ञम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् उत्तराषाढा नक्षत्रदेवतां विश्वान् देवान् ध्यायामि विश्वान् देवान् आवाहयामि शृण्वन्ति श्रोणाममुदस्य गोपां पुण्यामस्यामुपशृणोमि वाचं महीं देवीं विष्णुपत्नीमजोर्यां प्रतीचीमेनागुं हविषा इदामः श्रेधा विष्णुरुगाजो विचक्रमे महीं दिवं पृथिवीमन्तरिक्षं तच्छोणैति श्रवीच्छमाना पुण्यग्श्लोकैदमानाय गृह्णति अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां श्रवणनक्षत्रदेवतां श्री महाविष्णुं ध्यायामि आवाहयामि अष्टौ देवा वसवः सौम्यासः
चस्रो देवीरजला सविष्ठाः ते यज्ञं पान्धरजसः परस्तात् संवत्सरेण ममर्दग्गः स्वस्ति यज्ञन्नः पान्धवसवः पुरस्तात् दक्षिणतोऽभियन्तश्रविष्ठाः पुण्यन्नक्षत्रमभिदं विशाम मानो राधिरघशकुं सागन् अस्मिन् कुम्भेऽस्यां प्रतिमायां श्रविष्ठा नक्षत्रदेवतां वसून् ध्यायामि आवाहयामि क्षत्रस्य राजा वरुणोऽधिराजः नक्तन्नो नक्षत्रगुंशदभिजग्जुषाणं दीर्घमाजः प्रतिरद्धेशजानि अस्मिन् कुम्भेऽस्यां प्रतिमायां शतभिषं नक्षत्रदेवतां श्रीवरुणं ध्यायामि श्रीवरुणम् आवाहयामि अजयेकपादुदगात् तुलस्तात् विश्वाभूतानि प्रतिमोदमानः तस्य देवाः प्रसवयन्ति सर्वे प्रोष्ठपदासो अमृतस्य गोपाः विभ्राजमानः समिधान उग्रः आन्तरिक्षमरुहत गन्द्यां तकं सूर्यं देवमतमेकपादं प्रोष्ठपदासो नयन्ति सर्वे अस्मिन् कुम्भेऽस्यां प्रतिमायां पूर्वप्रोष्ठपदा नक्षत्रदेवताम् अजयेकपादं ध्यायामि अजयेकपादम् आवाहयामि अहिर्बुध्नयः प्रथमानयेति श्रेष्ठो देवानामुतमानुषाणां तं ब्राह्मणाः स्वामपाः सौम्यासः प्रोष्ठपदासो अभिरक्षन्ति सर्वे तत्वारयेकमभिकर्म देवाः प्रोष्ठपदासीति यान् वदन्ति ते बुद्धयं परिषद्यग्स्तवन्तः अहिगुं रक्षन्ति नमसोपसद्या अस्मिन् कुम्भेऽस्यां प्रतिमायाम् उत्तरप्रोष्ठपदा नक्षत्रदेवताम् अहिर्बुद्धयं ध्यायामि अहिर्बुद्धयम् आवाहयामि पोषारेवत्यन्वेति बन्धाम् पुष्टिपति पशुपावादवस्त्यौ इमानि हव्या प्रेतादुषाणा सुगैर्नोयानैर्वजाता यज्ञम् क्षुत्रान् वृषोन् रक्षुतरेवतीनः गावो नो अश्वागुम् मण्डेत पूषा अन्नकुम् रक्षन्तो बहुधा विरूपम् वाचकुम् सनुतानिदमानाय यज्ञम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां रेवती नक्षत्रदेवतां पूषणं ध्यायामि पूष्णम् आवाहयामि तदश्विनावश्वयुजोपजातां शुभङ्गमिष्टौ सुयमेभिरश्वैः स्वन्नक्षत्रकुं हविषाजन्तौ मद्वासं प्रक्तौ यजुषा समक्तौ तौ देवानां भिरजौ हव्यवाहौ विश्वस्य दोदावमृतस्य गोपौ तौ नक्षत्रं जुजुषा नोपजातां नमोऽश्वभ्यां कृणमोऽश्वयुग्भ्याम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् अश्विनी नक्षत्रदेवताम् आश्वयुजौ ध्यायामि आश्वयुजौ आवाहयामि अपपाप्मानं भरणेर्भरन्तो तद्यमो राजा भगवान् विचष्टां लोकस्य राजा महतो महान् हि सुगन्नः पांसामभयं गृणोतु यस्मिन् नक्षत्रे जमयति राजा यस्मिन्नेनमभ्यषञ्चन्त देवाः तस्य चित्रकं हविषाय धाम अपपाप्मानं भरणेर्भरन्तो अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् अपभरणी नक्षत्रदेवतां यमधर्मराजं ध्यायामि यमधर्मराजम् आवाहयामि 28 नक्षत्रदेवताभ्यो नमः अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् अभिजिन् नक्षत्रदेवतां ब्रह्माणं ध्यायामि ब्रह्माणम् आवाहयामि कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपहरण्यन्त 28 नक्षत्रदेवताभ्यो नमः आसनार्थं रत्नसिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि 28 नक्षत्रदेवताभ्यो नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरण्यन्त 28 नक्षत्रदेवताभ्यो नमः दिव्यमङ्गलवस्त्रोत्तरीयं समर्पयामि उपवीताभरणार्थे पुष्पाणि समर्पयामि गन्धकुङ्कुमाक्षतान् समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओं वरुणाय नमः ओं प्रचेतसे नमः ओं स्वरूपिणे नमः ओं अपाम्पतये नमः ओं मकरवाहनाय नमः ओं जलाधिपतये नमः ओं पाशहस्ताय नमः ओं तीर्थराजाय नमः ओं श्वेतच्छत्रधराय नमः ओं अनर्घमणिभूषणाय नमः ओं यातसाम्पतये नमः ओं वायुनिरतिमध्यस्थाय नमः ओं वाल्मीकिदाताय नमः
ओम मुनिपुंगवाय नमः ओम वरुणमूर्तये नमः ओम कृत्तिका नक्षत्र देवतायै अग्नये नमः ओम रोहिणी नक्षत्र देवतायै प्रजापतये नमः ओम मृगशिरो नक्षत्र देवतायै सोमाय नमः ओम आर्द्रा नक्षत्र देवतायै श्रीरुद्राय नमः ओम पुनर्सु नक्षत्र देवतायै आदित्यै नमः ओम पुष्य नक्षत्र देवतायै बृहस्पतये नमः ओम आश्लेषा नक्षत्र देवतायै सर्पराजाय नमः ओम मघा नक्षत्र देवताभ्यः पितृभ्यो नमः ओम पूर्वफल्गुनी नक्षत्र देवतायै अर्यम्ने नमः ओम उत्तरफल्गुनी नक्षत्र देवतायै भगाय नमः ओम हस्त नक्षत्र देवतायै सवित्रे नमः ओम चित्रा नक्षत्र देवतायै त्वष्ट्रे नमः ओम स्वाति नक्षत्र देवतायै वाजवे नमः ओम विशाखा नक्षत्र देवते इंद्राग्निभ्यां नमः ओम अनुराधा नक्षत्र देवतां मित्रायै नमः ओम ज्येष्ठा नक्षत्र देवतायै इंद्राय नमः ओम मूल नक्षत्र देवतायै प्रजापतये नमः ओम पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र देवताभ्यः अभ्यो नमः ओम उत्तराषाढ़ा नक्षत्र देवताभ्यः विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम श्रवण नक्षत्र देवतायै श्री महाविष्णवे नमः ओम श्रविष्ठा नक्षत्र देवताभ्यः वसुभ्यो नमः ओम सदभिषं नक्षत्र देवतायै वरुणाय नमः ओम पूर्व प्रोष्ठपदा नक्षत्र देवतायै अजयकपादाय नमः ओम उत्तर प्रोष्ठपदा नक्षत्र देवतायै अहिर्बुद्धियायै नमः ओम रेवती नक्षत्र देवतायै पूष्णे नमः ओम अश्विनी नक्षत्र देवताभ्याम् आशयुभ्यां नमः ओम अपभरणी नक्षत्र देवतायै धर्मराजाय नमः ओम अभिजिन् नक्षत्र देवतायै ब्रह्मणे नमः कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अभवरण्यन्त अष्टाविंशति नक्षत्र देवताभ्यो नमः नानाविध परिमल पत्र पुष्पाणि समर्पयामि ओम यत्पुरुषं यदसुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु काभूरोपादा उच्येते अष्टाविंशति नक्षत्र देवताभ्यो नमः अतिसुगन्धधूपमाघ्रापयामि ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरञ्जन्त अष्टाविंशति नक्षत्र देवताभ्यो नमः घृतवत्ति दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि भूद्भवस्तुवः चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः जायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अवभरण्यन्त अष्टाविंशति नक्षत्र देवताभ्यो नमः नानाविधफलसमूहानि एतत्सर्वं निवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि पूगी फलसमायुक्तं नागवल्लीदलैर्युतं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीर्ष्णाद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भवमर्तिश्रोत्रात् तथा लोकागम् अकल्पयन् अष्टाविंशति नक्षत्र देवताभ्यो नमः कर्पूरताम्बूलं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि ओम न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं हेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरण्यन्त अष्टाविंशति नक्षत्र देवताभ्यो नमः पूर्वाङ्गपूजान्ते कर्पूर नीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि दिव्यमङ्गलरक्षान् धारयामि ओम हरा ओम योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरण्यन्त अष्टाविंशति नक्षत्र देवताभ्यो नमः प्रार्थनाः वेदोक्त मंत्र पुष्पाञ्जलिं च समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि अनया पूजया आराधिताः सर्वा देवताः प्रीयन्ताम् ओम तत्सत् ओम वैश्वानराज विद्महे लालीलाज धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात् अग्नये नमः ओम अग्निं प्रतिष्ठाप्य
अग्निमिध्वा अग्निं प्रज्वाल्य वाक्तोयन्निधाय गोत्मवस्तुवः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदः प्रसुवा ओम अग्निर्नः पातु कृत्तिकाः नक्षत्रं देवमिन्द्रियम् इदमासां विचक्षणम् हविदासं जुहोतना यस्य भान्ति रश्मयो यस्य केतवः यस्येमा विश्वा भुवनानि सर्वाः सकृत्तिकाभिदभिदं वसानः अग्निर्नो देवस्तु विदे दधातु अस्मिन् यज्ञाग्नौ कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरण्यन्त 28 नक्षत्र देवताः ध्यायामि 28 नक्षत्र देवताः आवाहयामि 28 नक्षत्र देवताभ्यो नमः आसनं कल्पयामि नमः स्वाहा पाद्यं कल्पयामि नमः स्वाहा अर्घ्यं कल्पयामि नमः स्वाहा आचमनीयं कल्पयामि नमः स्वाहा स्नानं कल्पयामि नमः स्वाहा आचमनीयं कल्पयामि नमः स्वाहा वस्त्रोत्तरीयं कल्पयामि नमः स्वाहा पवीताभरणं कल्पयामि नमः स्वाहा गन्धकुङ्कुमाक्षतान् कल्पयामि नमः स्वाहा पुष्पमालां कल्पयामि नमः स्वाहा पुष्पैः पूजयामि ओम 28 नक्षत्र देवताभ्यो नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि धूपं कल्पयामि नमः स्वाहा दीपं कल्पयामि नमः स्वाहा नैवेद्यस्थाने यथा वसिक्तं नाद्योपहारं निवेदयामि नमः स्वाहा समस्तोपचारान् समर्पयामि ओम अग्निर्नः पातु कृत्तिकाः नक्षत्रं देवमिन्द्रियम् इदमासां विचक्षणम् हविरासं जुहोतना यस्य भान्ति रश्मयो यस्य केतवः यस्येमा विश्वा भुवनानि सर्वाः सकृत्तिकाभिदभिदं वसानः अग्निर्नो देवस्तु विदे दधातु स्वाहा अग्निर्नः पातु कृत्तिकाः नक्षत्रं देवमिन्द्रियम् इदमासां विचक्षणम् हविरासं जुहोतना यस्य भान्ति रश्मयो यस्य केतवः यस्येमा विश्वा भुवनानि सर्वाः सकृत्तिकाभिदभिदं वसानः अग्निर्नो देवस्तु विदे दधातु स्वाहा अग्निर्नः पातु कृत्तिकाः नक्षत्रं देवमिन्द्रियम् इदमासां विचक्षणम् हविरासं जुहोतना यस्य भान्ति रश्मयो यस्य केतवः यस्येमा विश्वा भुवनानि सर्वाः सकृत्तिकाभिदभिदं वसानः अग्निर्नो देवस्तु विदे दधातु स्वाहा अग्नये स्वाहा कृत्तिकाभ्यः स्वाहा अम्बायै स्वाहा दुलायै स्वाहा निदत्यै स्वाहा अभ्रयन्त्यै स्वाहा मेघयन्त्यै स्वाहा स्वाहा शुभनीकायै स्वाहा कृत्तिका नक्षत्र देवतायै अग्नये दण्डममा प्रजापते रोहिणी वेदपत्नी विश्वरूपा बृहती चित्रभानुः सा नो यज्ञस्य विदे दधातु यथा जीवेम शरदस्य वीराः रोहिणी देविदगात् तुरस्तात् विश्वारूपाणि प्रतिमोदमाना प्रजापतिगं हविषा वर्धयन्ति प्रिया देवानामवयातु यज्ञाग् स्वाहा प्रजापते रोहिणी वेदपत्नी विश्वरूपा बृहती चित्रभानुः सा नो यज्ञस्य विदे दधातु यथा जीवेम शरदस्य वीराः रोहिणी देविदगात् तुरस्तात् विश्वारूपाणि प्रतिमोदमाना प्रजापतिगं हविषा वर्धयन्ति प्रिया देवानामवयातु यज्ञाग् स्वाहा प्रजापते रोहिणी वेदपत्नी विश्वरूपा बृहती चित्रभानुः सा नो यज्ञस्य विदे दधातु यथा जीवेम शरदस्य वीराः रोहिणी देविदगात् तुरस्तात् विश्वारूपाणि प्रतिमोदमाना प्रजापतिगं हविषा वर्धयन्ति प्रिया देवानामवयातु यज्ञाग् स्वाहा प्रजापतये स्वाहा रोहिण्यै स्वाहा रोदमानायै स्वाहा प्रजाभ्यः स्वाहा रोहिणी नक्षत्र देवतायै प्रजापतये तन्नमः सोमो राजा मृगशीर्षेणागन् शिवन्नक्षत्रं प्रियमस्य धाम आप्यायमानो बहुधा जनेषु रेदः प्रजायतमाने ददातु यत्ते नक्षत्रं मृगशीर्षमस्ति प्रियगुं राजन् प्रियतमं प्रजानाम्
तस्मै ते सोम हविषा विधेम षण्णदेशिद्युपदेशं चतुष्पदे स्वाहा सोमो राजावकशीर्षेणागन् शिवन्नक्षत्रं भृजमस्य धाम आप्यायमानो बहुधा जनेषु रेतः प्रजायितमाने ददातो यत्र नक्षत्रं मृगशीर्षमस्ति प्रियगं राजन् प्रियतमं प्रजानाम् तस्मै ते सोम हविषा विधेम षण्णदेशिद्युपदेशं चतुष्पदे स्वाहा सोमाय स्वाहा मृगशीर्षाय स्वाहा इन्द्रकाभ्य स्वाहा ओषधीभ्यः स्वाहा रात्याय स्वाहा अभिजित्यै स्वाहा मृगशिरो नक्षत्रदेवतायै सोमायै दण्डमम आर्द्रजा रुद्रः प्रथमानयेति श्रेष्ठो देवानां पतिरग्निजानां नक्षत्रमस्य हविषा विधेम बाणः प्रजागमृर्षन्नोद वीरान् हेति रुद्रस्य परिणो वृणक्तो आर्द्रा नक्षत्रं जुषतागं हविर्नः प्रमुञ्चमानो दुरितान् विश्वा अपाघशकं सन्नुतावरातिग्स्वाहा आर्द्रजा रुद्रः प्रथमानयेति श्रेष्ठो देवानां पतिरग्निजानां नक्षत्रमस्य हविषा विधेम बाणः प्रजागमृर्षन्नोद वीरान् हेति रुद्रस्य परिणो वृणक्तो आर्द्रा नक्षत्रं जुषतागं हविर्नः प्रमुञ्चमानो दुरितान् विश्वा अपाघशकं सन्नुतावरातिग्स्वाहा आर्द्रजा रुद्रः प्रथमानयेति श्रेष्ठो देवानां पतिरग्निजानां नक्षत्रमस्य हविषा विधेम बाणः प्रजागमृर्षन्नोद वीरान् हेति रुद्रस्य परिणो वृणक्तो आर्द्रा नक्षत्रं जुषतागं हविर्नः प्रमुञ्चमानो दुरितान् विश्वा अपाघशकं सन्नुतावरातिग्स्वाहा रुद्राय स्वाहा आर्द्रायै स्वाहा पिण्डमानाय स्वाहा पशुभ्यः स्वाहा आर्द्रा नक्षत्रदेवतायै श्रीरुद्रायै दण्डमम पुनर्नो देव्यतिथि स्पृणोतो पुनर्वसो नः पुनरेतां यज्ञं पुनर्नो देवाभियन्तु सर्वे पुनः पुनर्वो हविषा इदामः देवान् देव्यतिथिर्नर्वा विश्वस्य भर्त्री जगतः प्रतिष्ठा पुनर्वसो हविषा वर्धयन्ति प्रियं देवानामप्येतुपाथ स्वाहा देव्यतिथि स्पृणोतो पुनर्वसो नः पुनरेतां यज्ञं पुनर्नो देवाभियन्तु सर्वे पुनः पुनर्वो हविषा इदामः देवान् देव्यतिथिर्नर्वा विश्वस्य भर्त्री जगतः प्रतिष्ठा पुनर्वसो हविषा वर्धयन्ति प्रियं देवानामप्येतुपाथ स्वाहा पुनर्नो देव्यतिथि स्पृणोतो पुनर्वसो नः पुनरेतां यज्ञं पुनर्नो देवाभियन्तु सर्वे पुनः पुनर्वो हविषा इदामः देवान् देव्यतिथिर्नर्वा विश्वस्य भर्त्री जगतः प्रतिष्ठा पुनर्वसो हविषा वर्धयन्ति प्रियं देवानामप्येतुपाथ स्वाहा अदित्यै स्वाहा पुनर्वसुभ्यागः स्वाहा अभूत्यै स्वाहा प्रजात्यै स्वाहा पुनर्वसु नक्षत्रदेवता आदित्यायै नमः बृहस्पतिः प्रथमं जायमानः शिष्यन्नक्षत्रमभिदं बभूव श्रेष्ठो देवानां वदनासु जिष्णुः दिशो सर्वाभयन्नोऽस्तु शिष्यः पुरस्तादुतमध्यतो नः बृहस्पतिर्नः परिपातु पश्चात् बाधेतां देशोभयं कृणुतां सुवीर्यस्य पतयस्याम स्वाहा बृहस्पतिः प्रथमं जायमानः शिष्यन्नक्षत्रमभिदं बभूव श्रेष्ठो देवानां वदनासु जिष्णुः दिशो सर्वाभयन्नोऽस्तु शिष्यः पुरस्तादुतमध्यतो नः बृहस्पतिर्नः परिपातु पश्चात् बाधेतां देशोभयं कृणुतां सुवीर्यस्य पतयस्याम स्वाहा बृहस्पतिः प्रथमं जायमानः शिष्यन्नक्षत्रमभिदं बभूव श्रेष्ठो देवानां वदनासु जिष्णुः दिशो सर्वाभयन्नोऽस्तु शिष्यः पुरस्तादुतमध्यतो नः बृहस्पतिर्नः परिपातु पश्चात् बाधेतां देशोभयं कृणुतां सुवीर्यस्य पतयस्याम स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा शिष्याय स्वाहा ब्रह्मवर्चसाय स्वाहा पुष्यनक्षत्रदेवतायै बृहस्पतये दण्डमम इदगुं सर्पेभ्यो हविरस्तुष्टम् आश्लेषादेशामनयन्ति चेदः ये अन्तरिक्षं पृथिवीं क्षियन्ति तेन सर्पासो हवमागमिष्ठाः ये सूर्यस्यापि सर्पाः ये दिवं देवीर्यस्यापि सर्पाः ये दिवं देवीमनुसञ्चरन्ति येषामाश्लेषा नियन्ति कामम् तेभ्यः सर्पेभ्यो मधुमज्जुहोमि स्वाहा
इदगुं सर्पेभ्यो हविरस्तु जुष्टम् आश्लेषादेषामनुयन्ति चेदः ये अन्तरिक्षं पृथिवीं क्षियन्ति तेन सर्पासो हवमागमिष्ठाः ये रोचनेषु यस्यापि सर्पाः ये दिवं देवीं सञ्चरन्ति येषामाश्लेषानियन्ति कामम् तेभ्यः सर्पेभ्यः मधुमज्जुहोमि स्वाहा सर्पेभ्यः स्वाहा आश्लेषाभ्यः स्वाहा दन्तशूकेभ्यः स्वाहा आश्लेषा नक्षत्रदेवतायै सर्पराजायै दण्डममा उपहूता पितरो ये मघासो मनोदवसः सुकृतः तेनो नक्षत्रे हवमागमिष्ठाः सुधाभिर्यज्ञं वरे दञ्जुषन्ताम् ये अग्निदग्धा येनग्निदग्धाः ये मल्लोकं पितरः क्षियन्ति यागस्य विद्मयागं जनप्रविद्मा मघासु यज्ञकं सुकृतञ्जुषन्तागस्वाहा उपहूता पितरो ये मघासो मनोदवसः सुकृतः तेनो नक्षत्रे हवमागमिष्ठाः सुधाभिर्यज्ञं वरे दञ्जुषन्ताम् ये अग्निदग्धा येनग्निदग्धाः ये मल्लोकं पितरः क्षियन्ति यागस्य विद्मयागं जनप्रविद्मा मघासु यज्ञकं सुकृतञ्जुषन्तागस्वाहा बहुधा पितरो ये मघासो मनोदवसः सुकृतः तेनो नक्षत्रे हवमागमिष्ठाः सुधाभिर्यज्ञं वरे दञ्जुषन्ताम् ये अग्निदग्धा येनग्निदग्धाः ये मल्लोकं पितरः क्षियन्ति यागस्य विद्मयागं जनप्रविद्मा मघासु यज्ञकं सुकृतञ्जुषन्तागस्वाहा पितृभ्यः स्वाहा मघाभ्यः स्वाहा अनघाभ्यः स्वाहा अगदाभ्यः स्वाहा अरुन्धतीभ्यः स्वाहा मघानक्षत्रदेवताभ्यः पितृभ्यै दण्डममा गवां पतिः फल्गुनी नाम सित्वं सुदर्यमन्वरुणमित्रचारो तन्त्वावयगं सनिदारगं सनीनां जीवाजीवन्तमुपसंविषेम ये नेमा विश्वाभुवनानि सञ्चिता यस्य देवानुसंयन्ति चेदः अर्यमाराजास्तुष्मान् फल्गुनी नाम जभोरारवीति स्वाहा गवां पतिः फल्गुनी नाम सित्वं सुदर्यमन्वरुणमित्रचारो तन्त्वावयगं सनिदारगं सनीनां जीवाजीवन्तमुपसंविषेम ये नेमा विश्वाभुवनानि सञ्चिता यस्य देवानुसंयन्ति चेदः अर्यमाराजातरस्तुष्मान् फल्गुनी नाम जभोरारवीति स्वाहा गवां पतिः फल्गुनी नाम सित्वं सुदर्यमन्वरुणमित्रचारो तन्त्वावयगं सनिदारगं सनीनां जीवाजीवन्तमुपसंविषेम ये नेमा विश्वाभुवनानि सञ्चिता यस्य देवानुसंयन्ति चेदः अर्यमाराजातरस्तुष्मान् फल्गुनी नाम जभोरारवीति स्वाहा अर्यम्ने स्वाहा फल्गुनीभ्याग स्वाहा पशुभ्यः स्वाहा पूर्वफल्गुनी नक्षत्रदेवतायै अर्यम्ने दण्डममा श्रेष्ठो देवानां भगवो भगासि तत्त्वाविदुः फल्गुनी सस्य वित्तात् आत्मभ्यं क्षत्रमजरगं सुवीर्यं गोमदश्च वदपसन्नु देह भगोः दाता भगजित्वदाता भगो देवी फल्गुनीजा विवेश भगस्य तम्बसवङ्कमेम यत्र देवैषधमादं वदेम स्वाहा श्रेष्ठो देवानां भगवो भगासि तत्त्वाविदुः फल्गुनी सस्य वित्तात् आत्मभ्यं क्षत्रमजरगं सुवीर्यं गोमदश्च वदपसन्नु देह भगोः दाता भगजित्वदाता भगो देवी फल्गुनीजा विवेश भगस्य तम्बसवङ्कमेम यत्र देवैषधमादं वदेम स्वाहा श्रेष्ठो देवानां भगवो भगासि तत्त्वाविदुः फल्गुनी सस्य वित्तात् आत्मभ्यं क्षत्रमजरगं सुवीर्यं गोमदश्च वदपसन्नु देह भगोः दाता भगजित्वदाता भगो देवी फल्गुनीजा विवेश भगस्य तम्बसवङ्कमेम यत्र देवैषधमादं वदेम स्वाहा भगाय स्वाहा फल्गुनीभ्याग स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहा उत्तरफल्गुनी नक्षत्रदेवतायै भगायै दण्डममा आयातु देवस्तवितोपजातो हिरण्यजेन सुभृतारथेन वाहनहस्तकं सुभगं वित्तनाभदं प्रयच्छन्तं बपुरिं पुण्यमच्च हस्तप्रयच्छत्वमृतं वसीयः दक्षिणेन प्रतिगृह्णीमयेन दातारमध्यसविदा विधेय यो नो हस्ताय प्रसवातु यज्ञस्वाहा आयातु देवस्तवितोपजातो हिरण्यजेन सुभृतारथेन वाहनहस्तकं सुभगं वित्तनाभदं प्रयच्छन्तं बपुरिं पुण्यमच्च हस्तप्रयच्छत्वमृतं वसीयः दक्षिणेन प्रतिगृह्णीमयेन दातारमध्यसविदा विधेय यो नो हस्ताय प्रसवातु यज्ञस्वाहा आयातु देवस्तवितोपजातो हिरण्यजेन सुभृतारथेन वाहनहस्तकं सुभगं वित्तनाभदं
प्रयच्छन्दं बपुरेमन्यमच्छ हस्तप्रयच्छत्वमृतं वशीयः दक्षिणेन प्रतिगृह्णीमजेन च दातारमधिषविदा विधेय यो नो हस्ताय प्रसवादि यज्ञः स्वाहा सवित्रे स्वाहा हस्ताय स्वाहा ददते स्वाहा प्रणते स्वाहा प्रयच्छते स्वाहा प्रतिगृह्णते स्वाहा हस्तनक्षत्रदेवताजी सवित्रे दण्डममा त्वष्टा नक्षत्रमभ्येति चित्राम् शुभगंसंयुवतिकं रोधमानाम् निवेशयन्नमृतान्मर्त्यागश्च लोपानिभिगंसन्धवनान् विश्वा तन्नष्टस्तादुचित्राविदष्टाम् तन्नक्षत्रम् भूरिदास्तु मह्यम् तन्नः प्रजां वीरवतीगुं सनोतो गोभिर्नोऽश्वैः समनक्त्यज्ञः स्वाहा त्वष्टा नक्षत्रमभ्येति चित्राम् शुभगंसंयुवतिकं रोधमानाम् निवेशयन्नमृतान्मर्त्यागश्च लोपानिभिगंसन्धवनान् विश्वा तन्नस्त्वष्टादितचित्राविदष्टाम् तन्नक्षत्रम् भूरिदास्तु मह्यम् तन्नः प्रजां वीरवतीगुं सनोतो गोभिर्नोऽश्वैः समनक्त्यज्ञः स्वाहा शुभगंसंयुवतिकं रोधमानाम् निवेशयन्नमृतान्मर्त्यागश्च लोपानिभिगंसन्धवनान् विश्वा तन्नस्त्वष्टादितचित्राविदष्टाम् तन्नक्षत्रम् भूरिदास्तु मह्यम् तन्नः प्रजां वीरवतीगुं सनोतो गोभिर्नोऽश्वैः समनक्त्यज्ञः स्वाहा स्वाहा चित्रायै स्वाहा चैत्राय स्वाहा प्रजायै स्वाहा चित्रा नक्षत्रदेवतायै त्वष्ट्रे दण्डममा वाजुर्नक्षत्रमभ्येति दृष्ट्याम् दिग्वशङ्गोवशभोरोर्वाणः समीरयन्धवनामातरिष्वा अपत्येषाकं शनदतामरातीः तन्नो वायुस्तु निष्ट्या शृणोतु तन्नक्षत्रम् भूरिदास्तु मह्यम् तन्नो देवासो न जानन्तु कामम् यथा दरेम दुरितान् विश्वा स्वाहा वायुर्नक्षत्रमभ्येति निष्ट्याम् दिग्मशङ्गोवशभोरोर्वाणः समीरयन्धवनामातरिष्वा अपत्येषाकं शनदतामरातीः तन्नो वायुस्तु निष्ट्या शृणोतु तन्नक्षत्रम् भूरिदास्तु मह्यम् तन्नो देवासो न जानन्तु कामम् यथा दरेम दुरितान् विश्वा स्वाहा वाजुर्नक्षत्रमभ्येति निष्ट्याम् दिग्मशङ्गोवशभोरोर्वाणः समीरयन्धवनामातरिष्वा अपत्येषाकं शनदतामरातीः तन्नो वायुस्तु निष्ट्या शृणोतु तन्नक्षत्रम् भूरिदास्तु मह्यम् तन्नो देवासो न जानन्तु कामम् यथा दरेम दुरितान् विश्वा स्वाहा वायवे स्वाहा निष्ट्यायै स्वाहा कामताराय स्वाहा अभिजित्यै स्वाती नक्षत्रदेवतायै वाजवे दण्डममा दूरमस्मच्छत्रो यन्तु भीताः तदिन्द्राग्नेकृणुता तद्विशाखे तन्नो देवानमदन्तु यज्ञम् पश्चात्तुरस्तादभयन्नोऽस्तु नक्षत्राणामधिपत्यै विशाखे श्रेष्ठाविन्दाग्ने भुवनस्य गोपौ विशोजशत्रूनुपबाधमानौ अपकृषणुतामरातिग्धस्वाहा दूरमस्मच्छत्रवो यन्तु भीताः तदिन्द्राग्नेकृणुताम् तद्विशाखे तन्नो देवानुमदन्तु यज्ञम् पश्चात्तुरस्तादभयन्नोऽस्तु नक्षत्राणामधिपत्यै विशाखे श्रेष्ठाविन्दाग्ने भुवनस्य गोपौ विशोजशत्रूनुपबाधमानौ अपकृषणुतामरातिग्धस्वाहा दूरमस्मच्छत्रवो यन्तु भीताः तद्विशाखे तन्नो देवानुमदन्तु यज्ञम् पश्चात्तुरस्तादभयन्नोऽस्तु नक्षत्राणामधिपत्यै विशाखे श्रेष्ठाविन्दाग्ने भुवनस्य गोपौ विशोजशत्रूनुपबाधमानौ अपकृषणुतामरातिग्धस्वाहा इन्द्राग्निभ्यागस्वाहा विशाखाभ्यागस्वाहा श्रेष्ठ्याय स्वाहा अभिजित्यै स्वाहा विशाखा नक्षत्रदेवते इन्द्राग्निभ्याम् इदण्डममा रुद्ध्यास्महव्यैर्नमसोपसज्य मित्रम् देवम् मित्रधेजन्नोऽस्तु अनोराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवेम शरदशवीराः चित्रन्नक्षत्रमुदगात् तुरस्तात् अनोराधासीद् यद्दन्ति तन्मित्रयेति पथिभिर्देवजानैः हिरण्यैर्हृदैरन्तरिक्षे स्वाहा रज्जास्महव्यैर्नमसोपसज्य मित्रम् देवमित्रधेजन्नोऽस्तु अनोराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवेम शरदशवीराः चित्रन्नक्षत्रमुदगात् तुरस्तात् अनोराधासीद् यद्दन्ति तन्मित्रयेति पथिभिर्देवजानैः हिरण्यैर्हृदैरन्तरिक्षे स्वाहा
వసుధ్యాస్మహవ్యైరమసోపసజ్య మిత్రం దేవమిత్రధేజన్నోస్తు అనోరాధాన హవిషా వర్ధయంతః శతం జీవేమ శరదశ్వ వీరాः చిత్రం నక్షత్రముదగాత్రస్తాత్ అనోరాధాసిద్యజ్దంతి తన్మిత్రయతి బధివర్దేవ జానైః హిరణ్యజైరతైరంతరిక్షే స్వాహా మిత్రాయ స్వాహా అనోరాధేభ్య స్వాహా మిత్రధేజాయ స్వాహా అభిజిత్యై స్వాహా అనురాధా నక్షత్రదేవతాయీ మిత్రాయే దండ మమ ఇంద్రో జ్యేష్ఠామణ నక్షత్రమేతి యస్మిన్ రత్రం రత్రసూర్యతారా తస్మిన్ వజమమృతందుహానా కృషందరే మధురిందృష్టిం పురంధరాయ షడభాయ షష్టవే షాఢాయ సహమానాయ వీధుజే ఇంద్రాయ జ్యేష్ఠామధమద్దుహానా ఉరుంగుణోద యజమానాయ లోకగ్స్వాహా ఇంద్రో జ్యేష్ఠామణ నక్షత్రమేతి యస్మిన్ రత్రం రత్రసూర్యతారా తస్మిన్ వజమమృతందుహానా కృషందరే మధురిందృష్టిం పురంధరాయ షడభాయ షష్టవే షాఢాయ సహమానాయ వీధుజే ఇంద్రాయ జ్యేష్ఠామధమద్దుహానా పురంగుణోద యజమానాయ లోకగ్స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా జ్యేష్ఠాయై స్వాహా జ్యేష్ఠాయ స్వాహా అభిజిత్యై స్వాహా జ్యేష్ఠా నక్షత్రదేవతాయై ఇంద్రాయే దండ మమ మూలం భజాం వీరవతీం విదేయ పరాచేతనుర్రతిః పరాచ గోభిర్నక్షత్రమశభిస్తమగ్నం ఆర్భోజాదిజమానాజమహ్యం ఆర్నాద్యుత విదేతు దాతు మూలన్నక్షత్రమితి యజ్దంతి పరాచీం వాచాన్నిరతిన్నదామి శివం ప్రజాజీ శివమస్తు మహ్యగ్స్వాహా మూలం ప్రజాం వీరవతీం విదేయ పరాచేతనుర్రతిః పరాచ గోభిర్నక్షత్రమశభిస్తమగ్నం ఆర్భోజాదిజమానాజమహ్యం ఆర్నాద్యుత విదేతు దాతు మూలన్నక్షత్రమితి యజ్దంతి పరాచీం వాచాన్నిరతిన్నదామి శివం ప్రజాయే శివమస్తు మహ్యగ్స్వాహా మూలం ప్రజాం వీరవతీం విదేయ పరాచేతనుర్రతిః పరాచ గోభిర్నక్షత్రమశభిస్తమగ్నం ఆర్భోజాదిజమానాజమహ్యం ఆర్నోద్యుత విదేతు దాతు మూలన్నక్షత్రమితి యజ్దంతి పరాచీం వాచాన్నిరతిన్నదామి శివం ప్రజాయే శివమస్తు మహ్యగ్స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా మూలాయ స్వాహా ప్రజాయై స్వాహా మూలనక్షత్రదేవతాయై ప్రజాపతయే దండ మమ యా దివ్యా వయసా సంబభోవః యా అంతరిక్షౌతపార్థవీర్యాః యా సామషాఢా నియంతి కామం తానా పశ్యగ్స్యోనాభవంతో యాశ్చ గోప్యాయాశ్చ నాట్యాः సముద్రయాः యాశ్చ వేషంతి ఋతుప్రాసచీర్యాः యా సామషాఢామసి భక్షయంతి తానా పశ్యగ్స్యోనాభవంతో స్వాహా యా దివ్యా వయసా సంబభోవః యా అంతరిక్షౌతపార్థవీర్యాः యా సామషాఢా నియంతి కామం తానా పశ్యగ్స్యోనాభవంతో యాశ్చ గోప్యాయాశ్చ నాట్యాः సముద్రయాः యాశ్చ వేషంతి ఋతుప్రాసచీర్యాः యా సామషాఢామసి భక్షయంతి తానా పశ్యగ్స్యోనాభవంతో స్వాహా యా దివ్యా వయసా సంబభోవః యా అంతరిక్షౌతపార్థవీర్యాः యా సామషాఢా నియంతి కామం తానా పశ్యగ్స్యోనాభవంతో యాశ్చ గోప్యాయాశ్చ నాట్యాः సముద్రయాः యాశ్చ వేషంతి ఋతుప్రాసచీర్యాः యా సామషాఢామసి భక్షయంతి తానా పశ్యగ్స్యోనాభవంతో అభ్య స్వాహా అషాఢాభ్య స్వాహా సముద్రాయ స్వాహా కామాయ స్వాహా అభిజిత్యై స్వాహా పూర్వాషాఢా నక్షత్రదేవతాభ్యః అద్య ఇదండ మమ తన్నో విశ్వేవ శృణ్వంతు దేవాః సుదషాఢాభిషయ్యంతు యజ్ఞాం తన్నక్షత్రం వర్ధతాం పశుభ్యః కృషర్వృష్టిర్యజమానాయ కల్పతాం శుభ్రాः కన్యాయవతయः సుపేషతः కర్మగతः సుకృతా వీర్యావతీः విశ్వాన్ దేవాన్ హవిషా వర్ధయంతీః అషాఢాః కామముపజాంతు యజ్ఞగ్స్వాహా తన్నో విశ్వేవ శృణ్వంతు దేవాః సుదషాఢాభిషయ్యంతు యజ్ఞాం తన్నక్షత్రం వర్ధతాం పశుభ్యః కృషర్వృష్టిర్యజమానాయ కల్పతాం శుభ్రాः కన్యాయవతయः సుపేషతः కర్మగతः సుకృతా వీర్యావతీः విశ్వాన్ దేవాన్ హవిషా వర్ధయంతీః అషాఢాః కామముపజాంతు యజ్ఞగ్స్వాహా తన్నో విశ్వేవ శృణ్వంతు దేవాః సుదషాఢాభిషయ్యంతు యజ్ఞాం తన్నక్షత్రం వర్ధతాం పశుభ్యః కృషర్వృష్టిర్యజమానాయ కల్పతాం శుభ్రాः కన్యాయవతయः సుపేషతः కర్మగతः సుకృతో వీర్యావతీः విశ్వాన్ దేవాన్ హవిషా వర్ధయంతీః
अषाढाः कामुपजातु यज्ञः स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा अषाढाभ्यः स्वाहा अनपदीयाय स्वाहा जित्यै स्वाहा उत्तराषाढा नक्षत्रदेवताभ्यः विश्वेभ्यो देवेभ्यो इदं नमः शृण्वन्ति श्रोणाममुदस्य गोपां पुञ्जामस्यां पशुनामि वाचं महीं देवीमिष्टपत्नीमथोर्यां प्रतीतिमेनागं हविषाय दामः श्रेधा विष्णुरुगाजो विधक्रमे महीं दिवं वसवीमन्तरिक्षां तच्छ्रोणयिष्टवैत्समाना पुण्यग्रश्लोकैदवानाय गणपति स्वाहा शृण्वन्ति श्रोणाममुदस्य गोपां पुञ्जामस्यां पशुनामि वाचं महीं देवीमिष्टपत्नीमथोर्यां प्रतीतिमेनागं हविषाय दामः श्रेधा विष्णुरुगाजो विधक्रमे महीं दिवं वसवीमन्तरिक्षां तत्श्रोणयिष्टवैत्समाना पुण्यग्रश्लोकैदवानाय गणपति स्वाहा शृण्वन्ति श्रोणाममुदस्य गोपां पुञ्जामस्यां पशुनामि वाचं महीं देवीमिष्टपत्नीमथोर्यां प्रतीतिमेनागं हविषाय दामः श्रेधा विष्णुरुगाजो विधक्रमे महीं दिवं वसवीमन्तरिक्षां तत्श्रोणयिष्टवैत्समाना पुण्यग्रश्लोकैदवानाय गणपति स्वाहा विष्णवे स्वाहा श्रोणायै स्वाहा श्लोकाय स्वाहा श्रुताय स्वाहा श्रवणनक्षत्रदेवतायै श्रीमहाविष्णवे नमः अष्टौ देवा वसवः सौम्यासः सहस्रो देवीर्धराश्रविष्ठाः ते यज्ञं पान् रजतः परस्तात् संवत्सरेण मृदग्रः स्वस्ति यज्ञन्नः पान् रजतः पुरस्तात् दक्षिणतोऽभियन्तश्रविष्ठाः पुण्यन्नक्षत्रमभिदं विशाम मानोरातिरघलकं सागं स्वाहा अष्टौ देवासवः सौम्यासः सहस्रो देवीर्धराश्रविष्ठाः ते यज्ञं पान् रजतः परस्तात् संवत्सरेण मृदग्रः स्वस्ति यज्ञन्नः पान् वसवः पुरस्तात् दक्षिणतोऽभियन्तश्रविष्ठाः पुण्यन्नक्षत्रमभिदं विशाम मानोरातिरघलकं सागं स्वाहा अष्टौ देवासवः सौम्यासः सहस्रो देवीर्धराश्रविष्ठाः ते यज्ञं पान् रजतः परस्तात् संवत्सरेण मृदग्रः स्वस्ति यज्ञन्नः पान् वसवः पुरस्तात् दक्षिणतोऽभियन्तश्रविष्ठाः पुण्यन्नक्षत्रमभिदं विशाम मानोरातिरघलकं सागं स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा श्रविष्ठाभ्यः स्वाहा अग्राय स्वाहा परीत्यै स्वाहा श्रविष्ठा नक्षत्रदेवताभ्यः वसुभ्यै नमः क्षत्रस्य राजा वरुणोऽधिराजः नक्षत्राणागं शतभिषग्वसिष्ठः तौ देवेभ्यः कृणुतो दीर्घमायुः श्रुतकं सहस्राभेषजानि धत्तः यज्ञन्नो राजा वरुणोपयातो तन्नो विश्वे अभिसंयन्तु देवाः तन्नो नक्षत्रकं शतभिषग्जुषाणं दीर्घमायुः प्रतिरद्भेषजानि स्वाहा क्षत्रस्य राजा वरुणोऽधिराजः नक्षत्राणागं शतभिषग्वसिष्ठः तौ देवेभ्यः कृणुतो दीर्घमायुः श्रुतकं सहस्राभेषजानि धत्तः यज्ञन्नो राजा वरुणोपयातो तन्नो विश्वे अभिसंयन्तु देवाः तन्नो नक्षत्रकं शतभिषग्जुषाणं दीर्घमायुः प्रतिरद्भेषजानि स्वाहा क्षत्रस्य राजा वरुणोऽधिराजः नक्षत्राणागं शतभिषग्वसिष्ठः तौ देवेभ्यः कृणुतो दीर्घमायुः श्रुतकं सहस्राभेषजानि धत्तः यज्ञन्नो राजा वरुणोपयातो तन्नो विश्वे अभिसंयन्तु देवाः तन्नो नक्षत्रकं शतभिषग्जुषाणं दीर्घमायुः प्रतिरद्भेषजानि स्वाहा वरुणाय स्वाहा शतभिषजे स्वाहा मेघदेभ्यः स्वाहा शतभिषं नक्षत्रदेवतायै श्रीवरुणायै नमः अदयेकपादुदगात् तुरस्तात् विश्वाभूतानि प्रतिमोदमानः तस्य देवाः प्रसवयन्ति सर्वे प्रोष्ठपदासो अमृतस्य गोपाः विभ्राजमानस्य विधानमुग्रः आन्तरिक्षमुरहतगन्त्यां तगं सूर्यं देवपदमेकपादं प्रोष्ठपदासो नियन्ति सर्वे स्वाहा अदयेकपादुदगात् तुरस्तात् विश्वाभूतानि प्रतिमोदमानः तस्य देवाः प्रसवयन्ति सर्वे प्रोष्ठपदासो अमृतस्य गोपाः विभ्राजमानस्य विधानमुग्रः आन्तरिक्षमुरहतगन्त्यां तगं सूर्यं देवपदमेकपादं प्रोष्ठपदासो नयन्ति सर्वे स्वाहा अदयेकपादुदगात् तुरस्तात् विश्वाभूतानि प्रतिमोदमानः तस्य देवाः प्रसवयन्ति सर्वे प्रोष्ठपदासो अमृतस्य गोपाः विभ्राजमानस्य विधानमुग्रः आन्तरिक्षमुरहतगन्त्यां तगं सूर्यं देवपदमेकपादं
प्रोष्ठपदासोऽनयन्ति सर्वे स्वाहा स्वाहा प्रोष्ठपदेभ्यः स्वाहा तेजसे स्वाहा ब्रह्मवर्चसाय स्वाहा पूर्वप्रोष्ठपदा नक्षत्रदेवतायै अजयेकपादायै दण्डममा अहिर्बुद्धयः प्रथमानयेति श्रेष्ठो देवानामुतमानुषाणां तं ब्राह्मणा स्वापपा सौम्यादः प्रोष्ठपदासोऽभिरक्षन्ति सर्वे चत्वारेकमभिकर्म देवाः प्रोष्ठपदासीति यान् वदन्ति ते बुद्धयं रजत्यग्रस्तुवन्तः अहिगं रक्षन्ति नमसा वसद्यः स्वाहा अहिर्बुद्धयः प्रथमानयेति श्रेष्ठो देवानामुतमानुषाणां तं ब्राह्मणा स्वापपा सौम्यासः प्रोष्ठपदासोऽभिरक्षन्ति सर्वे चत्वारेकमभिकर्म देवाः प्रोष्ठपदासीति यान् वदन्ति ते बुद्धयं रजत्यग्रस्तुवन्तः अहिगं रक्षन्ति नमसा वसद्यः स्वाहा अहिर्बुद्धयः प्रथमानयेति श्रेष्ठो देवानामुतमानुषाणां तं ब्राह्मणा स्वापपा सौम्यासः प्रोष्ठपदासोऽभिरक्षन्ति सर्वे चत्वारेकमभिकर्म देवाः प्रोष्ठपदासीति यान् वदन्ति ते बुद्धयं रजत्यग्रस्तुवन्तः अहिगं रक्षन्ति नमसा वसद्यः स्वाहा अहये बुद्धयाय स्वाहा प्रोष्ठपदेभ्यः स्वाहा प्रतिष्ठायै स्वाहा पुत्रप्रोष्ठपदा नक्षत्रदेवतायै अहिर्बुद्धयादे दण्डममा पूषारेवत्यन्वेति बन्धाम् पुष्टिपदे पशुपावादवस्त्यो इमानि हव्या प्रेतादुषाना सुखैर्नोजानैर्वजाता यज्ञाम् क्षुद्रान् ऋषो नक्षत्ररेवतीनः गावो नोऽश्वागुम् मन्वेत पूषा अन्नगुम् रक्षन्तो बहुधा विरूपम् वाचकम् सनता यजमानादियज्ञः स्वाहा पूषारेवत्यन्वेति बन्धाम् पुष्टिपदे पशुपावादवस्त्यो इमानि हव्या प्रेतादुषाना सुखैर्नोजानैर्वजाता यज्ञम् क्षुद्रान् ऋषो नक्षत्ररेवतीनः गावो नोऽश्वागुम् मन्वेत पूषा अन्नगुम् रक्षन्तो बहुधा विरूपम् वाचकम् सनता यजमानादियज्ञः स्वाहा पूषारेवत्यन्ते जिवन्ताम् पुष्टिपदे पशुपावादवस्त्यो इमानि हव्या प्रेतादुषाना सुखैर्नोजानैर्वजाता यज्ञम् क्षुद्रान् ऋषो नक्षत्ररेवतीनः गावो नोऽश्वागुम् मन्वेत पूषा अन्नगुम् रक्षन्तो बहुधा विरूपम् वाचकम् सनता यजमानादियज्ञः स्वाहा पूष्णे स्वाहा रेवत्यै स्वाहा पशुभ्यः स्वाहा रेवती नक्षत्रदेवतायै पूष्णे दण्डममा तदश्विनावश्वयुजोपजाता शुभङ्गमिष्टोऽधियमेभिरश्वैः सन्नक्षत्रम् अभिषाजन्तौ मद्वासम् प्रक्तौ यजुषा समक्तौ तौ देवानाम् हृदो हव्यवाहो विश्वस्य दोता वमदस्य गोपौ तौ नक्षत्रम् ज्योतिषा नोपजाता नमोषुभ्यां स्वाहा तदश्विनावश्वयुजोपजाता शुभङ्गमिष्टोऽधियमेभिरश्वैः सन्नक्षत्रम् अभिषाजन्तौ मद्वासम् प्रक्तौ यजुषा समक्तौ यौ देवानाम् हृदो हव्यवाहो विश्वस्य दोता वमदस्य गोपौ तौ नक्षत्रम् ज्योतिषा नोपजाता नमोषुभ्यां स्वाहा तदश्विनावश्वयुजोपजाता शुभङ्गमिष्टोऽधियमेभिरश्वैः सन्नक्षत्रकम् हविषाजन्तौ मद्वासम् प्रक्तौ यजुषा समक्तौ यौ देवानाम् हृदो हव्यवाहो विश्वस्य दोता वमदस्य गोपौ तौ नक्षत्रम् ज्योतिषा नोपजाता नमोषुभ्यां स्वाहा आश्वयुभ्याग स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा श्रोत्यै स्वाहा अश्विनी नक्षत्रदेवताभ्याम् आश्वयुभ्याम् इदण्डममा अपपाप्मानम् भरणीर्भरन्तो तद्यमो राजा भगवान् विजष्टाम् लोकस्य राजा महतो महान् हि सुगन्नः पंसाम् भयम् कृणोतु यस्मिन् नक्षत्रे जमयेति राजा यस्मिन्यन्मभिषञ्जन्तु देवाः चित्रकम् हविषायिधामा अपपाप्मानम् भरणीर्भरन्तु स्वाहा अपपाप्मानम् भरणीर्भरन्तो तद्यमो राजा भगवान् विजष्टाम् लोकस्य राजा महतो महान् हि सुगन्नः पंसाम् भयम् कृणोतु यस्मिन् नक्षत्रे जमयेति राजा यस्मिन्यन्मभ्यजुञ्जन्त देवाः सुरस्य चित्रकम् हविषायिधामा अपपाप्मानम् भरणीर्भरन्तु स्वाहा अपपाप्मानम् भरणीर्भरन्तो तद्यमो राजा भगवान् विजष्टाम् लोकस्य राजा महतो महान् हि सुगन्नः पंसाम् भयम् कृणोतु यस्मिन् नक्षत्रे जमयेति राजा यस्मिन्यन्मभ्यजुञ्जन्त देवाः सुरस्य चित्रकम् हविषायिधामा अपपाप्मानम् भरणीर्भरन्तु स्वाहा यमाय स्वाहा अपभरणीभ्यः स्वाहा
राज्याय स्वाहा अभिजित्यै स्वाहा अपभरणी नक्षत्र देवतायै यमधर्मराजायै दण्डमः ओम पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरण्यन्त 28 नक्षत्र देवताभ्यो नमः गंध पुष्पाक्षत कुंकुम फलतांबूलसहिता महापूर्णाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा सप्तते अग्ने समिधः सप्त जिह्वा सप्त ऋषय सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति प्रणस्वाघृतेन स्वाहा अग्नये सप्तपते दण्डमः प्रायश्चित्तं प्राणायामम् कृष्ण 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 अदितेन्द्वमग्रस्थाः अनुमतेन्द्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्द्वमग्रस्थाः देवसविदः प्रासावीः वरुणाय नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि स्वाहा अग्नेरुपस्थानं करिष्ये मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशना यद्वदन्तुमजादेव परिपूर्णं ततस्तुते प्रायश्चित्तानि शेषानि तपः कर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं जलम् कृष्णाय नमः कृष्ण 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 28 नक्षत्र देवता प्रसादेन सर्वेषां महाजनानाम् आरोग्य भाग्य वेदोक्त शतायुः सम्पूर्णता सिद्धिरस्तु 28 नक्षत्र देवता प्रीयन्ताम् ओम सोमो वायेतस्य राज्यमादत्ते यो राजासन् राज्यो वासो मे नयजते देवसुभामेतानि हवीगुंषु भवन्ति एतावन्तो वै देवानागुं सवाः स एवास्मै सवान् प्रयच्छन्ति तदेनं पुनस्तुवन्ते राज्याय देवसु राजा भवति कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरण्यन्त 28 नक्षत्र देवताभ्यो नमः समस्तापराध क्षमापनार्थं सर्वमंगल प्राप्त्यर्थं सर्वेषाम् आरोग्य भाग्य वेदोक्त शतायुः सम्पूर्णता सिद्ध्यर्थं कर्पूर नीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि दिव्यमंगल रक्षान् धारयामि ओम हरा ओम योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चंद्रमा वा पां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्य महेश्वरः कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरण्यन्त 28 नक्षत्र देवताभ्यो नमो नमः प्रार्थना पूर्वकं प्रदक्षिण नमस्कार पूर्वकं वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि छत्रं समर्पयामि चामरं बीजयामि नृत्यं दर्शयामि आंदोलिकां समर्पयामि समस्त राजोपचार देवोपचार शक्योपचार भक्त्योपचार षोडशोपचार पूजा समर्पयामि यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते अनागं महिमानस्य दन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते इदमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुषकं समानाजः प्रमोषीः अस्मात् कुम्भात् आवाहित वरुण सहित 28 नक्षत्र देवताः यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च ओम ध्रुवदादिवेन्ममुधानः स्विन्नस्तावीवरादिव भूतं पवित्रेणेवाद्यम् आपश्चुषणत्वमैनतः भोद्भवस्सुभो भोद्भवस्सुभो भोद्भवस्सुभः ओम श्रीजमेवावरुन्धे शीतेवाते पुनर्नवेत्याः क्षेमो वै राष्ट्रस्य शीतो वरदः क्षेममेवावरुन्धे आराधित 28
नक्षत्रदेवतानां प्रसादेन धार्यन्धरं बहुमुत्तराभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः। ॐ ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं पर्वत इवा विचाचलिः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आगमार्तंद देवानां गमनार्तंद रक्षतां गुरुगंडारं तत्र देवतात्मानलांजनं गंडांतरिषन्दाढ्या गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विडजे पौरोहिणां निधये सर्वविद्यानां श्री दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। मौनव्याह्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं सदा वसिष्ठान् देवज्ञैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलिसन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्माराममुदितवदनं श्रीदक्षिणामूर्तिमीडे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फुटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां श्रीहयग्रीवोपास्महे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारम्भं करिष्यामि पूजारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। उरुवाय अरुवाय उळदाय इलदाय मरुवाय मलराय मणियाय ஒளியாய் கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குஹனே குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குஹனே குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குஹனே। मम गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। अभोपस्पृश्य आचम्य केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविन्दाय नमः। विष्णु वामन श्रीधराशि गजपद्मनाभ दामोदरा संकृष्णा वासुदेवा प्रद्युम्ना अनिरुद्धा पुरुषोत्तमादोक्ष नारसिंहाच्युता जनार्दनापेन्द्र हरे श्रीकृष्ण हृद्यात्महव्ये नमसोपसत्या मित्रं देवं तृदयन्नोऽस्तु अनुराधानुविषावर्धयन्तः सतञ्जीवेम सरदस्सवीराः पवित्रं धृत्वा अक्षतैः सह शुक्लां वरदनं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। देवी गायत्री छन्दः प्राणायामि विनियोगः। ओं भूः ओम 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 ममोपाक्त समस्त दुर्दक्षेद्वारा श्री लग्नं सुदिनं तदेव तारावलं चन्द्रवलं तदेव विद्या अंग्रिं स्मरामि करिष्यमानदन विघ्नेशवाक्तर्थम् अदो महागणपूजां करिष्ये। ओम शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीयप्रार्थे स्वेदपराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बोद्वेवे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे दण्डकारण्ये सखाप्ते अस्मिन् वर्तमाने व्यवकार्ये प्रभवादिचान्द्रमानेन षष्टिसंवत्सराणां मध्ये हे विलम्बनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ मिथुनमासे शुक्लपक्षे षष्ठ्यां सुपतितो वासरः वासवस्तु। गुरुवासरसंयुक्तायां पूर्वनक्षत्रसंयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायां शुभदौ षष्ठ्यां शुभदितौ शिवगोत्रोद्भवस्य पूर्वपुटनक्षत्रे कुम्भरासौ जातशीलश्री दत्तात्रेयबाबाजीनामधेयस्य श्रवणनक्षत्रे मकररासौ जात वसन्तप्लयनाम्यात्राषाढनक्षत्रे प्रियानाम्याः आवयोः यजमानसौ कुटुम्बानां सर्वापीठफलसिद्ध्यर्थम् अस्मिन् दिने श्रीसुब्रह्मण्यस्वामिने नमः। पूजा ओम पुष्यभे नक्षत्रे हिते शृंगवीराम्याः आरुद्रा नक्षत्रे टैनिस बेर्कॉफ नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे नीता पटेल नामधेयस्य हस्तनक्षत्रे आत्मा पूर्णाम्बिका मानित्यानाम्याः पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे अरुण प्रसाद नामधेयस्यः आश्लेषा नक्षत्रे संकल्पिता मानित्यानां प्रेमा संकल्पिता मानित्यानाः अपभरणी नक्षत्रे जय बिल्डर नामधेयस्यः विजय प्रभाकर नामधेयस्य योषमलई शांति नाम्याः आश्लेषा नक्षत्रे थॉमसन नेल्सन नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे एंजेला कैंप नाम्याः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे जेनिस राहिल नामधेयस्य मृगशिरो नक्षत्रे टैमे लिन मैक एबी विल्सन नामधेयस्य पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे इवा क्विक नामधेयस्य अपभरणी नक्षत्रे आयुरी नाम्याः मूला नक्षत्रे जुडी एंजल नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे
जन्नालोपस्नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे नर्मदा नामधेयस्य पुनर्वसु नक्षत्रे पार्वती रमेरो नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे जयराधागुरेरी नाम्याः उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे बपता श्रीविंग नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे रोस् विल्कर्सन् नामधेयस्य उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे राजी निविन् नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे एंटोनिटी लिटिल नाम्याः हस्तनक्षत्रे निगोल ओलोजीन् नामधेयस्य उत्तराषाढ नक्षत्रे तीर्थदीपप्रधान नामधेयस्य हस्तनक्षत्रे अरुप्रसाद प्रधान नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे इंद्राणी प्रधान नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे एनी मैरी लैर्सन नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे भगवती जॉनसन नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे एलेक्स मेक्नो नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे केशव तंगम नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे क्लैरा बेजियो नाम्याः जन्मनक्षत्रे कोरिना बेजियो नाम्याः जन्मनक्षत्रे रौरा बेजी नाम्याः जन्मनक्षत्रे प्रमोस बेजी नाम्याः जन्मनक्षत्रे बहिता बहु नामधेयस्य जन्मनक्षत्रे क्रिस्टियन बहु नामधेयस्य जन्मनक्षत्रे पैल्मा बहु नामधेयस्य जन्मनक्षत्रे श्रवैको बहु नामधेयस्य अवृणी नक्षत्रे रोबर्ट गैर्गल नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे क्लोलिया गैर्गल नामधेयस्य चिता नक्षत्रे रोजबेथ लोधी नाम्याः उत्तराभाद्रा नक्षत्रे इवा गेल मिस्त्री नाम्याः पूर्वाषाढ नक्षत्रे गैट्ली प्रसाद नामधेयस्य जन्मनक्षत्रे गीता सैमन नामधेयस्य मृगशिरो नक्षत्रे एटमसफी नाम्याः सदभिषा नक्षत्रे पौलकुमारी नाम्याः धनिष्ठा नक्षत्रे वेंकटहरिबाबु भानु प्रसाद बोलेपल्ली नाम्याः पुष्यमी नक्षत्रे चंद्रिमा बासु नाम्याः श्रवण नक्षत्रे निजा विलल व्यासो नाम्याः उत्तराषाढ नक्षत्रे दीसर गुस्लौ विलल व्यासो नाम्याः उत्तराषाढ नक्षत्रे टैनिया विलल व्यासो नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे क्रिस्टियन विलल व्यासो नाम्याः पूर्वाषाढ नक्षत्रे फेबिन डी जीसस विलल व्यासो नाम्याः रेवती नक्षत्रे अलेक्स रिवेरा नाम्याः उत्तराषाढ नक्षत्रे सैंड्रा गुडलोपो विलल व्यासो नाम्याः पुनर्वसु नक्षत्रे मेरिया गुडलोपो विलल व्यासो नाम्याः मृगशिरो नक्षत्रे मेरिया एंड्रू प्रकाशम नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे गैरा ग्रेस नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे विव शर्मा नाम्याः स्वाति नक्षत्रे सुमिता चटर्जी नाम्याः रुद्रा नक्षत्रे मिंटू झा नाम्याः पूर्व फल्गुनी नक्षत्रे मानसा सरिता नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे रौणा सुकूर नाम्याः ज्येष्ठा नक्षत्रे नासित कुमार पटेल नामधेयस्य उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे शालिनी पटेल नाम्याः स्वाति नक्षत्रे राजश्री जय एंटनी पटेल नाम्याः स्वाति नक्षत्रे रामकृष्ण बिंबराजुराव नाम्याः जन्मनक्षत्रे ग्रोहोली ब्रैंडन लिपि नाम्याः जन्मनक्षत्रोद्भवस्य सुवर्णराणी बिंबराज नाम्याः जन्मनक्षत्रे उमा बिंबराजु नाम्याः रुद्रा नक्षत्रे क्रिस्टिन जडेजा नाम्याः क्रिस्टिन जडेजा नाम्याः धनिष्ठा नक्षत्रे डैनियल हैंस नामधेयस्य सदभिषा नक्षत्रे अलेक्स सैंडोस नामधेयस्य मृगशिरो नक्षत्रे एरन लल्ला गुरुस नाम्याः श्रवण नक्षत्रे विष्णुचरण शुंको नाम्याः धनिष्ठा नक्षत्रे रोबिन रैस्मुसन नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे बर्बरा डेविस नाम्याः पूर्व फल्गुनी नक्षत्रे मालिनी श्रीकंठेश्वरा नाम्याः चित्ता नक्षत्रे नागराजु गौडकटा नाम्याः जन्मनक्षत्रे गैरिन सुगुर्सन नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे जयदीप पुर्कैस्ता नाम्याः पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे रिकोडा कौन नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे रौराविल नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे विवर्ली मातृनी नाम्याः उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे डेविड मातृनी नाम्याः पुनर्वसु नक्षत्रे तारा खेटिक नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे गौरी डेप फिल्म नामधेयस्य मूला नक्षत्रे उज्ज्वला वेंकटेश नाम्याः ज्येष्ठा नक्षत्रे राज चौंगुल नामधेयस्य श्रवण नक्षत्रे जयस्ना जैक्लिक नामधेयस्य पुनर्वसु नक्षत्रे जयंतीलाल संघवी नाम्याः हस्तनक्षत्रे निगल पौलुसी नाम्याः जन्मनक्षत्रे मेहदी मोराग्नि नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे मरियम शल्लर नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे पौला ए नाम्याः उत्तराषाढ नक्षत्रे जीवमलर नाहमुत्तु नामधेयस्य आवयोः क्षेमस्थैर्यवीर्यविजयाभयायुरारोग्यैश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाम्यमोक्षचतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं यो दोषकसमुचनीतन्दोषपरिहारार्थं दुष्टपुनः दुष्टकुनः दुर्गति दौर्मनस्य दुर्भिक्षदुर्व्यसनः दुर्सगदुर्यशांशेः उत्पाददापविषभेदिमसद्गृहार्थीन् व्याधीन् च निवर्तिपूर्वकं श्री
महादेवकुमारस्य सुब्रह्मण्यस्वामी अनुभूतिविभूतिप्रसादफलसिद्ध्यर्थं यजमानानां सर्वेषां पराकृतमन्त्रयन्त्रतन्त्राभिचारजोन्नप्रयोगादिजनित्वा सकलविध उपद्रवदोषवृत्त्यर्थं सर्वाभीष्टफलसिद्ध्यर्थं यजमानानां सह कुटुम्बानां क्षेमारोग्यदासिद्ध्यर्थं सकलकामनासिद्ध्यर्थं सन्मङ्गलप्राप्तिसिद्ध्यर्थं इह चत्रो परचत्रो क्रूरचत्रो नेत्रचत्रो बन्धुजनचत्रो इत्यादि सकलचत्रो भद्रणवृत्त्यर्थम् इहदृष्टि अकदृष्टि परदृष्टि विषदृष्टि सर्पदृष्टि सकलजनदृष्टिदोषवृत्त्यर्थं जन्मनक्षत्रे जन्मराशिवसाद् नामनक्षत्रे नामराशिवसाद् अङ्गग्रहवसाद् पावग्रहवसाद् उभग्रहवसाद् सूक्ष्मग्रहवसाद् ये ग्रहाः स्वपयितरस्थानेषु स्थिताः स्थैस्तैषु इतभाविता आगामी वर्तमानवर्त्यश्यमान समस्रो पीडा परिहारत्वारपरावर्ग्यसिद्ध्यर्थं वेदोक्त दीर्घ आयुः अभ्यर्थि प्रसाद फलसिद्ध्यर्थं सन्मङ्गलप्राप्ति सिद्ध्यर्थं नवनाय नवनिधि प्रसाद फलसिद्ध्यर्थं आयुरारोग्य अभ्यर्थि प्रसाद फलसिद्ध्यर्थं वाणी हिरण्यगर्भलक्ष्मीनारायण उमा महेश्वर प्रसाद फलसिद्ध्यर्थं अरुवडै वीर सुब्रह्मण्य स्वामी दिव्यानुग्रह प्रसाद फलसिद्ध्यर्थं श्री वल्ली देवसेना समेत शिवषण्मुख कार्तिकेय सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी प्रसादेन च यजमानस्य मनस्सन्तोषकर सुखजीवन पुत्रपौत्रादि धनधान्य समृद्ध्यर्थं व्यापारस्थलैः व्यापारमार्गे उद्योगमार्गे कोटिकोटि लाभकरसिद्ध्यर्थम् अखण्डलक्ष्मीकटाक्षपरिपूर्णसिद्ध्यर्थं श्री इन्द्राणी समेत देवेन्द्रानुग्रह प्रसादफलसिद्ध्यर्थं तद्दिग्बालकदेवता प्रसादफलसिद्ध्यर्थं श्री वीरबाहुस्वामी अनुग्रह प्रसादफलसिद्ध्यर्थं यजमानस्य श्री महादेव शाम्बपरमेश्वर कालभैरवस्वामी दिव्यानुग्रह प्रसादफलसिद्ध्यर्थं श्री शिवनेत्रस्य अग्निस्वरूपस्य श्री त्रिनेत्ररूपस्य श्री महा षण्मुखस्वामी दिव्य अनुग्रह प्रसाद फलसिद्ध्यर्थं कार्तिकेयकुमारस्य श्री सुब्रह्मण्यस्वामी अनुभूति प्रसाद फलसिद्ध्यर्थं श्री दण्डवाणी स्वामी दिव्य अनुग्रह प्रसाद फलसिद्ध्यर्थं श्री मयूर कुक्कुडध्वजस्वामी दिव्य अनुग्रह प्रसाद फलसिद्ध्यर्थं श्री शक्त्या स्वामी अनुग्रह प्रसाद फलसिद्ध्यर्थं श्री वल्ली देवसेना समेत शिवषण्मुख सुब्रह्मण्य स्वामी अनुभूति प्रसाद फलसिद्ध्यर्थं यजमानानां सर्वेषां भक्तजनानां जातकरीत्याः सन्मङ्गलप्राप्तिसिद्ध्यर्थं सकलविध उपद्रवदोषवृत्त्यर्थं श्री व्यापारस्थले व्यापारमार्गे उद्योगमार्गे यजमानस्य मनस्सन्तोषकर सकललाभकरसिद्ध्यर्थं सर्वाभीष्टफलसिद्ध्यर्थं सद्बुद्धिप्राप्तिसिद्ध्यर्थं दुर्बुद्धिनिवृत्त्यर्थं श्री वल्ली देवसेना समेत शिवषण्मुख सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी प्रसादफलसिद्ध्यर्थं श्री सुब्रह्मण्यस्वामी स्थापन हवनाद्यमध्य कारिष्ये अक्षतान् उत्तरधोनदस्य अभोभस्प्रस्य तदङ्गानि च महागणपति प्रार्थनाञ्च श्रीवर्णपूजाञ्च अद्य करिष्ये ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गं गणपते वरवरसर्वजनमेव समाने स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गं गणपते वरवरसर्वजनमेव समाने स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गं गणपते वरवरसर्वजनमेव समाने स्वाहा ओम गं गणपते नमः एकदन्तात्मेव कृतुण्डाय धीमहि तन्नो तन्ति प्रचोदयात् अற்புத கீர்த்தி வேண்டின் ஆனந்த வாழ்க்கை வேண்டின் நற்பொருள் குவிதல் வேண்டின் நலமலாம் பெருக வேண்டின் கற்பகமூர்த்தி இவகலஞ் எதற்கே சென்று பற்பதம் பணிந்து வாரியர் பொய்யில்லை கொண்டதன்மை மூஷியவாகன மோதகஸ்த சாமரகர்ண விளம்பசூத்திர வாமன ரூப மகேஸ்வரபுத்திர விக்ன விநாயக பாத நமஸ்தே மகாகணபதியே நமः प्रार्थना पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ओम अस्मिन् गुम्बेवं वर्णं ध्यायामि वर्णमावाहयामि वर्णस्य इदमासनं वर्णाय नमासनार्थम् अक्षतान् समर्पयामि ऋणाय नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थं यज्ञोपवीतार्थम् अलङ्करणार्थम् आवरणार्थं रत्नसिंहासनार्थम् अक्षतान् समर्पयामि दिव्यपरिमलश्रीगन्धं गन्धस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमहरिद्रा चूर्णं समर्पयामि पुष्पमालिकान् समर्पयामि पुष्पैः सम्भोजयामि वरुणाय नमः हृदयस्दे नमः शुरोविणे नमः वामपदे नमः महरवागनाय नमः दीप्तराजाय नमः जलाधिपतिये नमः पश्चिमाधिपतिये नमः अनर्घमणिभूषणाय नमः श्वेतचतुर्धराय नमः वर्ष्णीयं विहासमेध वं वर्णमूर्तये नमः नानाविधपत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि दशाङ्गं गुणोपेदं सुगन्धं समनोहरम् आग्रेयं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां वरुणाय नमः धूपम् आघ्रापयामि धूपार्थं धूपमाघ्रापयामि वर्णमूर्तये नमः प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि वरुणाय नमः धूपदीपानन्दरमाचमनीयं समर्पयामि ओं भोर्भुवस्सुवः अमृतं भवतु ओं प्राणाय स्वाहा वहानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय समानाय ब्रह्मणे स्वाहा वरुणाय नमः नारङ्गफलानि यदस्वरमृतमहानैवेद्यं नैवेद्यामि नैवेद्यानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि
जुम्बगायत्महे वासगस्ताय धीमहि तन्नो वर्णः प्रचोदयात् मकरध्वजायत्महे स्फटिकवर्णाय धीमहि तन्नो वर्णः प्रचोदयात् पर्जन्याधिपतये वरुणाय नमः प्रत्यक्षकर्पूरनीराञ्जनं सन्दर्शयामि नीराञ्जनानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि अधरक्षान् धारयामि यो वां पुष्पं वेद पुष्पान् जावान् पुष्पान् भवति चन्द्रभावान् पुष्पं पुष्पवान् जावान् पुष्पान् भवति एवं वेद यो भामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्याधिपतये वरुणाय नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुण्यागवजपकर्मणि सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः पुण्यं पुण्यागं वाचयित्येवं वाच्यताम् ओं तदिग्रहाविन्नोकारजं जिष्णोरश्च वाजनाः सुरभिनौकाकृते वृणायगुं सिदारिषदावोष्ठामयोवस्थान ऊर्जे ददातना मगेरणाय सक्षसे योपश्यपदमृतस्य वाजेदे अनः चदीर्यमादर्गतस्मारङ्गमामवः यस्य क्षयाय जिन्वता आभो जनयता जनाः हिरण्यवर्णासुतयप्पावकाया सुजातकस्य वयास्विन्द्रः अग्निं यागर्भं दद्रुपारुस्थानं सुकुच्छोना भवन्त्या शाकं राजावृणो यादिमत्ये सत्यान्वदेवसञ्जनानां मदस्सुदस्सुदयोया पावकासानां सुकुच्छोना भवन्तो याशान् देवादिगृह्णन्ति वक्षम्य अन्तरिक्षे बुधा भवन्ति या पृथिवीं वै संस्कृतानां सुकुच्छोना भवन्तो शिवेन मासक्षुषा वश्यता स्वया पश्यादावशिवया धनुवो प्रसम्मे सर्वागम् अग्नेहं रक्षसो वै ओमयि वर्चबलमो जनिदत्ता वामानसवर्जना पवित्रेण विचर्चने पोदात् पुनादमा पुनन्दमा देवजना पुनन्दमनोदया पुनन्दि स्वायवः जातवेद पवित्रवते पवित्रेण पुनागिमा शुक्रेण देवदीप्तते अग्ने हृत्वा कृतो गंसृणो यत्ये भक्तमक्षरे अग्ने विततमन्त्रा ब्रह्मदेवनीमे भाभ्यां देवसहित पवित्रेण चवेन च इदं ब्रह्मपुनीमिके वैश्वदेवी पुनदेव्यागा आदयस्मै भक्मे तनवो वीतवट्टादय अमदन्तो सदमाद्येषु वैकस्वपतयोरयीनां वैश्वानरोऽस्मिर्मापुनाथो वादप्राणेनैस्रोमयो भोः द्यावा पृथिवी वयजावयो विहेर यथावरी यज्ञे मामुनीतां मृगद्विहे सत्ऋषिभिः वर्षिष्ठे देवन्विहे अग्ने दक्षये पुनायिमा येन देवा पुनता येनावो दिव्यङ्गसः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्मपुनीमिके पवमाने रद्येते ऋषभिः सम्पृतकमृतं सर्वकं सबोधमस्नादे सुधिम्मादरस्मना पवमानेर्योद्येते ऋषभिः सम्पृतकमृतं तस्मै सरस्वते जुगे शीरकं सर्पेर्मतोदकं पवमाने सुस्तयने सुतगायिमय स्तुतिः ऋषभिः सम्पृतोऽर्थः ब्राह्मणे समृतम् इदं वामान्यर्दिशन्द्रः इमं लोकमतो अमुन्कामान् समृद्ध्यन्द्रः देवेर्देवेशमावृता वामानि सुस्तयनि सुतगायुर्दस्ता ऋषभिः सम्पृतोऽर्थः ब्राह्मणे समृतम् इदं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनदे सदा आदेन सहस्रधारेण वामान्य पुनन्दमा राजावत्यं पवित्रं सदोत्यामखं हिरण्मयं धेन ब्रह्मविदो वयं बहुदं ब्रह्मपुनीमीन्द्रस्नीति सुखमापुनाथ सोमस्यश्चावरणश्च मीत्या यमो राजा आपुनादि पुनादमां जातवेदामूर्तिहन्दापुनादो भोर्भोस्त्वः तच्चं यो रावणीमिहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदये दैवे स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्दिकाद्वेषं सन्नास्तद्विपदे एषं चतुष्पदे ओं शान्तिः वरुणाय नमः सकलाराधने स्वर्चितं दत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा आस्तेजमानाविर्भिगे अगेडमानवर्णे बोधिवृंसमानाय प्रमोर्य अस्मात् कुम्भासकलतीर्थाधिपतिं वर्णं यदासकं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च अपवित्रपवित्रो वां सर्वावस्थाङ्गधोऽपि वां यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभाख्याभ्यन्तरशुचिः भोर्भुवशुव भोर्भुवशुव भोर्भुवशुवः सर्वत्र परिशुद्धयेत् आत्मानञ्च मण्डपञ्च पूजाद्रव्याणि च प्रोक्ष्य शुद्धजलमापूर्य कुम्भमलङ्कृत्य ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् अस्मिन् कुम्भे सुब्रह्मण्येश्वरस्वामिनं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सुब्रह्मण्यवल्ली देवसेना समेत सुब्रह्मण्यस्वामिने नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थं विधार्थम् अलङ्करणार्थम् आवरणरत्नसिंहासनार्थम् अक्षतान् समर्पयामि दिव्यपरिमलश्रीगन्धं गन्धस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमहरिद्रा चूर्णं समर्पयामि पुष्पमालिकान् समर्पयामि पुष्पैः सम्भोजयामि ओं सुब्रह्मण्याय नमः ओं गुहाय नमः ओं षण्मुखाय
ओम बालनेत्रसुधाय नमः ओम कृतिकासनवे नमः ओम शिवविष्टाय नमः अंबिकानाथाय नमः श्रीगंडाय नमः भक्तवत्सलाय नमः भवाय नमः ग्रहाय नमः गवर्धिने नमः कामार्ये नमः अंधोन्मत्ताय नमः प्रमत्ताय नमः ओम शक्तिधराय नमः पिसिदासुर प्रपंचनाय नमः तारकासुर संहाराय नमः रक्षोबालविमर्दनाय नमः मध्याह्न प्रमध्याह्न उन्मध्याय नमः सुरसैन्य सुरक्षकाय नमः देवसेनापदये नमः ओम प्राज्ञाय नमः कृपालवे नमः भक्तवत्सलाय नमः मासुदाय नमः शक्तिधराय नमः प्रपंचधारणाय नमः मयूरवाहनाय नमः कुमाराय नमः सेनान्ये नमः अग्निजन्मने नमः विशाखाय नमः शंकरात्मजाय नमः शिवस्वामिने नमः गणस्वामिने नमः सर्वस्वामिने नमः सनातनाय नमः मनोधक्त्यै नमः क्षोभ्याय नमः पार्वती प्रियनंदनाय नमः गंगासुधाय नमः सरोद्भूताय नमः माखुदाय नमः भावकात्मजाय नमः जृंबाय नमः जृंबाय नमः जृंबाय नमः कमलासन संस्तुताय नमः एकवर्णाय नमः त्रिवर्णाय नमः त्रिवर्णाय नमः सुमनोहराय नमः चतुर्वर्णाय नमः पंचवर्णाय नमः सदाशिवाय नमः विश्वेश्वराय नमः ओम प्रजापतये नमः हिरण्यरेतसे नमः दुर्दशाय नमः ओम समीकराय नमः वासवाय नमः वडवेशपदे नमः भोष्णे नमः गवर्धिने नमः सुब्रह्मण्याय नमः गुहाय नमः कुक्कुटध्वजाय नमः गंगाधारणाय नमः जयनान्ये नमः विशाखाय नमः शंकरात्मजाय नमः शिवस्वामिने नमः गणस्वामिने नमः आकाशपतये नमः अमिगर्भाय नमः अग्निगर्भाय नमः शमिगर्भाय नमः विश्वरेतसे नमः सुरारिक्ने नमः हरिद्वर्णाय नमः शुभकराय नमः वडवे नमः वडवेशप्रदे नमः ओम भूष्णे नमः कवस्तिने नमः गगनाय नमः चंद्रवदनाय नमः कलाधराय नमः मायाधराय नमः महामायिने नमः कैवल्याय नमः शंकरात्मजाय नमः शिवस्वामिने नमः गणस्वामिने नमः सर्वस्वामिने नमः शंकरात्मजाय नमः विश्वयो नमः अमे आत्मने नमः तेजोनिधये नमः अनामयाय नमः परमेष्टिने नमः परब्रह्मणे नमः वेदगर्भाय नमः विराट्सुधाय नमः पुलिन्दकन्यापात्रे नमः ओम महासारस्मृताय नमः माश्रिताय दात्रे नमः शोरक्नाय नमः रोगनाशनाय नमः अक्षभ्याय नमः ओम अनन्तारोगनाशनाय नमः अनन्दामूर्तये नमः आनन्दाय नमः ओम शिखण्डिने नमः ओम शिखण्डीकृतकेतनाय नमः डम्बाय नमः परमडम्बाय नमः महाडम्बाय नमः ओम वृषाकवये नमः कारणोद्भत्तदेकाय नमः कारणाधीतविग्रहाय नमः अनीश्वराय नमः ओम अमृताय नमः ओम प्राणाय नमः प्राणाय वरायणाय नमः मृतगन्त्रे नमः विरक्ताय नमः रक्तश्यामलकाय नमः सुब्रह्मण्याय नमः गुहप्रीताय नमः ब्राह्मण्याय नमः प्रीताय नमः ब्रह्मण्याय नमः ब्राह्मणप्रियाय नमः समृद्धिकराय नमः वेदवेद्याय नमः अक्षयफलप्रदाय नमः मयूरवाहनाय नमः कुक्कुटध्वजाय नमः ओम महाशक्तिस्वरधराय नमः अक्षयफलप्रदाय नमः मयूरवाहनाय नमः ओम वल्लीदेवसेना समेत शिवषण्मुख सुब्रह्मण्येश्वर स्वामिने नमः भवस्य देवसुदाय नमः सर्वस्य देवसुदाय नमः भवस्य देवदानं ईशानस्य देवदानं वसुदेव देवदानं रुद्रस्य देवदानं उग्रस्य देवदानं भीमस्य देवदानं महतो देवदाय नमः शाम्ब परमेश्वर देवदाय नमः वल्ली देवसेना समेत शिवषण्मुख सुब्रह्मण्येश्वर स्वामिने नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि हरिः ओम दशांगं गुंगोवेदं सुगंधं सुमनोहरम् आग्नेयं सर्वदेवानां दूपोऽयं प्रतिगृह्यतां वल्लीदेवसेना समेत शिवषण्मुख सुब्रह्मण्येश्वर स्वामिने नमः धूपम् आग्रापयामि साज्यं त्रिवर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया गृहाणमङ्गलं देवं त्रैलोक्यतिमिरावहं श्रीसुब्रह्मण्यस्वामिने नमः वल्लीदेवसेना समेत सुब्रह्मण्यस्वामिने नमः धूपदीपानन्दरमाचमनीयं समर्पयामि ओम भोर्भुवः स्वः अमृतं भवतु ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ओम कदलीफलानि ताम्बूलानि नाळीरखण्डत्वचं एतत्सर्वम् अमृतं महानैवेद्यं निवेद्यामि नैवेद्यानन्दरमाचमनीयं समर्पयामि ओम षण्मुखं षड्गुणं शैव कुमारं कुलभूषणं देवसेनापतिं वन्दे सर्वकार्यार्थसिद्धये कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दप्रचोदयात् मयूरवाहनाय नमः कार्तिकेयाय नमः सुब्रह्मण्यस्वामिने नमः स्कन्दगुरवे नमः कर्पूरनीराञ्जनं सन्दर्शयामि नीराञ्जनानन्दरमाचमनीं समर्पयामि अधरक्षान् धारयामि ओम यो वां पुष्पं वेद पुष्पवान् विजावान् पशुवान् भवति चन्द्रभावान् पुष्पं पुष्पवान् विजावान् पशुवान् भवति एवं वेद
योभामायतनं वेद आयतनवान् भवति वल्ली देवसेनासमेत कार्तिकेय सुब्रह्मण्य स्वामिने नमः यथोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ओम कार्तिक यथाशक्ति जभं विदाय ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्तायिमि तन्नस्कन्द प्रचोदयात् 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 ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्तायिनि 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 तन्नस्कन्द प्रचोदयात् ओम कुमार कृभयो नमः इति षण्मुखकवचमन्त्रस्य அண்டமாய் அவனியாகி இறைவனாய் உருதனாகி தொண்டர்கள் குருவாகி துகளரோ தெய்வமாகி என் திசை போற்ற நின்ற என் அருள் ஈசனான திந்திரல் சரவணத்தான் தினமும் என் சிரசை காக்க ஆதியங்கையிலை செல்வன் அணிநெற்றி தன்னை காக்க தாதவிழ் கடம்பத்தாரன் காணிரோதலை நூதலை காக்க சோதியான் தணிகையின் சன் துரிசிலா விழியை காக்க நாதனாம் கார்த்திகேயன் நம சிவ நாசியை நயந்து காக்க இருசெவிகளையும் செவ்வேள் இயல்புடன் காக்கவாயை முருகவேள் காக்கன பால் முழுதும் நற்குமரன் காக்க துரீசரு கதுப்பை யானை துண்டனார் துணைவன் திருவுடன் பிடரி தன்னை சிவசுப்பிரமணியன் காக்க ஈசனாய் வரகுல வாகுலேயன் யோது சுந்தரத்தை காக்க திருமகள் மருமகள் காக்க ஆசிலா மார்பையா இராயுராதன் காக்க எந்தன் ஏசிலா முழங்கை தன்னை உண்கை தன்னை உண்மை இன மதலை காக்க இளமதலை காக்க தருகண்ட ஏறிடவே என்னை என்கை தலத்தை மாமுருகன் காக்க உறங்கையை அயிலோன் காக்க விரல்கள் காக்க பொறிக்கர விரல்கள் பத்தும் பிறக்குமால் முருகன் மரன் காக்க பின்முதுகை சேய் காக்க ஊனிரை
வயிற்றை மஞ்சையோர்த்தியோன் காக்க வம்பு தோள் முக்திவேர் சுரேசன் உந்திய சுழியினை காக்க கொய்ய நாணி கௌரி நந்தனன் காக்க பூஜ ஆணியை கந்தன் காக்க அருமுகன் குதத்தை காக்க எஞ்சிடாதிடுப்பை வேலு இறைவனார் காக்க அஞ்ச கனகமாரிரண்டும் அரண்மகன் காக்க விஞ்சிடும் பொருட்காஞ்சேயன் காங்கேசன் விளரடி தொடையை காக்க செஞ்சர நேசவாசன் முகன் திமிகோ முதமுன் தொடையை காக்க ஏரகத்தேவன் என் தாள் இருமுழங்காலும் காக்க சீருடை கணைக்கால் தன்னை சீரலை வாய்த்தே காக்க நேருடை பரடிரண்டு திகழ் பரங்கிரிய இரியன காக்க சீரிய குதிக்கால் தன்னை திருச்சேவலை மலையன் காக்க ஐயுரோ மலையன் பாதத்து அவர் 10 விரலும் காக்க பையுரோ பழனிநாத பரன் அகங்காலை காக்க மெய்யுடன் முழுதும் ஆதி விமல சண்முகவன் காக்க தெய்வநாயக விசாகன் தினமும் என் நெஞ்சை காக்க ஒலியுடா உரத்த சத்தத்தொடுவரு பூதப்பிரேதம் பலிகள் கதப்பே பலகனத்து இவையான் வேல் காக்க கெடுபரர் செய்யும் சூன்யம் வலியுழ மந்திர தந்திரம் வருடத்திடாது அயில்வேல் காக்க ஓங்கிய சீற்றமே கொண்டு வணியில் வேல் சோலங்கள் தாங்கிய தண்டம் யக்கு கந்தடி பரசு ஈட்டியாதி வாங்குடை ஆயுதங்கள் பகைவர் என் மேலே யுச்சின் தீங்கு செய்யாமல் என்னை திருக்கைவேல் காக்க காக்க உடவிய முளர் ஓன் உண்போர் அசடர்வே அரக்கர் புலவர் தெய்வர்கள் ஏவரானாலும் திடமுடனினை மற்கட்டத்து அவ்வியே வருவராயின் சரசராமலாம் புறகும் கவுடை சூரசண்டன் கையில் கையால் காக்க கடுவிட பாந்தன் சிங்கம் கரடினாய் புலி மாயனை கொடியோனாய் குரங்கு கோலமாச்சாலம் சம்பு படையுடை யுணதலேனு நாடிடர் பட்டிடாமல் சதியில் வடிவேல் காக்க சானவி முளைவேல் காக்க நகரமே போற்றலையே ஞானவேல் காக்கவான் சிகரி ஏறு ஆலப்பள்ளி நகமுடையோத்தி பூரான் அள்ளியண்டு புலியின் பூச்சி குகமிகை இணைவாய் புரிலாது ஐவேல் காக்க சலத்திலோவன் மீனேறு வண்டுடை திருக்கை மற்றும் நிலத்திலும் சுழத்திலும் தான் நெடுந்துயர் தரள்வேயுள் குலத்தினால் தான் வருத்தங்கொண்டாடிது அவ்வேளை பலத்துடன் இருந்த காக்க வாவகி கூர்வேல் காக்க ஞமவியும் பரியன் கைவேல் நவக்கிரக கோள் காக்க சுளவிழி நோய்கள் தன் சூலையாக்கிரான ரோகம் திமிர்களல் வாதம் சோன கிரமடி கர்ணரோகம் எமையணுகாமலே பன்னிரு புயன் செய்வேல் காக்க டமருகத் தடிவோனைக்கும் தலையிடி கண்டமாலை குமருவிருதி திருத்தம் வெட்டை நிரப்பிர மேகவேல்லாம்
எமையடையாமல் குந்தரித்தவன் கைவேல் காக்க இணக்கமில்லா பித்தவெறிவு மாசுரங்கள் கைகால் முணங்கவே குறைகும் குட்டம் முளைவெண் முளை தீமந்தம் சனத்திலே குலம் சன்னி சாலமென் தரையும் இந்த பிணிக்குலம் என்னை எனையாளாமல் பெரும் சக்தி வடிவேல் காக்க தவனமாரோகம் வாதம் சைத்தியம் அரோசகம் எல்லாம் சுவரவே செய்யு முலை சுடு இளை பவுடற்று விக்கல் அவதிசை பேதிசீழ் நோய் அண்டவாதங்கள் சூலை இவையும் என் இடத்து எய்தாமல் எம்பிரான் திணிவேல் காக்க நம்மை புற கிரந்தி வீக்கம் நடுகிடு பாண்டு சோபம் அமர்த்திடு கருமை வெண்மை யாகுபல் தொழுநோய் காக்கல் இமைக்குமுன் நொருவலிப்போடு எழுபுடை பகந்தராதி இமைப்பொழுதேனும் என்னை எய்தமாலருள் வேல் காக்க பல்லது கடித்து மீசை படபடென்று துடிக்க கல்லினும் வலிய நெஞ்ச காட்டியே இருட்டி நோக்கி எல்லினும் கரியனே யமபடர் வரினும் என்னை ஒல்லையில் தாரகாரி ஓம் ஐம் ரீம் வேல் காக்க மண்ணிலும் மரத்தின் மீதும் மலையிலும் நெருப்பின் மீதும் தண்ணீரை சலத்தின் மீதும் சாரிசை திமி மீதும் வேறொரு தடவித்துமென்னை தன்னிரு வந்தருளர் சஷ்டி நாதன் வேல் காக்க காக்க யகரமே போல சூலேந்து நரியும் புயன் வேல்முள் காக்க அகரமே முதலாமா ஈரரு அம்பகன் வேம்பின் காக்க சகர மூடரு மானோன் தன்கை வேல் நடுவிற்காக்க சிகரமுன் தேவமோல் கீழ் மேல் காக்க ரஞ்சித மொழி தேவானை நாயகம் வள்ளி வங்கன் செஞ்சயவேல் கிழக்கில் திறமுடன் காக்க அங்கி வஞ்சிடோ திசையின் ஞானவீரன் வேல் காக்க தெற்கில் எஞ்சிடா கதிர் காமத்தோன் இகலுடைரை கரவேல் காக்க லகரமே போல் காணியங்கனல் லுடனெறிய நின்று தகரமத்தனமே செய்த சங்கரி மருமகன் திகழனை விருதேதிக்கில் நிலை பெற காக்க மேற்கில் இகலையில் காக்க வாயுவினில் குகன் கதிர்வேல் காக்க வடதிசை தன்னில் ஈசன் மகன் அருள் திருவேல் காக்க இடையுடை ஈசன் திக்கில் வேதபோதகன் வேல் காக்க நடக்கடையில் இருக்கும் ஞான்றும் நவில் கையில் திமிர்கையில் கீழ் கிடக்கையில் தூங்கும் ஞான்றும் கிரிதுணை துளவேல் காக்க இழந்து போகாத வாழ்வை ஈயும் முத்தையானார் கைவேல் வழங்குனல் ஊன் 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 போதும் தும்மால் வளையொட்டி போது பழஞ்சுரர் போற்றும் பாதம் பணிந்து நெஞ்சடக்கும் போதும் தோடே காக்கிட திடமுடன் மயிலும் காக்க இளமையில் வாலிபத்தில் ஏறிடு வயோதிகத்தில் வளர் அருமுகச் சிவன்தான் ஒழியனை காலை முன் எழு ஓம் சிவசாமி காக்க தெளிநடு பிற்பகர் கால் சிவகுருநாதன் காக்க இறகுடை கோழித் தொகை கிரை முன் இராவிற்காக்க திரளுடை சூர்பகைத்தே திகழ்பின் இராவிற்காக்க நர்வுரோசர் தான் சிலம்பன் நடுநிசி தண்ணீர் காக்க மறைதொழு உலகன் எம்கோன் மாறாது காக்க காக்க
இனமென தொண்டரோடு இணங்கிடும் செட்டி காக்க தனிமையில் கூட்டந்தன்னில் சரவணபவனார் காக்க நனிரூபூதி சொன்ன நாதர்கோன் காக்க இத்தகை கனிவோடு சொன்ன தாசன் கடவுள்தான் காக்க வந்து ஓம் உமா கோமளகஸ்தாபியாம் சம்பாவில்லாடகம் இரண்யகுண்டலம் வந்தே குமாரம் புஷ்கரக்ஷசம் ஷடானனம் குங்குமரத்னவர்ணம் மகாமதிம் திவ்யமயூரவாகனம் ருத்ரஸ்ய சூனம் சுரசைன்யநாதம் குஹம் சதாகம் சரணம் பிரபத்யே ஷண்முகஞ்ச கணாதீசம் சாம்பஞ்ச பரமேஸ்வரம் மம துக்கவிநாசாய சந்ததம் சிந்தயாம்யகம் ஷண்முகம் சைவ ஷண்முகம் ஷட்குணம் குமாரம் குலபூஷணம் தேவசேனாபதிம் வந்தே சர்வகார்யார்த்தசித்தயே ஓம் அவாயுதம் சர்வாபி தேவதாபியோ நமः சுப்பிரமணிய சுவாமினே நமः யதாசக்தி சங்யாம் சமர்ப்பயாமி ஸ்தோத்திரம் சமர்ப்பயாமி देवदेव जगन्नाथ जगदानंद कारणाग्निकार्य प्रवर्तोकम अनिज्ञां देहि मे प्रभो अग्निकार्य शुभमुहूर्तोस्तुति भवन्तो अनुगृह्णन्तो अग्निकार्य शुभमुहूर्तोस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु ओम वैश्वानरात्महे लालीलाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात् यज्ञं प्रतिष्ठाप्य ओम इंद्राय नमः ओम अग्ने नमः धर्मराजाय नमः वर्णाय नमः वायुवेन कुबेराय नमः ईशानाय नमः यज्ञपुरुषाय नमः अतिथेन मुन्यस्वा नमदेन मुन्यस्वा सरस्वतेन मुन्यस्वा देव सवितप्रसुवा एकं द्वे त्रीणि चत्वारि वायव्याद् आग्नेयान्तं स्वाहा रुद्ध्याद् ईशानान्तं स्वाहा इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमः अग्ने स्वाग्ने नमः सोमाय स्वाहा सोमाय नमः अग्ने स्वाहा पुनर्मध्ये आरंभ प्रवृत्ति तक्षणपर्यन्तं मध्ये संभावित समस्तदोष प्रायश्चित्तार्थं सर्व प्रायश्चित्तार्थं घोष्यामि ओम भूर्भुवः स्वाहा सर्वं श्री विष्णवे स्वाहा महोदय रुद्राय स्वाहा रुद्राय पशुपतये इदं नमः अभिगार्य सर्वमभिगार्य काष्ठमभिगार्य अगुंसत्प्रसंद्रोणसरस्वत्प्रजाब्जा गोजार प्रजात्रजारदमृत स्वाहा अमृत स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गं गणपतये वरवर सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गं गणपतये वरवर सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गं गणपतये वरवर सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गं गणपतये वरवर सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा स्वाहा महागणपतये इदं नमः ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम निकृष्टवैदसमायुधये काले हरित्मवावर्णय इन्द्रायाय सहस्रयुगाग्निरुप्राट्यवदनः वायुस्तेजजगत्प्रभासं वस्त्रोऽविषवर्णैः ध्यास्ते रुद्रास्विहा सुब्रह्मण्यागं सुब्रह्मण्यागं सुब्रह्मण्य ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति हस्ताय धीमहि
तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे
शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्तिहस्ताय धीमहि स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः 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 प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्तिहस्ताय धीमहि
तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयात्मे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् स्वाहा अथ पूर्णाहुतिकालः यन्द्वारा शान्वितपुष्टाङ्गरीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां त्वामिहो वह्वये श्रियं इन्दं समर्पयामि कुङ्कुमं समर्पयामि हरिद्रार्जुनं समर्पयामि एकं ते त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव नवदश एकादश द्वादश ॐ पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथोऽयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति तुलसी महापूर्णाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा कार्तिकेयाय शक्ति अस्ताय धीमहि तन्न स्कंद प्रचोदयात् ब्रह्मण्य स्वामी ओम सप्तदे अग्ने समिध सप्त जिह्वा सप्तऋषय सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्र सप्तदाध्वाय जन्ते सप्तयो नेरावृतेन स्वाहा अग्नये सप्तपदय धन्नमम भू स्वाहा भुव स्वाहा सुव स्वाहा भोर्भुव सुव स्वाहा अजमात्रमुत्तरभानुधाया प्राणायामविशेषणम् अग्नेर्नमुखस्तान् उदयर्नमुखस्ता सरस्वतीर्नमुखस्ता देवसविधप्रासावीः वनिष्ठमूर्तेन महेश्वराय नमः दुभार्तमुष्पाणि समर्पयामि विघ्नेश्वराय नमः प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि विघ्नेश्वराय नमः समर्पयामि विघ्नेश्वराय नमः उदशेषम् आज्योपकारम् अमृतं महानिवेद्याय ध्यानाय स्वाहा अवाहनाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा स्वाहाय स्वाहा समानाय स्वाहा समने स्वाहा महानिवेद्यं निवेदयामि
नैवेद्यानन्दमाचमनीयं समर्पयामि अथ कर्पूरज्योतिः लीलाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात् ईश्वराय नमः कर्पूरनीराञ्जनं सन्दर्शयामि नीराञ्जनानन्दमाचमनीं समर्पयामि अवरक्षान् धारयामि यो वां पुष्पं वेद पुष्पान् जावान् पुष्पान् भवति चन्द्रमा वान् पुष्पं पुष्पान् जावान् पुष्पान् भवति ये एवं वेद यो भाम् आयतनं वेद आयतनवान् भवति यज्ञेश्वराय नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनागं महिमानस्य छन्दे यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अवायुधभ्य सर्वाभ्य देवताभ्यो नमः वर्णात् कुम्भे संयोजयामि मानस्तोगेदनयमानायुष्मानो घोषमानो स्वेष्णीरिणः वीरान् मानो रुद्रमामिदो विदेवष्पन्तो नमसामि देवदे ध्याय बलिं ददामि ओम भवस्य देवस्ताय नमः ओम सर्वस्य देवस्ताय नमः ईशानस्य देवस्ताय नमः वसुदेव देवस्ताय नमः रुद्रस्य देवस्ताय नमः उग्रस्य देवस्ताय नमः भीमस्य देवस्ताय नमः भगवतो देवस्ताय नमः शाम्ब परमेश्वर देवस्ताय नमः वल्ली देवसेना समेत श्री सुब्रह्मण्य सुब्रह्मण्येश्वर स्वामिने नमः नानाविधोपत्रोष्पाञ्जलिं समर्पयामि वेदं धर्मं भागेन देवानां धूपोऽयं प्रतिष्ठितां धूपमाध्यापयामि साध्यं सत्यसमुक्तं मलिनाय ब्रह्मण्यस्वामी नमः धूपदीपानन्दमाचमनीयं समर्पयामि ॐ भोर्भुवस्सुवः अमृतं भूर्भुवप्राणाय स्वाहाय स्वाहाय काश्मीरफलानि नारङ्गफलानि विशेषफलानि अमृतं महानैवेद्यं समर्पयामि ओम राजाधिराजाय प्रदक्षिणाहिने नमो वयं वै श्रवणाय मगे समेकामाय लक्ष्मीं कामेश्वरो वे श्रवणोधारो कुबेराय वे श्रवणाय महाराजाय नमः कार्तिकेयाय स्वे शक्तिहस्ताय देवी तत्तङ्गप्रचोदयात् भैरवाहनाय नमः वल्ली देवसेना समेत सुब्रह्मण्येश्वर स्वामिने नमः कर्पूरनीराञ्जनं पञ्चम कर्पूरनीराञ्जनं सन्दर्शयामि नीराञ्जनानन्दरम् आचमनीयं समर्पयामि अधरक्षान् धारयामि ओम यवान् पुष्पं वेद पुष्पान् जावान् पुष्पान् भवति चन्द्रमावान् पुष्पं पुष्पान् जावान् पुष्पान् भवति एवं वेद यो भाम् आयतनं वेद आयतनवान् भवति अवैधुर्वाभ्यो नमः वेदोक्तं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ஆரிரந்தோள் வாழ்க ஆறுமுகம் வாழ்க வற்பை கூறு செய்த நிவேல் வாழ்க புக்குடம் வாழ்க செய்ய ஏரிய மஞ்சை வாழ்க யானை தன்னனங்கு வாழ்க மாரிலா வள்ளி வாழ்க வாழ்க சீரடியார் வான்மையில் வளாது வேக மலிவிடம் சுரக்க மன்னன் கோன்முறையர் செய்க குறைவிலாது உயிர்கள் வாழ்க நான் மறை அறங்கள் ஓங்க நற்றுவம் வேள்வி மல்க மேன்மைகள் சைவ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம் நம பார்வதி பதையே ஹர மகாதேவா அபாயுதம் சர்வாபி தேவதாபியோ நம யதாசக்தே ஸ்தோத்திரம் சமர்ப்பயாமி ஓம் கார்த்திகேயாய ஸ்ரீ சக்தி தீமிஹி தன்னஸ்கந்த பிரச்சோதயாத்
अवायु सर्वाभि देवताभ्यो नमः उत्तरनीराञ्जनं समर्पयामि। यज्ञेन यज्ञमय सन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनागं महिमानस्य प्रभोर्वे साध्याः सन्ति देवाः आवाहितपि सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि। यदासं यदास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च। ॐ सदमानं भवति सदाय पुरुषः सधेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति यो वेदा ब्रह्मणो वेद अमृतेनावृताम्बुरी तस्मै ब्रह्मज ब्रह्माज आयुः कीर्तिं वृजां ददुः सदमानं भवति सदा पुरुषसदेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति सुब्रह्मण्यस्वामी प्रसादेन च यजमानस्य सहकुटुम्बानां सकल ऐश्वर्यप्राप्तफलसिद्धिरस्तु सत्यासन्तु यजमानस्य कामाः। This body-mind existence, although it is a limitation, it is capable of transforming itself into an unlimited reality. You can transform this body into light, which is its source, if you want to do that. So everything is going to depend on what you just put inside your mind, inside your consciousness. But right now, we have put into our mind only limitation. We never have put our attention on any methodology to delimit itself. If you consciously program your mind, your body, to delimit itself, the body will be everywhere. The mind will be everywhere. Just put that in your consciousness.
Just imagine the body expanding, just becoming like particles and waves. And don't give importance to the body awareness, which says that it is flesh and blood. The same way, the mind is capable of experiencing different dimensions. This is how, through imagination, you can learn to delimit yourself. And once you begin to do it more and more and more, then that becomes the habit of the body, the habit of the mind. God bless.
गणपति जय जय गणपति जय जय सिद्धि विनायक स्वामी सद्गुरु अरुणगिरिनाथ स्वामी திருப்பரங்கிரி வீரனுக்கு இறைவனுக்கு அந்தாது நந்தா வகுப்பு அலங்காரம் அவர்க்கே நனி புனைந்தோ முன்பு ஆதரவில் அவன் புகழ் அனுமோதி முற்றும் சொன்ன என் தாய் அருணகிரிநாதா எம்மை நீரேற்று அருளே அருவமும் உருவமாகி அநாதியாய் பலவாய் ஒன்றாய் பிரம்மமாய் நின்ற ஜோதி பிழம்பு அது ஓதேனியாகி கருணை கோமுகங்களாகும் கரமது 12 கொண்டு ஒரு திருமுருகனாய் ஷண்முகனாய் சரவண பவனாய் கார்த்திகேயனாய் ருத்ரபாலகனாய் ஆங்கு உதித்து ஆறு நிலை என்று முதலான திருப்பரங்கிரி திருச்செந்தூர் திருப்பழனி திருக்கேரகம் திருத்தணிகை சோலைமலை முதலான பதிகள் பல ஆயிரங்கள் மலைகள் வெகு கோடி நின்ற அந்த மாதியில்லா குகனே எங்கள் குருவாய் அருள்வாய் அருள்வாய் குகனே குருவாய் அருள்வாய் உலதாய் இலதாய் மறுவாய் மலராய் மணியாய் மொழியாய் கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் முகதே எங்கள் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் கோகனே எங்கள் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் கோகனே கனகம் திரள்கின்ற பெருங்கிரி தனில் வந்து தகனிடு கதிமிஞ்சிய செண்டையிடு கதியோனே தடமிஞ்சி அனந்த விதாபுன தவளாதனை உண்டு வளர்ந்திடு கதிய துணை என்று பிறந்திடு முருகோனே வணக்கம் துயில் என்ற திறவுனை கடல் முன்பு கடைந்த பரம்
நாவலர் பாடிய நூலிசையால் வரு நாரதனார் புகழ் புறமாலை நாடிய காணிடை கூடிய சேவக நாயகமாமயில் உடையோனே தேவி மனோன்மணி ஆயி பராபரை தென்மொழியாள் தரு சிறியோனே சேனுயர் சோலையில் நீழலிலே திகழ் சீரலை வாய்வரு பெருமாளே மாமணி நோபுர சீதள தாழ்கனி வாழ்வுரையீமதோ ஒரு நாளே சீதளை வாய்வரு பெருமாளே துன்போங்குள் அங்கமெழுதரனோ மறந்தொழி கொஞ்சோபே சஞ்சலவியல்பதில் அணுகாதே பாசனிகளமும்
தவமென ஆகாச பரம சிற்றோதி வரையை அடைந்துள்ளாரே. ஆராரினதிகம் அக்ராயமனுதினம் யோகீசர்யவரும் எட்டாத பரதுரியாதீத மகளம் எப்போதும்
குருபரனுக்கு திருத்தணிகை தீரனுக்கு முயலகன் பாதம் எரி குணநாசி விஷமே விரிவு விடாத தலைவலி சோவை எழு கல மாலை இவையோடு பெருவழியிலை எரி குலை சூளை பெருவழி வேறும் உள்ள நோய்கள் பிறவிகள் தோறும் என்னை அறியாதபடி உனதாள்கள் அருள்வாயே வரும் ஒரு கோடி அசுரர் பதாரி மடிய அநேக இசை பாடி வரும் ஒரு கால வைரவராட படி சுடர் வேலை இடுவோரே கருவிழல் மீதில் உரை முகிலோடி தரு திருமாதில் மணவாளா ஜலமிடை பூமி நடுவினில் மீது தனிமலை மேவு பெருமாளே நோய்கள் பிறவிகள் தோறும் என்னை அறியாதபடி உனதார்கள் அருள்வாயே கை மனக்குட்ட தொழு மலராலே நித்த திரு ஜலதி முற்ற துணி எத்தய துமிதமிக்கு பெருகமணி இப்போர் கொடிசு தளரானே எத்திற்கு போற்ற புகழ் வெற்றி திருதனில் ஈற்றை தினத்தில் வரவேணோ மெத்த சினத்து மனதிற்கு குலச்சிகர பேப்பை கொடைத்த கதிவேலா மெச்சி குரத்திதனம் மெச்சி தனை தொழுரி திக்கு படைத்த மணி மார்பா மத்த பிரமதரணி மத்த சடை பரம சீதத்தில் வைத்த கடலோடி வட்ட திரை கடலில் மட்டி திடித்தவரை வெட்டி துணித பெருமாளே எத்திற்கு போற்ற புகழ் வெற்றி திருகனி ஈற்றை தினத்தில் வரவேணோ பூமியதனில் பிரபுவான புகழியில் வித்தகர் போல பூமியதனில் பிரபுவான புகழியில் வித்தகர் போல அமிர்த கவி கொடை பாட அடிமை தன கருள்வாயே அமிர்த கவி கொடை பாட அடிமை தன கருள்வாயே அமிர்த கவி கொடை பாட அடிமை தன கருள்வாயே சமரில் எடுத்த சொர்மால தனியில் விட்டருள்வோனே சமரில் எடுத்த சொர்மால தனியில் விட்டருள்வோனே நம சிவய பொருளானே ரஜதகிரி பெருமாளே நம சிவய பொருளானே ரஜ